complete their six. Nicely bowled there, but Ranjit just drawing the batsman onto the back foot with a beautiful delivery, which is pitched in the middle stump, and batsman off the back foot couldn't manage to read that line and length so properly. So off the back foot, Neeraj wanted to turn that one in the onside region, but it's a very difficult delivery to play any kind of cricketing stroke on the onside region, and he's just changing his mind, played it defensively back to bowler. Ranjit bowls off the back foot, tried to cut set one in relegation. Beautifully bowled there by the bowler Ranjit. Just like I mentioned earlier, the morning always going to be a little bit encouragement for the bowler. Maybe because of a little bit the dew factor in the morning, and the bowler definitely wanted to exploit the condition of the morning. And here is again bowler Ranjit. Bowls again beautifully bowled. Equally well played by the field batter. And the fielder is in the short silly point region, silly mid-off region. In fact, wanted to get the ball quickly. But meanwhile, both the batters has got a very good understanding between the wickets, so that they managed to complete the single very quickly. So with that single, scoreboard moves on to 3 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. So left and right combination always going to be handy for any team, because it's always going to be handy in the sense that the bowler have to change his line length every time when strikes rotated. At the same time, they need to change the field set. This time again going for the pull shot, not really having enough bat onto that, but quite enough for him to complete the single before the wicketkeeper, the captain himself, to run back towards a short fine leg region, and ample time for the batter to complete the single. So pretty good over there from Ranjit there, and steady start from the opening batters of Codecraft Strikers. They managed to get to 4 runs without losing any wicket, and 4 runs might be, it was a start what Codecraft Strikers doesn't want to see, and usually in the power play overs, and most of the batsmen wanted to exploit the condition of the fielding restriction, but here is Ranjit exploiting the condition of the pitch and the weather very well, and he just bowled a very economical over for Infosys. Infosys yesterday they defeated Mangalore Warriors. The Mangalore Warriors, even they put a very good score in front of Infosys, but they really not having that much of depthness in the bowling department, so that Infosys chased those runs, and finally they qualify for the second round of this prestigious cricket tournament. Yesterday, we are witnessing some extraordinary batting performance, some unbelievable bowling performance, and more than anything else, some spectacular catches has been taken. And one catch which is taken by Karthik is become viral yesterday, and in V4 24/7 channel, the catch of Karthik, one of the best catch of the tournament, when he was charging from the deep, the ball is just looks like going to be landed, is diving to front, a good and full end drive, takes a wonderful catch, and one of the best catch of the tournament which is taken. Of course, so many catches taken, there's a very good catches has been taken, but the catch of Karthik definitely got a number one good catch in the day number 1 of this prestigious RPL. So bowler Srisha brought into attack from the commentary box end. Srisha. Right arm over the wicket. Start with the warm-up delivery of the morning, and a little bit warm-up for the umpire as well in the morning for Rajaratna, Rajprakash Atmaram. Yesterday also the 3 umpires did a very good job, well, along with Atmaram, Rajeshwar as well as Rajaratna sir. But today one changes in place of Rajaratna sir. We have Viraj at square leg. All very good umpires. The experienced umpire in the South Kent district. The so experienced Rajeshwar sir is more than 20 to 25 years of experience in the field of umpiring. Right arm over the wicket bounce. This time full set one, nicely down to deep, backward square, in front of square, and the fielder taken a wonderful catch. Just like mentioned, this tournament is witnessing some unbelievable catches. This is a one more catch which is taken by the fielder by running back. It's not an easy catch. Abhi is the fielder.
So what a catch there from Abhi. It never looks like it's going to be the catch for the fielder, because once the batsman is off the back foot, full Z1, looks like it is a shape shot which is played by the batter, just going over the top of the infield. But Abhi has really done a great job. Just kept the eye on the ball. Absolutely fantastic. That what you say, that he runs very well back, but he's controlling his run very well, and he just kept the eye on the ball till the last moment, and he able to complete that catch in the end. And first wicket number first, Ranjit is back into pavilion after scoring 2 runs. So Srisha has got a huge wicket in his first over. The wicket of Ranjit, one of our very dangerous batsmen as far as the opposition is concerned. And very next delivery, the new batsman able to get the single by playing that one little bit square of the wicket down to backward point region for a single by Vikesh. Vikesh is off the mark with a single, and Skobar Namozan to 6 on the board for the loss of 1 wicket. Very good toss to win in the morning for the captain of Infosys. They know exactly the morning condition, might be a little bit encouragement for the bowler. Not totally. First 2-3 overs looks to be a little bit difficult for the batter to get eye in, because of a little bit movement of the delivery, movement from the pitch. It might be a little bit problem for the batter to get their natural stroke making. But afterwards, I think it's going to be a good wicket to bat on off the back foot. Nicely driven, but lack of placement. Ball went towards a short extra cover region, but there is a possibility of a single anyhow for the batter Neeraj. With that single, Skobar Namozan to 7 on the board for the loss of 1 wicket in the over number second is in progress, and the last over of the power play. Srisha bowling away from us. Right arm over the wicket, beautifully ball, perfect one, copybook style of defensive stroke, and with that defensive stroke they went for the single. Looks like it's going to be a all over. If the ball which is going to hit the stumps, direct hit, might be the curtain in the innings of Vikesh, because he's struggling to reach his home in the non-Zygers, and the fielder Sajan, I think, in the short mid-off region, tried to hit the stumps. Ball just missing the stumps, and the batsman survived from the run out. 8 for the loss of 1 wicket. Changing the angle, bowling round the wicket. Next ball of backward, tried to play that reverse stroke, but didn't got enough timing in that reverse stroke. But probably there is a single for the batter Neeraj, so that the Skobar Namozan to 9 on the board. The runs are coming in the form of singles, quite understandable, because just like I mentioned about that Infosys has got some good bowling department. They got a ability, the potential of taking the advantage of the morning condition. Shisha balls, there is some short pitch delivery, not quite getting hold of that one properly, and mid-off fielder Sarjan making no mistake at all in the negation, taken a comfortable catch. The wicket number 2 which is back into pavilion. The Shisha, he's got a second wicket in this over with a fantastic short pitch delivery. Picked up his second wicket, even though he missed his first match yesterday. But I think the inclusive of Shisha in the bowling department of Infosys, it looks like it's going to be more advantageous, as he picked up 2 valuable wickets in his first over. The one more wicket, the wicket of Vikesh, is back into pavilion. Tried to pull that one, but is nowhere in the position of pulling the ball. Even that line and length is not that much of short enough to go for the full shot. Miscues that one. Ball went straight to the hands of a short mid-off and short fit of Miller Sarjan, making no mistake at all. The wicket number 2 which is back into pavilion now. First 2 over which is belongs to the team Infosys, is a very good toss to win by the captain Sandy, and he must be pleased with the performance of 2 opening bowlers of his team, that is Ranjit and Shisha, bowled 2 very good power play overs. The first bowling change from the far end, Sandesh brought into attack to bowl the 3rd over of the innings of Codecraft Strikers. Of course, Codecraft Strikers yesterday they played a good game of cricket against Nippon Kudla Warriors to defeat Nippon Kudla Warriors. Everyone is contributed, but now they're playing against the runner-up of last edition, Infosys. Again, first ball off the back foot, full that one down to deep mid-wicket region for a single by
the batter Neeraj, so that scoreboard now moves on to 10 on the board, double figure 10 on the board for the loss of 2 wicket in the over number third is in progress. So that brings a new batsman is in strike. Akhilesh is a striker, and Akhilesh has got a protection. After that power play, the fielding restriction is off, so that we can find so many bodies out there in the deep. One at deep backward point. The mid off is looks like going a little bit back. No, it's in the edge of the circle, but there is no protection. Only one protection in the deep in the offside dish and the back point, but in the onside deep long or deep mid wicket and deep square leg, the three fielders outside the circle in the onside region. Right arm over the wicket, balls beautifully balled, perfect delivery indeed, isn't it? Squared him up with the beauty of delivery. Just ball is moving from the good length spot. Little bit deviation in that delivery there from Sandesh, and ball just missing the outside edge of the batter. Luckily, that ball carried to the wicket keeper. Sandy did the rest back to bowler. Fantastic piece of bowling there from Sandesh. Right arm over wicket balls this time right on the block hold. Try to york the batsman in the negation. At last moment, the batter Akhilesh has got a bat onto that. Of course, he wanted to drive the ball, but the length which is not easy enough to drive the ball. It's almost in the yorker length delivery, low full toss, and very difficult to drive the ball in that line. But still he managed to get the single for that. With that single, scoreboard moves on to 11 on the board for the loss of 2 wicket in the over number 2 is in progress. Edition 3 of this prestigious Red Premier League. FM 93, Red FM 93.5, Mast Maja Madi. So one more good stop there for the fielder. What could be a certain boundary there? They're going for the couple of runs. A chance of run out directed, but I don't think the batsman might be run out there. But he's a safe here. And on shot, which is called by umpire at strikers end, non-strikers end. The Viraj is saying that the batsman Neeraj, which is a fails to cross the line, which is in a non-strikers end. So that one shot called by umpire, just a single run. All the efforts are which is gone in vain, and because of that one shot, both the batter will going to get only single for that. With the single, scoreboard moves on to 12 on the board. For the loss of 2 wicket. So talking about 93.5 Red FM, Mast Maja Madi, one of the most popular FM radio channel. And again the next one, which is outside the line of off time, the batsman Neeraj going for the drive, and again that length is very good in the irrigation there from Sandesh, which is a little bit outside the line of off time, fuller length, but not easy fuller length because of that line and length. Very difficult for Neeraj to drive the ball. Sandesh again, right arm over the wicket, short base going for the lofty drive, but once again mistiming that one. Pays the penalty for that. Neeraj back into pavilion. Wicket team number 3 is back into pavilion. Codecraft Strikers has lost third wicket at the score of 12 on the board. So one more wicket is back into pavilion. It's Neeraj's wicket after he's been settled down in the middle. Looks like he will going to play a big innings for his team, but unfortunately he's looking for a big shot. Of course, he wanted to break the shackle in that particular over because he didn't got enough runs on that over. So that in the final delivery of that over, he wanted to get a big shot. By doing that, I think he's choosing a wrong delivery for the full shot, and he just pays the penalty for that. Sandesh looks outstanding in that over. He picked up valuable wickets of Neeraj, and he bowled a very economical over. So that means Infosys really dominating in this first 3 overs. And after completion of over number 3, it's 12 on the board, and wait and see how many runs they will going to score here. And before the next over going to start, the change in commentary box as well. It's over to Gopi for the further explanation of the match. And Gopi, good morning to you, and welcome back for the match number first of the final day of this cricket tournament. And both the teams, Gopi, the Codecraft Strikers and Infosys, they came into the second round of this prestigious cricket tournament after they played a very good game of cricket yesterday. But it seems to be Infosys captain a very good toss to win, and the bowlers really justifying the addition of the captain. So far, the first three overs, which belongs to Infosys, because they not only restrict the runs, but they picked up 3 valuable wickets. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। एमसीएफ
और माफ कीजिए कोडक्राफ्ट और इन्फोसिस के बीच इस वक्त मैच खेला जा रहा है और एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए इन्फोसिस के गेंदबाज फलस्वरूप कोडक्राफ्ट के बल्लेबाज इस वक्त रनों के लिए कुछ हद तक संघर्ष करते हुए 13 रन बन चुके हैं। 3 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर यहाँ पर शुरू हो चुका है और गेंदबाज सुब्रमण्य इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, तो गेंद फेंकने से पहले इस वक्त फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर करते हुए और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर मौजूद और बाएं हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, शॉट स्क्वायर की दिशा में गेंद पहुंची, रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला हो सकता है लेकिन अंतिम क्षण में एक रन बल्लेबाज पूर्ण करने में सफल। ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा था, इस वक्त गेंद पहुंची शॉट स्क्वायर की दिशा में, रन लेने की हड़बड़ाहट यहाँ पर दिखाई और रन पूरा करने में भी सफल और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 14 रन। 3 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर। रेड प्रीमियर लीग 2023-2023 मेगा श्रृंखला के अंतर्गत इस श्रृंखला का दूसरा दिन का पहला मैच यहाँ पर खेला जाता है और ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद थी चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रनों के लिए इस वक्त संघर्ष करते हुए बल्लेबाज कोडक्राफ्ट के और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम द बॉलर सुब्रमण्य। 2 लगातार डॉट गेंदें इस वक्त फेंक चुके हैं दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए और दोनों गेंदों में बल्लेबाज स्ट्रोक्स नहीं खेल पाए और दोनों गेंदें सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच नहीं मिला। सुब्रमण्य एक बार फिर से तैयार, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका और एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर। तो इस वक्त इन्फोसिस टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया था उस निर्धार का समर्थन करते हुए इस वक्त गेंदबाजी करते हुए इन्फोसिस के गेंदबाज यहां पर गेंद को खेल दिया शॉर्ट मिड विकेट पर और एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका। 4 overs completed and after 4 overs still the problems are continuing for the batsmen of Coldcraft strikers. They managed to score only 16 runs on the board after completion of 3 overs and still in overall calculation it's going to be 2 overs remaining in their innings. आरपीएल रेड प्रीमियर लीग 2023 और जहां तक इस प्रतियोगिता का सवाल है, आज इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन का पहला मैच यहां पर खेला जाता हुआ 16 प्रतिष्ठित टीमें इस श्रृंखला में हिस्सा ले रही है और निस्संदेह कल पहला दिन था, कल 8 मैचेस खेले गए थे, आज 7 मैचेस यहां पर खेले जाएंगे और जहां तक सवाल है शाम को यहां पर इस टूर्नामेंट का इस श्रृंखला का ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल मैच यहां पर खेला जाएगा। तो इस वक्त दूसरे दौर का पहला मैच, द फर्स्ट मैच ऑफ द सेकंड राउंड ऑफ दिस टूर्नामेंट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर और गेंदबाज संदेश गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। सुबह का वक्त, बिल्कुल प्रखर धूप इस वक्त मैदान पर छा चुकी है और सुबह के 9 इस वक्त बजते हुए और धीरे धीरे इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ती नजर आती हुई और गेंदबाज संदेश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए पहली गेंद लेकर तैयार, हल्के से गेंद के इस वक्त टॉप स्कूप करना चाहा, अंतिम क्षण में गेंद के उछाल को पहचानते हुए लेकिन गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाया और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 16 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए विकेट कीपर और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार था, ना तो ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में और एक रन मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 17 रनों पर। अभी भी रन से सिंगल्स के रूप में बनते हुए और जहां तक इन्फोसिस का सवाल है, इस श्रृंखला के खिताब के प्रबल दावेदार टीमों में से एक हो जाने जाते हैं और अपना बेहतरीन प्रदर्शन इस वक्त उनके गेंदबाज इस वक्त जारी रखते हुए फलस्वरूप कोडक्राफ्ट स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज रनों के लिए काफ़ी संघर्ष यहाँ पर करते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज संदेश गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार अखिलेश और
संदेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट गेंदबाजी करते हुए अखिलेश के लिए इस बार गेंद को खेला, शॉर्ट मिड विकेट पर रन के लिए दौड़ पड़े, 9 सेकंड पर खतरा थ्रो पहुंच चुका है और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। स्ट्रोक खेलने के बाद अखिलेश ने जोखिम भरा रन उठाना चाहा और इससे पहले कि वो नॉन स्ट्राइक रन पर पहुंचे, सीधा थ्रो पहुंचता हुआ मिड विकेट फील्डर का गेंदबाज के हाथों में और गेंदबाज ने विकेट यहां पर चटका दिया और इसी के साथ विकेट नंबर 4 यहां पर गिर चुका है। और कोलक्राफ्ट स्ट्राइकर्स हालांकि काफी संकट की स्थिति में यहां पर नजर आते हुए 17 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 in progress in the innings of Coldcraft Strikers. So fifth over in progress and number 6 batsman is now comes out to the middle for Coldcraft Strikers. और जहां तक सवाल है राहुल का, तो नए बल्लेबाज के रूप में राहुल इस वक्त क्रीज पर मौजूद और संदेश इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, तो इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज माफ कीजिए राहुल नॉन स्ट्राइक पर मौजूद, यह गेंद टॉप एज, इस बार गेंद यहां पर गिर चुका है। Just trying to heave the ball at the last moment, not quite get that one right from the middle of the bat. Got his stoppage and comfortably held that short square leg. One more wicket fallen, 5th wicket gone. They are looking deep in trouble now. It's 17 for 5. So still the problems are continuing for the batsmen of Coldcraft Strikers. They lost their 5 top orders wickets for just adding 17 runs on the board in the over number 5 in progress. And still in overall calculation, it's going to be 2 balls left in this over, and in overall calculation, it's going to be 8 balls left in their innings. और नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता हुआ और श्रीकांत नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहां पर दिखाई देता हुआ और श्रीकांत अपने ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर तब विकेट गेंद माफ कीजिए श्रीकांत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, जबकि संदेश इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद फुल टॉस, गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, बल्ले के बीचों बीच कनेक्शन नहीं, एक रन मिलेगा जरूर, इससे पहले के शॉर्ट पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया जाता और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 18 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। इट्स 18 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस इन कोडक्राफ्ट स्ट्राइकर्स इनिंग्स और 7 गेंदें अब कुल मिलाकर उनकी पारी में शेष और संदेश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए पटकी विकेट, oh that is a good one, extra quicker, extra get some extra bounce at the last moment and went into the hands of wicket keeper after beating the batsman. Good one from the bowler, dot ball to end the over, 5 gone and after 5 overs still the batsmen of Coldcraft Strikers just searching for the right track. It's 18 for the loss of 5 wickets. Last over remaining in overall calculation in the innings. अंतिम ओवर का खेल बाकी Coldcraft Strikers की पारी में। And just talking about the next part, the second match of the day 2 of Red Premier League 2023 is now coming up live exclusively right after this break, right after this match in fact, between Glow-Touch Warriors versus Emphasis, and because of that I request the captains of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official for toss procedure in fact. I request the captains of Glow-Touch Warriors and Emphasis please to be reported here for toss procedure. और अंतिम ओवर शुरू होता हुआ पहली गेंद, इस बार गेंद कौन सा इन पर उछालना चाहा, बल्ले का भीतर किनारा टकराने के बाद गेंद इस वक्त पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर और 1 रन इस बीच मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 19 रनों पर। अंतिम ओवर होने के बावजूद इस वक्त रन से सिंगल्स के रूप में बनते हुए और एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर जारी रखते हुए इन्फोसिस के गेंदबाज दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार राहुल
और फील्डिंग में कुछ हद तक इस वक्त जमावट चलती हुई। मिड ऑफ फील्डर को इस वक्त पीछे भेज दिया गया, एक्स्ट्रा कवर फील्डर को कहना पड़ेगा, पीछे इस वक्त भेज दिया गया है। मिड ऑफ और मिड ऑन इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर डाला। डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर ठीक सीमा रेखा के पास मौजूद, लंबे स्ट्रोक्स रोकने के प्रयत्न में। और ये गेंद इस बार ऑन साइड पर आती हुई गेंद, वाइड का इशारा, लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड इस वक्त घोषित करते हुए अंपायर। और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर, 5 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर शुरू हो चुका है। सुब्रमण्य गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद बाउल्ड आउट। Just wanted to play that one after being shuffling across the line, just exposing his wickets. And the last movement, the ball, after beating his batsman's bat, it stuck to his midline leg stump. Bills are disturbed, and that is the one more wicket for Courtcraft strikers. And now they are 20 for the loss of 6 wickets with just 4 balls to go in their innings. The Courtcraft strikers just lost their 6th wicket just short while ago. And now they are looking deep in trouble. 20 for the loss of 6 wicket. Number 8 batsman is now comes out to the middle in these critical circumstances is Trishal. And he is now going to face Subramanya. 4 balls left in their innings और गेंदबाज सुब्रमण्य इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। त्रिशाल नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अपनी ओर की अगली गेंद बाएं हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद लगभग ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला तो स्कोर रुक चुका है इस वक्त 20 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। त्रिशाल एक बार फिर से सामना करते हुए सुब्रमण्य की गेंदों का। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए सुब्रमण्य और गली फील्डर को थोड़ा सा पीछे इस वक्त भेज दिया गया है। डीप कवर पॉइंट मिड ऑन इस वक्त मौजूद। अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार बेहतरीन गेंदबाजी, विकेटों पर शाइन किया इस वक्त विकेट कीपर ने, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज अपना बल्ला बैट क्रीज पर रख चुके थे और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित था और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 20 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में। Just 2 balls now left in their innings and a fantastic piece of bowling performance continuing here from Subramania in this over. और अपने दूसरे ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार। बाएं हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, ठीक तरह से उछाल नहीं पाए। गेंद पहुंची इस वक्त थर्ड मैन पर, सिर्फ बाई का इशारा, पूरी तरह स्टंप्स को एक्सपोज कर चुके थे और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर। द लास्ट बॉल, अंतिम गेंद उनकी पारी का लेकर तैयार। So the last ball of their innings is now coming up. Subramanya bowls again. इस बार उछाला लंबा, collected the ball just inside the fence, and before that the batsman come back for the second run, and with that couple run the innings is up. The stipulated overs are completed and Courtcraft strikers managed to score 23 runs on the board after the completion of their 6 overs, and now the target for Infosys is 24. Meantime, I request the captain of Emphasis please to be reported here for toss procedure. The captain of Glow Touch Warriors are now waiting for you for toss. 24 the target for Infosys. In fact, it's a captain of Glow Touch Warriors. Please to be reported here. The captain of Emphasis is just waiting for you for toss. ಗ್ಲೋ ಟಚ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎಂಫಸಿಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಾಣ್ಯಚಿಮೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. So back to this game, and 24 the target for Infosys. In 6 overs they have to score with the required rate of exactly 4 runs per over with the help of 10 wickets. The present equation shows for them against Courtcraft strikers in the match number 1 of the day 2 of Red Premier League 2023, and their innings now going to begin within just a while. Till then we are taking a short break. एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब इन्फोसिस की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद.
Thank you very much. Welcome back for the innings of Infosys. Not a used, not a used. Total against Codecraft strikers. A lot of hard work which is required from the bowlers of Codecraft strikers if they wanted to defend this small total. Meanwhile, the news coming from the dais, the toss which is completed for the next match. Captain of Emphasis won the toss against Glow Touch Warriors and elected to field first. This is the news for the next match. And now here is the match number first of the day, number final is in progress. 24 to win this match, and opening batters Sajan and Sandeep are the two opening batters in the middle. Rahul will go into start the proceedings. First ball. The full toss delivery went for the reverse stroke and he missed it completely from the bat. And looks like the batter Sajan wanted to play that reverse stroke in the first ball itself, but it's not so easy stroke to play in the book. And here is again Rahul, right arm over the wicket. Again they went for the reverse stroke continuously. Second time he went for that same stroke, which is the unorthodox reverse stroke, but couldn't manage to get the ball into the bat. But here the umpire signaled it's a leg by. So one more correction. First run comes up here for team Infosys. They got their first run in the form of extra. Bowler Rahul bowling from the far end. Right arm over the wicket balls, and this time the batter Sandeep got a single. Nicely turns that one down to short mid wicket region for a single. With that single, Skoban Namuzant 2 on the board for the without loss of any wicket in the over number first inning is in progress. No need to panic at all because they need to get 24 runs in 6 overs at a run rate of exactly 4 runs per over. This time nicely driven off stop by the fielder. Just got a right leg to stop the speed of that stroke, which is little bit opportunity which is created for the catch, but it's not so easy when you are standing very close to the batsman, when batsman hitting the ball pretty hard. And reacted quickly, but couldn't manage to take the catch. Again nicely place it down to short gully region by opening the face of the bat, guiding it down to short gully region for a single. With that single, Skoban Namuzant 4 on the board. Both the batters are really playing as per the condition required. They know exactly, no need to panic at all, and they're rotating the strike in each and every ball. Rahul again, right arm over the wicket balls. This time bowled him, cleaned him up. And I think too much room inside out cricketing stroke, and he pays the penalty for that. Rahul strikes 4 for the loss of 1 wicket. Well, in this particular delivery, the Rahul bowled a fantastic delivery. Quite deliberately bowled that line, because seeing that batsman a little bit moving to his leg stump, tried to play inside out cricketing stroke over the top of the infield, and bowler realizing Rahul, this is the right time for me to bowl that the good length, good line which is on the middle and off stump. And batsman completely missed that delivery, and you miss high hit what Rahul is did in the previous ball, and that is the kind of the delivery which is badly required here for Codecraft strikers, because they are defending a small total. So first wicket is back into pavilion. The first step which is on by Rahul, but they needed that wicket in every over. 1 or 2 wickets is badly required if a Codecraft wanted to win the match. So new batsman in, Pranil, one who got a man of the match yesterday for his outstanding batting performance, and he is the one responsible for the victory in the previous match against the Mangalore Warriors when they are chasing a huge total. And wait and see how well Pranil will going to contribute in this particular match. Vikesh, correction, is the bowler going to start the second over of the quota. Little bit disturbance in the field there, that's why Vikesh stops his run off and back to his bowling mark. Second over of the power play. Right arm over the wicket. Beautifully bowled. This time the appeal for caught behind. Everyone is up, is gone. Caught behind the wicket.
Absolutely, that was a big nick. The wicketkeeper behind the stump is so confident after that ball, just having a nick off the batter. And Sajan is the batter, have to walk towards the pavilion. And Sandeep, Sajan is already back into pavilion. Now Sandeep is back into pavilion after that beautiful delivery there from Vikesh. Maybe the batter which is not happy with the decision, but umpire is in the right position to judge. That is the ball which is got outside of the bat, and the wicketkeeper behind the stump did that. The captain of the side, Sandeep Sandy, is back into pavilion. The caught behind the wicket. That is absolutely beauty of the delivery, isn't it? Vikesh is the one ball beautifully, but sometimes happening. Even the batsman doesn't know about that whether he is nicked or not. But sometime the umpires will going to see that even just a reaction which is going to be very interesting. Whenever the body language the umpire will going to see the immediate reaction. The immediate reaction certainly is going to be a key to get the decision. That ball, once the ball is got just past that bat of Sandeep, the wicketkeeper so excited. That is the first reaction what umpire will going to notice after hearing the sound, which is very close to the bat and ball, and might be it was a little bit feather nick. Maybe it was confusion here for Sandy that is not happy with the decision, but umpire called it's out. It got behind the wicket. Vikesh again, right arm over the wicket balls. Beautifully bowled. Equally well played there by the batters off the back foot in a little bit defensive frame of mind. Shisha, you know exactly the condition of the game. They're not really chasing a huge total here. One small partnership will going to take Infosys into victory. Right arm over the wicket, balls off the back foot, nicely turns that one down to short mid wicket, and they're going for the quick single. The fielder in the short mid wicket trying for the run out in the non-seconds, and but not good enough to stop the single from these two batter. Shisha is off the mark. One more very good all-rounder for the side of team Infosys, of course, inclusive of Shisha. For Infosys, not only strengthening the bowling department, but even it's strengthening the middle order batting department of Infosys. Vikesh, right arm over wicket, nicely driven that one down to deep square leg region. Fielder chasing the ball. Will it go into the first boundary of this day number 1? Yes, it does. Day number 2. It's the first boundary, I think so, in the day number 2. And that stroke which just came from the bat of Pranil. Just I mentioned about Pranil is a man, he's in a good form. In the previous match yesterday also, he's played a good innings for his team against Mangalore Warriors, and he's just continuing that form in this particular match as well. Little margin for error. You can't hold that. Taken there, and with the addition of that single score, the moves on to 10 on the board. Even the wickets which is fallen in this over, but the runs are coming in this particular over of Vikesh there. The 6 runs already scored in just 4 deliveries. That means Infosys in a right way, and to get their winning runs. 14 more runs required for the victory. Right arm over the wicket, and lovely shot, beautiful shot. That was a glorious and imperious lofted extra cover drive there from the batter Srisha. This is a fantastic and quality cricketing stroke. The kind of cricketing stroke which is much required in the power play over when the fielders are up in the circle. Quite easily he dispatches that one up and over into the The effortless stroke came from the bat of Sheshak. So easy for him to deliver that stroke. Of course, the ball is which is in the off volley. Just like I mentioned earlier, little margin for error when you're bowling the power play overs. You can't bowl that line. One which is bowled outside the line of leg stump, and the batter Pranil quite nicely plays it down to deep square leg region. And at the second one is which is played on the up, played it on the up and into the deep. Long cover point region for a boundary there. With that boundary scored Namuzan to 14 on the board for the loss of 2 wickets.
Rahul to continue from the far end. Rahul, just 10 more runs required for the victory for Infosys. They're in a right position now for winning this match. Lofted that one. Will it go into a first sixer of the day? Number 2 looks like wait for the umpire signal whether the fielder is saved that one or not. Umpire saying it's a fine. The fielder has done a great job just pulling the ball when he's just going to cross that boundary line. Absolutely fantastic save. He's saving 4 valuable runs for his team. In the meantime, the Pranil completed a couple of runs here. With that couple of runs, Coburn was on to 16 on the board. Outstanding cricketing stroke there from Pranil. It's not so easy in the morning to get the distance. And here is again a full toss delivery, lofted at one, just over the top of the field. And one more good fielding there by the fielder actually in the deep long on region. He's trying for the catch. Once he realizing that it's very difficult to take the catch, ball is just coming into him in half volley. He's putting his whole body behind the ball, stopping the boundary very well. Sensible thinking there by the fielder. And couple of runs once again taken there by the batter. It's 18 for the loss of 2 wickets. Pranil is in a hurry. And Rahul will go into ball again. Full toss delivery. This time he's dispatching that one. But this is the first sixer. This is the first sixer of the day number final of this prestigious RPL, which is came from the bat of Pranil, and that might be the enough for them to winning the match. The comprehensive victory here for Infosys defeated the Codecraft Strikers by 8 wickets and 3 over and 3 deliveries to spare, and it's a huge victory for Infosys and deserve the place in the next round of this prestigious cricket tournament. Congratulations for Infosys. Hard luck, Codecraft Strikers. Not quite enough that total score to depend that one. So we are coming back for the next match. We'll take a short break here, and after short break, Glow Touch Warriors will go to take emphasis in their second round match and second match of the day number 5. Nippon Paint. Last edition, Infosys won the match against the Codecraft Strikers, and man of the match of that match, which is goes to one who really performed very well from the ball. Bowled 1 over, considered 5 runs, picked up 2 valuable wickets. Then he scored 5 unbeaten runs. So that is Srisha of Infosys, who was judged as a man of the match. And I request Srisha to please come and collect your man of the match award from our chief guest. ದಯಮಾಡಿ ಶೀಶಾ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತಂಡದ ಶೀಶಾ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ 1 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ 5 ಅಜೇಯ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So here is the announcement from Decathlon, and do visit a Decathlon stall for energy drinks, UV protected caps and hand sleeves, and also
participate in sporty challenges and win gift vouchers. Thank you very much. The Decathlon, one more very popular sports showroom in Mangalore, the Decathlon, and they are the one of the sports partner of this prestigious Red Premier League 2023 Edition 3. The sports partner Decathlon is announcing here once again. Do visit Decathlon stall for energy drinks, protected caps and hand sleeves, and also participate in sporty challenges and win gift vouchers. Thank you very much. Thank you. So before the match number 2 will going to start here, I would request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language. I wanna see you wine like Rihanna, get on the corner, come diggy diggy bum bum. She burn it up like the summer. She tell me I'm with her, come diggy diggy bum bum. You got me like crazy, that you calling. With her, come diggy diggy bum bum. You got me like crazy, that you calling. I request the extra player of Lotus to be reported here. The player's name. Hello, check. I request the extra player of Glow Touch Warriors, please to be reported here. Dhanyawad Satish. So the match starts now between Glow Touch Warriors versus Emphasis. The match number 2 of the day 2 of Red Premier League 2023 is now going to begin. And news is here from the center that the captain of Emphasis, after one toss, he elected to field first, and because of that, the first ball he just played that one watchfully at the last moment, and there is no possibility of any run. The scoreboard stays at none for none in the first over, and the bowler started the fresh proceedings from that side, and is Vignesh. Again here he comes, right arm over the wicket, bowling to the right-handed batsman. This time, oh, that isn't a good one. Absolutely fantastic. Just missing outside the off-stump. Full delivery. The batsman just wanted to play that one on the offside area. Not succeeded, and the ball went just out of his reach, and it went into the hands of wicketkeeper. And there is no possibility of any run. The scoreboard stays at none for none in the first over. और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त विघ्नेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, और जहाँ तक सवाल है, 2 बेहतर गेंद इस ओवर में विघ्नेश यहाँ पर फेंक चुके अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिना ओवर द विकेट, फुल टॉस, इस बार गेंद हवा में जरूर, लेकिन फील्डर काफी पीछे शॉट कवर पर, और जब तक विकेट कीपर आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड करने, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है Glow Touch Warriors के लिए। It's 1 without loss in the first over for Glow Touch Warriors in the over number first in progress. विघ्नेश गेंदबाजी इस वक्त करने के लिए तैयार। सुप्रीत जो कि इस वक्त सामना करते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट, पटके हुई गेंद कट करना चाहा, बैकफुट पर जाने के बाद चूके गेंद की लाइन पर नहीं आ पाया, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट, एंड द बॉल वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन, एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। और स्कोर इस वक्त रह चुका है 1 रन बिना किसी नुकसान के बाद। विघ्नेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, पावर प्ले ओवर जो कि इस वक्त जारी, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद फुल टॉस, ड्राइव किया गेंद को शॉर्ट कवर की दिशा में, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन प्राप्त करते हुए स्ट्रोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे। आखिरकार उन्हें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई 1 रन प्राप्त करने में, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। एक बेहतर ओवर प्रगति पर विघ्नेश का, और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज विघ्नेश तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त
शॉट थर्ड मैन पर 2 के और इसी के साथ एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड एंड आफ्टर फर्स्ट ओवर ग्लो टच Warriors after being losing the toss and pretty to bat by emphasis in the match number 2 of the day 2 of RPL Red Premier League 2023. They made a steady start. In fact, it's 2 without loss after first over. So Akshat, the bowler is now brought into the attack and the second over starts in glow touch Warriors innings और गेंदबाज इस वक्त अक्षत गेंदबाजी करेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सुप्रीत जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। सुबह का वक्त 9:35 यहाँ पर बज चुके हैं और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ती नजर आते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर अक्षत इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड विकेट पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेला खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जब तक गेंद को फीड किया जाता। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है और जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है ग्लो टच वॉरियर्स का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक बेहतरीन आरंभिक शुरुआत और क्रीज पर मौजूद दीक्षित और सुप्रीत एक बेहतर आरंभिक शुरुआत देने की इस वक्त पूरी कोशिश करते हुए। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट चलती हुई शॉर्ट कवर के फील्डर को इस वक्त हटाकर इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच तैनात किया गया है और अंपायर से कुछ बातचीत करते हुए गेंदबाज और कुल मिलाकर दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर और गेंदबाज इस वक्त अक्षत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करके दाहिने हाथ के बल्लेबाज दीक्षित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद दीक्षित के लिए ड्राइव किया इस वक्त गेंद पहुंची डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन फिर से मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का प्रगति पर एक बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज एम्फेसिस के और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। पटकी हुई गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को स्कूप किया खूबसूरती के साथ कमर पॉइंट सीमा पर absolutely perfect strike, just little bit of a width for the right-handed batsman and he lofted that one, scooped that one in a style of a cover point fielder said and finds the gap very well between the cover point and a deep extra cover, and because of that he's got a boundary for that perfect strike. It's 8 without loss, 8 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त सुप्रीत के बल्ले से लगता हुआ और एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए स्टंप्स एक्सपोज करते हैं इस वक्त ठहरे हुए, लेकिन अंतिम क्षण में स्टंप्स को कवर करके गेंद को खेल दिया इस वक्त शॉट पॉइंट पर और जैसे ही बल्लेबाज ने स्टंप्स एक्सपोज किया था गेंदबाज ने गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर की ओर फेंकी और आखिरकार तुरंत अपने स्टंप्स को कवर करने के बाद स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ 1 रन के लिए बल्लेबाज ने और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर अक्षत तक गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर फ्लिक किया ऑफ द टोज, गेंद जाते हुए शॉर्ट फाइनल की दिशा में और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 2 अंकों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। इट्स 10 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। 8 रन्स ऑलरेडी स्कोर्ड इन दिस ओवर और इस ओवर में अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज अक्षत इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट पटकी हुई गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट और गेंद सीधे पहुंची बल्लेबाज को वंचित करने के बाद सीधे विकेट कीपर के हाथों में और इसी के साथ ओवर नंबर 2 की समाप्ति हो चुकी है। तो एक बेहतर ओवर अगर ग्लो टच वॉरियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण से देखा जाए जो कि समाप्त हो चुका है, जिसमें 8 रन बनाए। 8 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर एंड आफ्टर 2 ओवर दे रिकवर्ड a little bit after being a slower start. It's 10 without loss after 2 overs. तो पृथ्वी इस वक्त गेंदबाज यहां पर प्रारंभ करते हुए और तीसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ ग्लो टच वॉरियर्स के पारी में और जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है ग्लो टच वॉरियर्स का, तो इस वक्त उन्हें कम से कम 40 का आंकड़ा यहां पर पार करना होगा निर्धारित 6 ओवर में और
इस बीच पृथ्वीराज ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं और ओवर की पहली गेंद लेकर पृथ्वीराज इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार टॉप एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका, ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा था बल्लेबाज ने, टॉप एज पर गेंद टकराई, काफी देर तक हवा में रही और फॉलो थ्रू में अपने दाईं ओर जाते हुए एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका गेंदबाज पृथ्वीराज ने। पहला विकेट गिर चुका है, नाउ दे आर 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। So after the departure of Dixit, the new batsman, the number 3 batsman is now comes out to the middle, Ravish, and he'll be going to face Prithviraj और इस वक्त धीरे धीरे क्रीज पर अपना कदम वो बढ़ाते हुए और इस वक्त सामना करेंगे पृथ्वीराज की गेंद का। और इस बीच पृथ्वीराज जो अपनी पहली गेंद पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं और इस बीच अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, लंबा रन अब 10 से 12 कदम उनका और इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज रवीश के लिए। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश किया, बैकफुट पर जाने के बाद खूबसूरती के साथ मिडल ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकल रहे थे और आखिरकार गेंद को जब तक शॉर्ट कवर फील्डर फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। सेंसिबल क्रिकेट इस गेंद पर अपनाई थी बल्लेबाज ने और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रन एक विकेट के नुकसान पर। इट्स 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। इनफैक्ट रवीश ऑफ द स्ट्राइक इस वक्त हो चुके हैं और गेंदबाज पृथ्वीराज ये गेंद कट करना चाहा, बैकफुट पर जाने के बाद ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, हालांकि वाइड की मांग जरूर की बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और इस वजह से सही गेंद घोषित किया इस वक्त अंपायर ने और डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ 11 रन पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर और जहाँ तक बल्लेबाजी का सवाल है तो इस वक्त सुप्रीत सामना करने के लिए तैयार, पृथ्वीराज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट लेकिन सीधे कवर पॉइंट फील्डर के हाथों में, not quite middling it at the last moment and comfortably held just inside the 20-yard circle by the fielder और कवर पॉइंट फील्डर कैच को लगा। यहाँ पर विकेट गिर जाने के बाद नेविल इज नाउ द बैट्समैन, नंबर 4 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल फॉर ग्लोटच वॉरियर्स, द स्किपर ऑफ देयर साइड और वो इस वक्त काफी जिम्मेदारियों के साथ क्रीज पर मौजूद सामना करने के लिए तैयार पृथ्वीराज की गेंदों का और पृथ्वीराज अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद हल्के से गेंद को पुश किया, लगभग ब्लॉक होल पर गेंद टिप्पा खाती हुई फुल लेग गेंद थी और आखिरकार गेंद को जब तक शॉर्ट कवर पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। पृथ्वीराज इस बार यह गेंद कट किया, बैकफुट पर जाने के बाद गेंद की गति को भापते हुए मिडल ऑफ स्टंप पर गेंद थी, मिसफील्ड वहां पर बैकअप होता हुआ और इससे पहले की गेंद बैकअप हो, बल्लेबाज के पास मौका था दूसरा रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 14 रन। 2 विकेट होने के बावजूद रन इस वक्त आसानी के साथ बनते हुए ग्लोटच वॉरियर्स के लिए और कुल मिलाकर तीसरा ओवर यहाँ पर संपन्न हो चुका है। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स फॉर ग्लोटच वॉरियर्स। 3 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में ग्लोटच वॉरियर्स के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए अंग्रेजी में सतीश को। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. So, searching for the right track, glow touch warriors, and searching for the right track. But so far,
Two wickets is back into pavilion for just 14 runs in 3 overs. So that one partnership which is badly required for Glow Touch Warriors. Not only the partnership but some acceleration of run rate which is badly required in the remaining 3 overs. So bowler from the far end, Vinayak brought into attack. Vinayak bowls the first ball. Full toss delivery, lofted at one. I don't think we're going to get the distance. But there is a fielder misjudging the catch. And once again, looks like he saves the boundary. And maybe the umpire, I have to see whether the fielder saved that one. Absolutely saved very well. All the body which is in the air when he's got a touch that one, it pulls that one into the playing area. And looks like it's finally saved very well. But that's an opportunity of catch there for the fielder. So Neville, lucky batsman in the negation, he's got a life. Next one, right him over the wicket. Oh, ball him, clean him up. Ball is just clipping the base. And wicket number 3, which is back into pavilion. The captain of the side, the captain of a Glow Touch Warriors. Looking for the improvised. Wicket strikes. The batsman Neville wanted to get some improvising cricketing stroke towards a fine leg region. By doing that, I think too much across the line of the delivery. And Vikesh is the bowler, bowled that fantastic line in the negation and right on the spot, and ball which is a spot on, and just clipping the bails of the batter Neville, and captain is back into pavilion. Deep in trouble now. Gold Litigation Glow Touch Warriors, and again nicely bowled right on the block, hold perfect delivery to ball to the fresh leg. The batter just came into the middle. The managed to pick the single down to square leg region. Vignesh, one more fantastic all-rounder for the side of Glow Touch Warriors, needed his batting in the remaining overs if they wanted to get a good score in front of emphasis. Again, that ball is going to be punishable, not from the batter but from the umpire, at a wide signal from umpire. So with that, a single score moves on to 18 on the board. 19 on the board, 19 for the loss of 3 wicket in the over number 4 is in progress. This time full toss, he lofted, and it's going to be handsome. Well enough to get the distance. This is a huge 6. Just like I mentioned, the Vignesh need to talk with his bat if they wanted to get a good score. And he just got that full toss delivery right from the middle of the bat. Absolutely instrumental sound coming from the bat of the batter, indicating that Vignesh hits the ball right from the middle of the bat down to straight to deep long on boundary for a huge 6. This time one more. This man one more and better than the previous one. He's on fire. Vignesh is on fire. Wait for the umpire signal. Well, the batsman has got the distance. Yes, he does. The better than the previous, and I told because the previous first 6 which is for the full toss delivery, but in this second delivery nothing much wrong with the delivery, but the batsman is tall enough to climb down to that short pitch delivery and hammering it down to wideish long on for a 6, and scoreboard jumps into 31 on the board. Again, off the back foot, plays it beautifully down to deep wideish long off region. The ball will going to be stopped by the fielder from the deep long off, but here is ample time for the batter Vignesh to complete that couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 33 on the board. What an outstanding comeback here by the Vignesh in this particular over. After completion of over number 4, it's a 33 on the board for the loss of 3 wicket. Looks like a Glow Touch Warriors, the one-man warrior Vignesh wanted to take the initiative of getting some acceleration and getting some good score in the remaining overs. 19 runs which came from the bat of Vinayak. Even is a successful one. Got a wicket of Neville, but he couldn't manage to stop the flow of the runs from the bat of Vignesh. This is the beauty of cricket, and you can't say anything cricket, isn't it? Especially when coming to the smaller format of the games, 6-over format of the game. So one good over is going to change the complexion of the match. And this is one of the perfect example for that. The Vignesh choosing Vinayak for the acceleration of run rate.
The fifth over will go into start. Vignesh. This time, he's joining the party. Ravish looks like he's joining the party after Vignesh got a 2 6s. Then the Ravish is telling to his partner, "Why not? It's a time for me to get some acceleration." And he's just frees his arm with the extraordinary reverse stroke, unbelievable reverse stroke, which has got a distance for that. 39 on the board. The bowler is under pressure. Right arm over the wicket, outside the line of leg stamp. It's going to be a absolutely pressure situation. This is a result after the batter which is finished for the 6. Very next delivery, the bowler started to defeat the ball, but he's just lost the concentration over the line of the ball and bowling outside the line of leg stamp, and wide call by umpire. This time he lofted that one by opportunity for the bowler on his follow through track, the cotton bowled. So bowler Vignesh picked up a wicket. The Ravish is a batter after hitting 1 6. He's looking for a one more big shot in the relegation, but not quite able to get that one middle of the bat. The wicket number 4, which is back into pavilion. It's a 40 for the loss of a 4 wicket. Vishak is a new batter in. Little bit surgery in the batting order. Yesterday I think is came in up in the order, but in this particular match we came in a number 6 batter. Here is Vignesh balls. That was a ball which is going away from the right-hander batsman. Deviation, extra deviation here for Vignesh. Couldn't manage to control that the movement of the delivery, and rightly so. Umpire Vijesh, no hesitation to call that wide. With that extra score was under 41 on the board. Outstanding comeback here by the batter of Glow Touch Warriors. They're playing really as like a Warriors in the last couple of overs. Vignesh bowling away from us. Right arm over the wicket, drives that one, lack of placement, straight to the hands of short mid wicket. Of course, the ball is in the slot, but he couldn't manage to get that one right from the middle of the bat. Plays it straight to the hands of short mid wicket. There is no chance at all for any run. Good comeback as a bowler's point of view. Vignesh, after he conceded it 6, then he back very strongly with some good delivery. Right arm over the wicket, again coming down the track, using his feet quite nicely by Vikesh down to deep long off region. There is a fielder in the deep long off Abhi to run to his move to his left to field the ball. Ample time for Vikesh to complete the single. With that single, score moves on to 42 on the board for the loss of 4 wicket. And Vishak as well as the Vignesh now came into strike now. Full toss delivery, lofted that one right in the gap. One bounce into the fence for 4 runs. Again, bowler doing a mistake. You can't do that mistake for when you're bowling to Vignesh, the caliber of Vignesh. How can he miss the opportunity to dispatch that full toss delivery to the wideish long on boundary for 4 runs? It's a very good contest between two Vignesh. The Vignesh of Glow Touch Warriors facing the bowling of Vignesh of Emphasis. But here is a Vignesh of Glow Touch Warriors winning the race against the Vignesh of Emphasis. And wait and see how Vignesh will go into bounce back here after that 6 and a bound is so far in this over. And now umpires definitely will go into count the deliveries. And here is Vignesh will go into ball the next ball. The last time in this over. The Vignesh is on fire. Coming down the track, nicely plays it down to short cow point region, short extra coverage, and good thinking by Vignesh. He wanted to keep the strike for the next over. Single taken in the last ball of the over. One more productive over is comes in hand here for team of Glow Touch Warriors. They managed to get 47 runs after completion of over number 5. The one stage is struggling to get at least 40 runs in the stipulated 6 overs, but all in sudden the Vignesh came into middle. He's changing the complexion of the match completely here by some magnificent hittings, and he played some enterprising cricketing stroke, and he got some entertainment for the cricket lovers in this particular match. Wait and see how we're going to finish this the innings with the last over, which is remaining in innings of Glow Touch Warriors. And Vignesh, just like I mentioned, is just will going to keep the strike. And for the last over, the bowler will go into bowl that last over. Akshat
one who bowled first over conceded 8 runs, and we didn't see how he'll going to bowl in this last and final over of the innings of Glow Touch Warriors. 47 already does a very good score on the board, but Vignesh wanted more than that in the last over. Again off the backward, beautiful shot down to deep cover point region. The ball will go into cut it off by the fielder, but here is the batter got ample time to complete the couple of runs. Once again a quality looking cricketing stroke there from Vignesh. All we can see that's a traditional cricketing stroke. All we can see that he is playing with the merit of the delivery, and he getting some runs for his team. Right arm over wicket, nothing much to do with the delivery. He's just shouldering his arm. Rightly so, that ball is going away from the Vignesh outside the line of off stump, and 50 comes off. 50 comes off here for Glow Touch Warriors. Vignesh batting on 22, slash, and slashes it hard down to deep cover point region, but this time Vignesh will going to get a single for that. With the single score numbers on to 51 on the board, and Vignesh is batting on 23, and the one of the best innings in just 8 deliveries scored that runs. Akshat balls this time cuts that one pretty hard, but Vignesh doesn't want a second run. You know exactly the dealing with the final over. He wanted to get some final deliveries so that he can get some big shots in the remaining deliveries. And it's going to be a very good contest between Akshat and the Vignesh, two very good performer. The Akshat is a very experienced campaigner. Wait and see how we're going to prevent this man, Vignesh. Round the wicket he balls lofted at one, but not quite short enough to pull the ball, but he went with the stroke down to deep long on for an easy single. Akshat did a great job by shortening the length quite deliberately so that batsman couldn't manage to get the big shot. Just a single. With that single, score moves on to 53 on the board. Last 2 deliveries remaining. Round the wicket, Vikesh drives that one up easily down to mid wicket region for an easy single. So with that single, score moves on to 54. That means so far Akshat is winning the race against the 2 batters. He bowled very well in the last over, not really given any opportunity for the batter to freeze the arm for the big shot. The last delivery remaining. Here is Akshat going for the pull shot, missed it completely. Wicketkeeper behind the stump did the rest, and here is a run out taken place in the non-strikers, and that's it. Glow Touch Warriors, they finished their 6 overs quarter with a 54 runs by losing of 4 wickets, and Akshat did 5 wickets in fact, and Akshat did a great job in the last and final over to keep the batsman very quiet in the final over. Altogether I think it's a good score on the board. 54, absolutely it's a good score, and they scored the runs at a rate of exactly 9 runs per over, and they set a target of 655 to win this match for emphasis to win this match. But I think is a highlight of the innings, which is the innings which is came from Vignesh. He scored unbeaten 24 valuable runs with the help of 2 massive sixes, and
धन्यवाद सतीश। तो इस तरह से 55 रनों का लक्ष्य इस वक्त रखा है ग्लो टच वॉरियर्स ने एम्फेसिस के लिए। 55 रन उन्हें बनाने हैं निर्धारित 6 ओवर में। And as far the required run rate is concerned, exactly 9.17 runs per over, the asking run rate for them at this situation, and their innings now going to start. और पहली गेंद लेकर विशाख इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, गेंद पोजीशन को लेग पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े। एक रन मिला इस पर बल्लेबाज को, 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। अभिषेक का खाता यहाँ पर खुल चुका है। अक्षत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। और इस बीच गेंदबाज विशाख गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलती हुई। केवल 2 मात्र खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के बाहर तैनात पावर प्ले के अंतर्गत। लॉन्ग ऑन और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और विशाख अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद थी। अंतिम क्षण में गेंद को ढकेल दे इस वक्त बैक टू द बॉलर की दिशा में, बल्ले और पैर को साथ लाते हुए। और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 1 रन बिना किसी नुकसान के। और जहां तक 55 रनों के लंबे से लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, इस वक्त कुछ हद तक आक्रामक शुरुआत की सख्त जरूरत एम्फेसिस को। ये गेंद ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर प्रोटेक्शन मौजूद। सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। पहले 3 ओवर में सिर्फ 14 रन बनाए थे ग्लो टच वॉरियर्स के बल्लेबाज, और लेकिन द्वितीयार्ध में 3 ओवर में उन्होंने 40 रन जोड़े और उसके बदौलत इस वक्त एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा कर चुका है ग्लो टच वॉरियर्स। और इस बीच ये गेंद पटकी हुई गेंद, स्क्वायर ऑफ द विकेट जस्ट ओवर द पॉइंट फील्डर्स हेड एंड इट्स गॉन, इट्स कुड बी गॉन, इन फैक्ट इट कट्स ऑफ जस्ट इनसाइड द फेंस, जस्ट वी आउट वेट फॉर द अंपायर डिसीजन, इट्स अ बाउंड्री डिक्लेयर्ड बाय अंपायर। गेंद को इस वक्त पंच किया था पंजों पर उछलते हुए, और पॉइंट पर जो फील्डर खड़े हुए थे अपने ऊपर की ओर छलांग जरूर लगाई गेंद को लपकने की, लेकिन गेंद उनके उंगलियों पर टकराने के बाद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर गए। डीप बैकवर्ड थर्ड बैन सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर रब बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 6 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज विशाख इस वक्त गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए, पटकी हुई गेंद, एक्स्ट्रा विकेट डिलीवरी, गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर इस वक्त एक बेहतर शुरुआत की ज़रूरत था एम्फेसिस को। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, इस वक्त विशाख इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा। इस वक्त गेंद पहुंची डीप मिड विकेट पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 7 रन बिना किसी नुकसान के। 7 रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन ऑफ एम्फेसिस चेजिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ 55 in 6 overs. 6 overs. They made a steady start. In fact, they managed to score 7 runs on the board. Or just talking about the next match, Quest Corporation Limited will going to face. In fact, MCF will going to face Nivea Solution in the next match, and because of that, I request the captains of these two teams to please report to the stage immediately for toss procedure. MCF ಹಾಗೂ Nivea Solution ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So second over starts और कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी विघ्नेश इस वक्त शुरू करते हुए, और दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट कुछ हद तक चलती हुई इस वक्त दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ। बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट V4 न्यूज़ 24x7 चैनल पर इस वक्त किया जा रहा है श्रीमान मानिक इनके सारथ्य में। और निस्संदेह जहाँ तक इस टूर्नामेंट, इस प्रतियोगिता, इस श्रृंखला का सवाल है, तो रेड प्रीमियर लीग RPL 2023 ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करती हुई इस सुंदर से विशाल से डॉक्टर BR अम्बेडकर NMPT मैदान पर। और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों बढ़ता विकेट, ये गेंद पटकी हुई गेंद, स्कूप किया इस वक्त, गेंद जाती सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त बल्लेबाज के बल्ले से लगता हुआ, और इस चौके के साथ 2 अंकों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है यहाँ पर 11 रन। और चौका नंबर 2 अभिषेक के बल्ले से यहाँ पर लगता हुआ।
और वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर थे जीतोड़ कोशिश जरूर की गेंद को अंदर सीमा रेखा के अंदर की ओर ढकेलने की, लेकिन अंतिम क्षण में नाकामयाब और गेंद के साथ साथ खुद सीमा रेखा से बाहर चले गए। और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिना तो ओवर द एक बार फिर से पटकी हुई गेंद को खेल दिया इस वक्त विकेट हटते हुए, और इस बार अपने हाथों से विकेट इस वक्त चटकाए थे, गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट करने में असफल गेंदबाज। और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ कुल स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 12 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। एक लंबा सफर अभी भी तय करना बाकी एम्फासिस के लिए, यानी 43 रन और चाहिए विजय के लिए। बचे हुए 4.4 ओवर में, यानी 28 गेंदों पर। और गेंदबाज विघ्नेश अंपायर विकेटों को इस वक्त सही करते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर। और अब विघ्नेश तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद पटकी हुई गेंद कट करना चाहा, बैकफुट पर जाने के बाद एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 12 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। धीरे धीरे अपने सही लय रिदम को प्राप्त करते हुए गेंदबाज विघ्नेश चौका प्रदान करने के बाद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार कट किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, ही गेट्स एट लीस्ट कपल फॉर दैट, अ चेस फॉर द फील्डर, इट माइट बीन इट्स कशन ऑफ जस्ट इनसाइड डिफेंस। और यहां पर जब तक थोड़ी सी मिसफील्ड के बाद जब तक गेंद को फील्ड की जाए, दूसरे फील्डर द्वारा बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। Just rocked to the back foot and punched it away through the offside, and because of that he's got a couple of runs for that stroke. So couple of runs added to the total, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर बिना किसी नुकसान के। अक्षत एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार, इस बार विघ्नेश की गेंद का दाहिना तो ऊपर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को आक्रामक स्ट्रोक खेलना चाहा, पैरों पर टकराई, अपील नकार दिया अंपायर ने, गेंद कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और आखिरकार 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। इट्स 15 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस, स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। और विघ्नेश इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, नॉट क्वाइट बिल्डिंग इट एट द लास्ट मोमेंट, बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद गेंद उनके पैरों पर टकराने के बाद वहीं पर गिर गए और आखिरकार बल्लेबाज को इस गेंद पर रन नहीं मिला। 2 ओवर की समाप्ति 15 रन बन चुके हैं, पहले ओवर में 7 रन बने, दूसरे ओवर में 8 रन बने, कुल मिलाकर 15 रन बन चुके 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 2 overs completed and after 2 overs chasing the victory target of 55 in 6 overs. Steady start for emphasis. 15 runs they managed to score, yet to lose any wicket after completion of 2 overs. Exactly 40 runs more now they have to score for victory in remaining 4 overs with the required run rate of exactly 10 runs per over. So in the next match, Nivea Solutions, after won the toss, they elected to field first against MCF in the match number 3 of the day 2 of RPL Red Premier League 2023, and that match is now coming up live exclusively right after this match. आकाश इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ, और इस बीच सामना करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज अभिषेक का। तो अक्षत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त आकाश गेंदबाजी शुरू करते हुए। 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबद्ध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ इस वक्त मौजूद, डीप कवर पॉइंट ठीक सीमा रेखा के पास तैनात, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, इस बार बल्ले का बैकफुट पर गए, गेंद को खूबसूरती के साथ इस वक्त खेला, स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद पहुंची डीप कवर पॉइंट पर, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, नजदीकी मामला, शायद वहां पर बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। तो इस बीच इस गेंद पर बल्लेबाज बाल बाल बचते हुए 2 रन उनके खाते में जुड़ चुका है, और
जोखिम भरा दूसरा रन यशस्वीतम पूर्ण करते हुए दोनों बल्लेबाज, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 17 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 17 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। और अक्षत एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। आकाश गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर बिना किसी नुकसान के। रन इस वक्त चाहिए एम्फसिस को, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए ज़रूरी नहीं है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए दोनों बल्लेबाज रन बनाने का हर तरीके का प्रयास, हर तरीके की कोशिश यहाँ पर करते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार उछाला, अक्षत के बल्ले से ये छक्का लग चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एंड लफ्ट दैट वन इन अ स्टाइल ओवर लॉन्ग ऑफेंस एंड इज गॉट दैट वन फॉर अ मैक्सिमम 24 without loss in the over number 3 in progress, and this is an absolutely good progressing here now for emphasis. तो 31 रन और चाहिए विजय के लिए, और गेंदे बाकी है 22। 31 runs more run now they have to score for victory in remaining 22 deliveries. और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट एट द लास्ट मोमेंट बट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। मिड विकेट फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। 25 कम्स अप फॉर एम्फसिस। और इस बीच अपनी अगली गेंद लेकर आकाश इस वक्त तैयार, सामना करते हुए इस वक्त अभिषेक। ये गेंद चिप किया, इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, मौका इस वक्त लॉन्ग ऑफ फील्डर के लिए, और इसी के साथ ये विकेट की यहां पर गिर चुका है। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को स्कूप करना चाहा था, प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था और भुगतान उन्हें करना पड़ा, और यहां पर अभिषेक की पारी समाप्त, और 25 रनों पर पहला विकेट खोल चुका है यहां पर एम्फसिस। इट्स 25 for 1 इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। तो प्रवीण का आगमन यहाँ पर होता हुआ नंबर 3 बल्लेबाज की हैसियत से, और इस वक्त वो सामना करने के लिए तैयार आकाश की गेंदों का। तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर, और इस बीच आकाश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। नए बल्लेबाज प्रवीण इस वक्त सामना करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। आकाश की ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश किया, अंतिम क्षण में रन के लिए दौड़ पड़े। सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर अपनाते हुए फील्डर को पहले ही भांप लिया था कि कुछ हद तक पीछे खड़े हुए, रक्षात्मक तरीके से गेंद को पुश कर दिया, और तेजी के साथ 1 रन के साथ अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं। स्कोर बोर्ड बढ़ चुका है 1 रन के साथ 26 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। बराबर का टक्कर यहाँ पर जारी, और 29 रन चाहिए बचे हुए 19 गेंदों में। 29 to get now in remaining 19 deliveries for emphasis। और इस ओवर में अंतिम बार आकाश इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला, खूबसूरती के और लंगो यहाँ पर टोपी तो उन्होंने जरूर फेंकी, लेकिन गेंद को अंदर ढकेल नहीं पाए, और इसी के साथ ये छक्का उनके खाते में जुड़ चुका है। 32 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। नाउ दे आर लुकिंग इन अ गुड सिचुएशन। 23 टू गेट इन रिमेनिंग 18 बॉल्स एंड स्टिल दे गॉट 9 विकेट्स केप्ट इंटैक्ट। और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनके पारी में क्या होता है। 18 गेंदों पर 23 रन चाहिए, और इससे पहले की चौथा ओवर प्रारंभ हो। माइक्रोफोन पर आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए अंग्रेजी में मैं अब सतीश को बुलाना चाहूंगा। ये सतीश, धन्यवाद, थैंक यू।
Thank you very much, Gopi. An outstanding reply coming from the batters of emphasis, and especially the batter after got a very good start. The opening batters Abhishek and Akshat. Now the Praveen and Akshat try to get some partnership. And first ball at the one run taken in the middle, and with that single scored moves on to 23 on the board. 23 for the loss of one wicket. 33 liberation. 33 for the loss of one wicket. 22 runs more required. Vikesh bowling away from us. Right arm over the wicket balls. Full toss delivery and Joseph. Akshat really looking in a fantastic touch. He is unstoppable today. He's batting on 22 runs in just 10 deliveries. That shows how explosive today Akshat. Again going for the cut shot, this time ball which is just missing the bat of the batter. And Akshat not really impressed with himself. He know exactly that is a short pitch delivery outside the line of off time. He can go for the big shot in the offside region towards the extra cover. There is no deep fielder in the extra cover, but he missed it completely. Here is a Vikesh, right arm over the wicket, balls, full toss delivery, little bit outside the line of leg stump, ball going down to outside the line of leg stump, leg boy called by umpire, little bit Yorker and delivery there from Vikesh, tried to stop the big shot from the bat of Akshat and managed to pick the single. With that single, Skobana moves on to 38 on the board, 38 for the loss of one wicket. What a fantastic reply coming from Vikesh. A little bit correction from the batters of emphasis. Again, they're going for the quick single, chance of run out. Vignesh in that occasion misses the golden opportunity to take the wicket of Praveen in that occasion in the non-strikers end. Praveen this time just survived from that run out, where the fielder Vignesh wanted to get the run out in the non-strikers end, and the batsmen have made it in the last moment. And now Akshat looks like he wanted to finish off the things quickly here, but Vikesh is wanted one good over here for his team. They wanted to back Vishak. Balls this time lofted one ball. And one more expensive one which is comes to end from Vishak, and the man who is responsible for that once again Akshat, and he got his quarter century. Akshat has got his quarter century, and one more fantastic innings came from the bat of Akshat. Now scoreboard which is jumps into 45 on the board. That means another 10 more runs required for the victory in remaining 2 overs, 12 balls and 10 runs required for the victory. Asking run rates first time coming down under 6. That means 5 runs per over. Vignesh, one who is responsible for the good total for his team Glow Touch Warriors. Now he need to do something special from the ball, and if he wanted to do something special from the ball, desperately required the wicket of Akshat, who is looking more dangerous in the middle. And but this time the man is on strike is Praveen in the non-strikers end, and we didn't see how Praveen going to do here. Will he go for the big shot, or he wanted to get the single and would like to give strike to Akshat? Wait and see. The Vignesh desperately wanted one good over here for his team from the far end. Right arm over the wicket balls, going for the swing. It's not a good start there from Vignesh. Without an effort from the batter, he's conceded a single in the form of extra, in the form of wide. With that extra score, but Namuzan to 46, little margin for error when it's only 10 runs required for the opposition. They need to restrict these all extras. Vignesh again, right arm over the wicket, beautifully bowled, but again the direction which is going down the leg stump, little margin for error. You can't do that mistake again. Second wide of this over. That means the bowler Vignesh looks like he's under pressure. 47 on the board.
8 more runs required for the victory. 12 balls remaining. Vignesh balls off the back foot. Try to cut that one. This is the line. This is the line need to bowl. And the batter Praveen wanted to cut that one, but ball which is really moving from the good length spot. Little bit deviation from the good length spot. Ball which is really nicely carried to the wicket keeper. And Vignesh again right above the wicket going for the drive. Nicely driven down to mid wicket region. And Vignesh definitely will going to settle for the single. He want a little bit correction. Akshat will going to settle for the single here. So with that single score moves on to 47, 48. The Praveen is got a single. That means Akshat is on strike now. Akshat will go into face Vignesh. Went for the slog sweep shot and a big swing off the bat, but he missed it completely. Second dotted delivery in this over. After that, two back-to-back wide deliveries. Vignesh got a good line and length. After that, bowled three very good deliveries, and in that three deliveries considered just a single run. Vignesh balls this time, going for the full shot. Ball is in there. Opportunity for the fine leg fielder. My goodness, can you believe this? This is what you call the opportunity which is missed out. The opportunity which is not coming to your way regularly, but whenever the opportunity coming to your way, you need to grab the opportunity. But a fine leg fielder, the missing that golden opportunity to bounce back in this over, and that's definitely going to be a costly miss by the fielder. The wicket of Akshat definitely going to change a little bit the complexion in this match. But Akshat again is lucky. They're still there in the middle, but the beauty of the delivery. The Vignesh this time, of course, the fielder is not anticipating very well. So why not myself? I have to pick the wicket to bowl a beautiful delivery, Yorker line delivery to pick the wicket of Praveen. Then wicket number 2 is back in the pavilion. It's a 49 for the loss of 2 wicket. Praveen departs. Seven balls remaining, 6 runs required for the victory. The Vignesh not really given up. This is what I want to see, the body language from Glow Touch Warriors, not to give up. Not to give up. Still your last breath, you need to try for the victory. The Vignesh is doing the same job in this over. After that, he got a shackling start by bowling 2 wide deliveries. Then he's back very strongly with some excellent deliveries, and in that he picked the wicket of the batter Praveen. The new batsman Krishnaraj came into middle, the right time for the bowler to tighten up the screws, and one dotted delivery takes this match very interesting for the last over. Beautifully bowled, that's what I'm talking about. Vignesh bowled an excellent over. When it's a 10 runs required from 2 overs, this over he considered just a 4 runs. That means the last 2 over, it's going to be more exciting because 6 ball and 6 runs required for the victory. The match is evenly poised. Six ball, 6 runs required for the victory. So now wait and see how well this batter will going to get that 6 runs in remaining 6 deliveries. The batsman Akshat is the one. After playing such a fantastic innings, he doesn't want to see his team in the losing side. He desperately wanted to finish off the things with his bat. But at the same time, Glow Touch Warriors, they know exactly the effort, the one-man army in the Glow Touch Warriors. There's a Vignesh, after scored a lot of runs from the bat, then he was contributed from the ball. So if he wanted to justify the effort of Vignesh, the last bowler will need to bowl 1 good over for Glow Touch Warriors if they wanted to win the match. A long discussion is going on here. Maybe they're talking about which bowler to bowl that last over. I request the fielding team to make it past. Of course, understandable, the situation which is very tense. It's not so easy. And then you need to choose the one good bowler who can be very handy to bowl that last over, who can restrict especially the batter Akshat, who is in a fire, who is on fire. And Joy will go into bowl the last over, and wait and see, can Joy will go into Joy in the dugout of
Glow touch warriors, of course, why can't? He can bring the joy. For that, he need to bowl one good over. The one good over, of course, one which is a just a number of joy. And wait and see how we'll going to bowl that last over. 1 over, 6 runs required for the victory. But more than anything else, Akshat is on strike. Joy. Right arm over the wicket. Akshat. Ah, beautifully bowled. The first delivery which is missed out. This is what you call the cricket. When it was a more than ball runs required, the same man Akshat is doing a right job. When it's a one ball and one run required, each and every ball one run required, the batter started to feel the pressure. This is what the beauty of cricket all about. Joy. Right above the wicket, lofted. That couple of runs will go to release the pressure straight away. Now 4 ball and 4 runs required for the victory. What a match. Absolutely one of the best match of the tournament. The playing between Emphasis versus Glow Touch Warriors. The match is not yet over. Joy bowling away from us. Seaming in. Right arm over the wicket. Full toss. Akshat is back into pavilion. Just like I mentioned about the cricket is the game of glorious uncertainty. The same batsman who looking so comfortable against the bowling of their opposition. When it's a 6 runs required from 6 ball, now it's a 4 runs required from 4 balls. Then he's back into pavilion. Now 4 runs required from 3 balls and bowler will go into continue. Joy. And new batter is in Vinay. Vinay is a striker. Vinayak is a striker. Joy has got a responsibility. So far he's handling the pressure very well. And now it's a 4 runs required from 3 balls. Joy again bowling away from us. Right arm over the wicket. Bowls to Vinayak. Vinayak this time lofted at one. Can you believe this feat? The batter thought it might be a boundary. It might be a boundary because he's played that one very well down to deep square leg region. But a little bit misunderstanding and costing. They're just missing one more runs, I think so. Just a single. 3 required from 2 balls. If the match will go into ended in a tie, then winner will go into decided by the super over. 3 runs still required. 2 balls remaining. What could be a couple of runs in the previous stroke? The batters settle for the single.
Will it going to be a huge mistake? Wait and see. Joy so far done a great job. Absolutely the kind of last over which is required. He is giving his 100%. Again Joy, but job which is not out at over from Joy. Right arm over the wicket balls. Full toss, lofted and he got the distance. He finished the match in a style. That is a juicy full toss. Maybe Joy trying for the Yorker and delivery, which is his failed to get that one. And batsman hitting the ball down to deep long on for a huge 6. And with that 6, it's been an outstanding victory for Emphasis against the Glow Touch Warriors. But you need to appreciate Glow Touch Warriors as well, because they played a fantastic game of cricket, isn't it? It's a fantastic game of cricket. Winning and losing is a part of cricket. But both the teams are really played a excellent game of cricket, and it's.
they elected to field first, and because of that, the openers of MCF are the crease, and we are just waiting for the first ball of the match. Match number 3 of the day 2 of Red Premier League 2023 is now coming up right in front of you. जस्ट विद इन जस्ट शॉर्ट वाइल पहली गेंद इस वक्त लेकर गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए, और तो दीपक का इस वक्त ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार रहा। इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता, गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथों में और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो यहां पर पारी शुरू हो चुकी है एमसीएफ की, एक गेंद फेंकी जा चुकी है और दीपक इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं, जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए अश्विन नॉन स्ट्राइकर एंड पर दीपक का, और एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए रन अप में कुछ हद तक बाधा, और एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा निविया सॉल्यूशंस के कप्तान ने पहले टॉस जीता और फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया, और यहाँ पर एक गेंद इस वक्त फेंकी जा चुकी है एमसीएफ की पारी में। अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, बिल्कुल सीधे रफ्तार के साथ, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है एमसीएफ के लिए। एक रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर, और गेंदबाज दीपक का एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार था। इन हाथों पर द विकेट, गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, चूंकि गेंद को ठीक तरह से बल्ले के बीचों बीच लेने में सफल, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है एक रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर, पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर जारी है, और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार रहा। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को पुल किया, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट एट द लास्ट वन, बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 रनों पर, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। और जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, एमसीएफ को चाहिए इस वक्त एक बेहतर आरंभिक शुरुआत, और क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज अश्विन और दीपक का इस वक्त एक बेहतर आरंभिक साझेदारी निभाने की पूरी कोशिश में, और दीपक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा। दीपक की गेंद तो गेंदबाज दीपक और बल्लेबाज भी दीपक, और इस बीच अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक के लिए यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, और एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है लेग बाइक के रूप में, और लेग बाइक के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। दोपहर सुबह का वक्त, सुबह धीरे धीरे दोपहर की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ, सुबह के 10:50 यहाँ पर बच चुके हैं, और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी इस मैदान पर बढ़ती हुई, और फिर से एक बार गेंदबाज दीपक का ये गेंद इस बार टॉप एज मौका, लेकिन फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। इनफील्ड क्लियर करते हुए गेंद को खेला इस वक्त बैकवर्ड सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जी तोड़ कोशिश इस वक्त जरूर की थी, फील्डर ने गेंद को अंदर की ओर ढकेलने की, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को ढकेल नहीं पाए, और रिवर्स शॉट के जरिए बेहतर स्ट्रोक इस वक्त खेल चुके हैं अश्विन, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर, और एक बार फिर से दीपक का गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज अश्विन के लिए ये गेंद पैरों पर गेंद टकराई, और अंतिम क्षण में गेंद हालांकि शायद गेंद स्टंप्सों पर टकराई थी उनके पैरों पर टकराने के बाद, लेकिन बिल्स वहां पर डिस्टर्ब नहीं हुए, और स्वयं गेंदबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी हैरान रह गए कि वहां पर बिल्स क्यों नहीं गिरे। तो यहाँ पर सब कुछ सुरक्षित बल्लेबाज के लिए, और ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 7 without loss of first over for MCF after being losing the toss and put it to bat by Nivea Solution in the match number 3 of the day 2 of Red Premier League 2023. They made a steady start. In fact, they managed to score 7 runs on the board, yet to lose a wicket. Still, in overall calculation, it's going to be 5 overs remaining in the next 5 ओवर का खेल अभी भी बाकी, और कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज शिवानंद इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा दीपक का,
फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई दूसरा पावर प्ले ओवर यहाँ पर प्रारंभ होता हुआ। और जहाँ तक सवाल है 20 गज के दायरे के बाहर के फील्डिंग के नजरिए का तो लॉन्ग ऑन ना और डीप मिड विकेट इस वक्त ना ठीक सीमा रेखा के पास। ओवर की पहली गेंद पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेला खूबसूरती के साथ मिड विकेट की दिशा में गेंद बढ़ती हुई लंबा दौड़ लगाने के बावजूद गेंद तक पहुंचने में असफल और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। ऐसा कहना पड़ेगा इस बार गेंद को मोड़ा था जरूर लेकिन गेंद गैप पर गई थी और आखिरकार जी तोड़ कोशिश करने के बावजूद तक गेंद तक पहुंचने में सफल और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 अंकों पर यानी 11 रन बिना किसी नुकसान के 11 विदाउट लॉस इन द ओपन नंबर। सेकेंड इन प्रोग्रेस शिवानंद एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर अराउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा। ये गेंद फुल टॉस इस बार गेंद को उछाला नॉट क्वाइट मिड विकेट लेकिन एक रन उन्हें जरूर मिलेगा। दूसरा रन भी मिलेगा इससे पहले कि अपने पैर के जरिए डीप एक्स्ट्रा कवर पर सीमा रेखा के अंदर जब तक गेंद को रोका जाता बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का तो 2 रन उनके खाते में जुड़ चुके हैं और इन 2 रनों के साथ कुल स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 13 रनों पर बिना किसी नुकसान के 13 विदाउट लॉस इन द ओपन नंबर। सेकेंड इन प्रोग्रेस शिवानंद एक बार फिर से गेंदबाजी करेंगे इस वक्त दीपक के लिए। दीपक का कुछ हद तक आत्मविश्वास पर इस वक्त नजर आते हुए पिछले 2 गेंदों में 6 रन वो बटोर चुके हैं। फुल टॉस लेग स्टंप से बाहर विकेट कीपर चूके हैं गेंद पहुंची फाइन लेग की दिशा में और इसका बैट ऑन दैट द लास्ट मोमेंट और इस बीच 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ तब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 14 रनों पर और दूसरा ओवर उनकी पारी का प्रगति पर दाहिने हाथ के बल्लेबाज अश्विन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दूसरा पावर प्ले उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर और शिवानंद ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा absolutely perfect struck this time just covering the stumps at the last moment turns it around the corner and finds the gap very well between backward square leg and a defined leg. In fact he's got a boundary for that और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर बिना किसी नुकसान के 18 without loss. Good progressing here now for MCF और जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का तो शिवानंद एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए अश्विन शिवानंद ये गेंद इस बार गेंद को उछाल गेंद को इस वक्त रोकने में सफल छलांग लगाते हुए अंतिम क्षण में और कम से कम अपने टीम को 2 रन यहां पर बचाते हुए और 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर बिना किसी नुकसान के। बेहतरीन तरीके से गेंद को इस वक्त स्कूप किया था स्क्वायर ऑफ द विकेट बल्लेबाज ने 2 रन यहां पर बटोर चुके हैं। शिवानंद एक बार फिर से तैयार पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा थोड़ी सी सफल होते हुए चूंकि गेंद उनके जांघों पर टकराई और आखिरकार रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 2 ओवर की समाप्ति 20 रन ऑन द बोर्ड 2 overs completed. Good going on here for MCF after being losing the toss and put into bat by Nivea Solution in the match number 3 of the day 2 of RPL Red Premier League 2023. They had a pretty good start. In fact, they managed to score 20 runs on the 2 power play overs with a run rate of exactly 10 runs per over. Still in overall calculation, it's going to be 4 overs remaining in the innings. 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 4 ओवर में MCF के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो गेंदबाज दीपक इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक का तो एक बार फिर से गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों के नाम दीपक है और इस वक्त दीपक के लिए नई ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। 2 ओवर के खेल के बाद अब फील्ड के प्रतिबंध यहाँ पर हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं और दीपक अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। अभी भी कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट यहाँ पर करते हुए और तीसरा ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त MCF की पारी में दीपक ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए
बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक का इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज दीपक की ओवर की अगली गेंद का। तो दीपक का ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। So first ball of his fresh over is now coming up. Deepak to Deepak now. दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया इस वक्त बल्लेबाज दीपक ने डीप मिड विकेट पर, जब तक गेंद को सीमा रेखा के अंदर फील्ड किया जाता। एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका और इस एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर बिना किसी नुकसान के। निस्संदेह कम से कम 40 से 45 के आंकड़े तक इस वक्त पहुंचना होगा एमसीएफ का। अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो निविया सॉल्यूशंस के खिलाफ। और इस वक्त ये दोनों बल्लेबाज एक बेहतर आरंभिक शुरुआत देने की पूरी कोशिश में। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार दीपक। गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अश्विन के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद रक्षात्मक तरीके का खेल, रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला, लेकिन निशाना इस वक्त चूक चुका है। Just gone over a quick single at the last moment, and luckily for the batsman, the ball went just wide of the stumps, and because of that, the batsman survived। और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर। सेंसिबल क्रिकेट पिछले गेंद पर बल्लेबाज ने अपनाई थी और एक रन सफलतम यशस्वीतम पूर्ण करते हुए। और एक बार फिर से गेंदबाज दीपक तैयार, बल्लेबाज दीपक भी तैयार। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज दीपक के लिए रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, कुछ ज़्यादा उछाल लेते हुए स्टंप्सों के ऊपर से गेंद निकली थी विकेट कीपर के हाथों में। और इस बीच बल्लेबाज को रन यहाँ पर नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है इस वक्त 22 रनों पर 22 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। तो दीपक एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। ये गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर मोड़ नहीं पाए ठीक तरह से। एक रन उन्हें जरूर मिलेगा। इससे पहले कि शॉर्ट कवर पर फील्डर तेजी के साथ गेंद पर झपके और गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। लेग बाय का इशारा और लेग बाय की रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 33 रनों पर। इट्स 23 नाउ इन फैक्ट, ये टू लूज एनी विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और इस वक्त दीपक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। अश्विन इस वक्त सामना करते हुए। इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, इन फैक्ट ही गेट्स इन अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। द बॉल स्ट्रेट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर। द बैट्समैन आर फाइनली सेटल्ड विद अ सिंगल, एंड विद दैट सिंगल द स्कोरबोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 24 विदाउट लॉस नाउ। रन्स ज्यादातर सिंगल्स के रूप में अब बनते हुए। पहले 2 ओवर में 2 चौके जरूर लगे थे, लेकिन उसके बाद रन की गति काफ़ी फीकी पड़ गई है इस वक्त। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, अपील जारी है, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं है। और इसी के साथ ओवर नंबर 3 की समाप्ति हो चुकी है। 3 overs completed and after 3 overs 24 runs scored by the batsmen of MCF, yet to lose any wicket, and still in overall calculation it's going to be 3 overs left इन देयर इनिंग्स। और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब अंग्रेजी में मैं सतीश को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।
So thank you very much. Welcome back. Thank you, Gopi. 24 runs, which is came from first 3 overs at the rate of 8 runs per over. This time, lovely shot, lofted at one. It's going to be a chance here for the fielder. Once it looks at ball, which is came left the bat of the batter. Ashwin, it looks like it's going to be a maximum, but I think he's played it on very high. He played that one very high, so that ball is just landed into the fielder down at deep long on. This is a big wicket for Nivea's Solution, the huge wicket for Nivea's Solution, and Karthik is producing the very important breakthrough in the first ball of his over, and this is the right time for the fielding to tighten up the screws. And Ashwin, after playing a very good innings for his team, scored a valuable 13 runs with the help of 2 boundaries, is back into pavilion. So Nivea Solution, yesterday they played a good game of cricket against Union Bank of India in the first round match, and then MCF they defeated Yum Result Service Private Limited in their first match. They're battling for the next round of this prestigious RPL. Here is Karthik, right arm over the wicket to the new batter, going for the big swing of the bat, but without coming to the line of the delivery. Perfect delivery to ball to the fresh leg. Sujit wanted to drive the ball on the onside region, but a line of the delivery which is outside the line of off stump, so completely missed out. Wicketkeeper behind the stump did the rest. Back to bowler Karthik. After ball got a wicket in the first ball, looking so confident. Third time in this over, balls again the beautifully ball, well pitched up delivery into the body level of the batter. Batter tried to turn that on the onside region. This time umpire signaled it's a leg by, so that with that leg by, Skobar Namuzan to 25 on the board in the over number 4 is in progress. And Karthik, the experienced campaigner, so far he's bowled a very tidy line, especially after getting got a wicket of Ashwin in the first ball of the over. And you know exactly one good over which is badly required for the team Nivea's Solution. Arjun is the 2 fresh legs in the middle, new batters in the middle. Whenever there is a new batter in the middle, perfect time for the fielding team to bowl some good overs. Karthik again, right arm over the wicket, short pitch outside the line of leg stump, going for the big swing of the bat. Luckily, that ball is just missed the bat of the batter, but the umpire not misses here to signal the wide. With that extra score, Namuzan to 26 on the board for the loss of 2 wicket. Karthik back to his bowling walk. Away from umpire Rajeshwar. Bowls beautifully balled, perfect Yorker and delivery, but just missing the off stump of the batter. Beautifully balled there by the bowler Karthik in the negation, with some extra pace in that ball. And batter shoved across the line of the delivery, wanted to swing that one in the onside region. Luckily that ball misses the stumps. Fantastic over which is continues here from Karthik, right arm over the wicket. Balls beautifully ball, one more beautiful delivery. Have a look at that ball, is just carried to the wicket keeper. How quickly ball is just after hitting the mat, ball came to the wicket keeper in such a pace that looks like it's going to be a difficult time. Continues here for the batter, new batter Arjun here. Arjun facing next ball from Karthik. This time lofted, but I think the fielder there in the deep long off will going to take the catch. Comfortable catch taken in the deep extra cover, in fact. And Karthik picked up a second wicket in this over. This is one of the best over for team Nivea's Solution. Through Karthik, they really back into this game. MCF have lost their 3rd wicket at the score of 26 on the board. That means just a couple of runs conceded in that over, Karthik, and he picked up a 2 valuable wicket of Ashwin and now the wicket of Arjun. So Nivea's Solution are rightly back in this game through Karthik. The one day 2 overs remaining in the innings of team MCF, and wait and see how well the team MCF will going to get the runs in the remaining 2 overs. 12 balls remaining, excluding wides and no balls, and 12 balls. If able to get another 15 runs, it's going to be a score which is around 40, and
it's a fighting total, and maybe the first intention of these two batters to get that runs, because the 2 overs remaining, two new batters are in the middle. Vinod brought into attack from the far end. One more bowling change. This time lofted. This is what you call the brave and gutsy batting under this condition when the bowlers are dominated. This time the batsman not really settling the bowler in the fifth over. The first ball itself is clearing the boundary line down at a deep mid-wicket boundary. Magnificently struck there by the batter Sujit. Vinod again from the far end. Right arm over the wicket. Full toss delivery. One more huge six. One more. Sujit, have a look at that, the way he's just hitting the ball. So easy for him. But this time it's a juicy full toss. This time it's a juicy full toss from Vinod. The first one is played that one quite brilliantly. Nothing much wrong with the line of the delivery. But second one, which is a juicy full toss for Sujit to dispatch that one down to mid-wicket boundary for a second six. Will it go into a hat-trick six? Wait and see. Vinod straight away under pressure. 38 runs, 12 in 2 balls. This time lofted it, but this time it didn't got enough the bat onto that. It didn't got enough timing in that stroke. And this time little bit to change up pace, I think so. If the bowler bowled a slower one, so that the batter Sujit couldn't manage to get that one from the middle of the bat. Just a single. 13 runs came from just 3 deliveries of this over number 5th. And scoreboard is 39 on the board for the loss of 3 wicket. Here is again the bowler bowling from the far end. Full toss, that no ball, which is a beamer. High full toss, and rightly so, the 2 umpires already called it's a no ball. So no ball in the sense is a free hit delivery, and it's not a good start there from Vinod. After that, a fantastic over of Karthik. The Vinod did not really justifying the effort of Karthik. Is conceding some runs. Now it's a no ball. And that means a free hit delivery for the batter. The 15 runs already scored in that over. The free hit delivery. And the batter picked up a single down to square leg region. With that single, scoreboard numbers on to 42 on the board. What an unbelievable comeback in this over by the batters, especially Sujit. He's got some runs in the bat. Full toss, one more full toss, one more huge that got down to in front of square. 3 sixes in that over. We know this furnished badly by the batters, both the batters. Now I think the Keshav is joining the party. Again the juicy full toss, and Vinod is not really learning from the mistake. 2 full tosses in that over, and the batters capitalizing that one. This time off the back foot, lofted, but straight to the hands of deep long off. Keshav departs. He wanted to smash that one over that deep long off region, but ball went straight to the hands of fielder at deep long off. So wicket number 4 is back into pavilion. It's a 48 for the loss of 4 wicket. The over number 5 completed, which is highly expensive over ball by Vinod. So 22 runs came from that last over of Vinod. Where could be a golden opportunity for a team Nivea's solution to restrict the opposition cheaply. But because of that expensive over, and the MCF once again strongly back into this game. And we didn't see how Karthik will go into restrict in this last over. He's been outstanding in the first over. And he's bowling the second over, and again he continues that line and length what he has got in the first over.
He's been very impressive. Scoreboard is 48 on the board for the loss of 4 wicket in the over number last in progress. Karthik again bowling away from us. Right arm over the wicket. Lofted at one. Fielder is underneath it and taken the catch. Sumit takes the catch down at wideish long on. The Sujit is the man after played some enterprising cricketing stroke and entertainment innings which is comes in and of Sujit. It's been a small cameo but a lot of effective in that small cameo from Sujit. Picked up 2 sixes where he's changed the complexion of this match, and I think he's did all the damages what he really wanted to do in the 5th over. But here is a Karthik is looks so impressive in the bowling department of the fielding team. Nivea's solution is picked up his the wicket number 3rd. 3 wickets for Karthik. Outstanding bowling spell here from Karthik. But job which is not yet over from Karthik. You know exactly another 4 deliveries remaining. They need to restrict the runs in these 4 deliveries, but new batters just walking towards the middle. Shravan, the left-hand batter, and for the left-hand batter, 1 at square leg, 1 at mid-wicket. The fielder down at deep long on, 1 fielder at deep long on, and 1 fielder at deep cover point. The 5 fielders outside the circle. There is a mid-on, short fine leg, short third man, and a short extra cover. This time lofted handsomely, and Karthik will not going to get there. Karthik will not going to get there in the deep wideish long on region, and Shravan hitting that 6, a very important 6 in this final over. Just like I mentioned, the job which is not yet over from Karthik, and he is punished. That's only because of left-handed batsman is on strike, so bowler really couldn't manage to get the line and length properly. This time he will going to come back with it strongly by taking the wickets of the same batter, one who hit the 6. Shravan back into his pavilion, and Karthik picks up its 4th wicket. The 4th wicket for Karthik. But the kind of damages which is needed in the last over, and Shravan after hitting a 6, he back into pavilion. 54 already on the board for MCF. Definitely it's going to be a good score in the condition when 3 deliveries to spare and remaining 2 deliveries to spare, and it's going to be another any runs in 2 balls, which is going to be a bonus run for the opposition MCF. So new batter Karthik came into bat, and Karthik to Karthik. 2 wickets in that over, altogether 4 wicket haul for Karthik. Nicely plays it down to backward point region for a single by the batter Karthik. With that singles covered, moves on to 55 on the board. 55 for the loss of 6 wickets back into pavilion. Last delivery remaining of the innings of MCF. Karthik so far conceded 7 runs. It's not a bad over, even including that 6 in that over. It's a better over. Can he finish with the 5 wickets? Already 4 wickets. Karthik. Right arm over the wicket. Ball him! Clean him up! 4 wickets. Display here from Karthik. The last delivery is a fantastic one. Yorker length delivery. Perfect deliveries to ball to number 7 batter. Number 6 batter, in fact, Vinay cleaned him up by the Karthik's Yorker length delivery. And at last, CMCF, they finished their innings with a 55 and set a target of 56 to win this match. And wait and see how well the team Nivea's solution will go into back to get the big total of 56 to win this match, 56 to qualify for the next round, the quarterfinal of this prestigious cricket tournament. It's going to be a more interesting game of cricket coming up here. In fact, they will go into playing for the semi-final. The winning team will going to get a place in the semi-final. Now, the time for Nivea's solution to come and perform
against the good bowling department of MCF, and wait and see how well these two teams will go into battle for the victory. But I think it's a highlight of the innings. The quick fire runs from Sujit for just scored a 14 valuable runs in the 8 deliveries. Then Ashwin in the beginning scored 13 valuable runs in just 11 balls. But more than anyone else, Karthik picked up a fiper and 5 wickets in his 2 overs. I want to see his bowling figure. 2 overs, no maiden, conceded 8 runs and picked up 5 valuable wickets. Unbelievable bowling figure. So Shreyas and Sumit, the openers for Nivea Solution. Shreyas, the striker, and the non-striker is Sumit. And for Nivea Solution, the ball is taken by Ashwin. Starts the fresh proceedings for MCF. The first ball of their innings is now coming up, but driven that one down to mid-off for a single. और इस एक रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है इस वक्त निविया सोल्यूशन के लिए। एक रन बिना किसी नुकसान के अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार गेंद को उठा इन स्टाइल लेवल लॉन्ग ऑन फेस, और इस छक्के के साथ वो अपना खाता खोल चुके हैं और स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पाने का यहां पर शुरू हो चुका है। 56 रन उन्हें बनाने हैं निर्धारित 6 ओवर में 9.34 रन प्रति ओवर के औसत से। और जहां तक पावर प्ले का सवाल, इस वक्त पावर प्ले का फायदा उठाना इस वक्त बेहद जरूरी बन चुका है। अगेन द सेम ट्रीटमेंट दिस टाइम मिड विकेट एरिया। तो पहले प्रयत्न में गेंद को अंदर की ओर ढकेला था, लेकिन दूसरे प्रयत्न में गेंद को लपकने का
मौका जरूर था फील्डर के लिए, लेकिन गेंद उनके हाथों से छूटती हुई और बल्लेबाज यहाँ पर 2 रन प्राप्त करते हुए, और इन 2 रनों के सिर्फ 1 रन यहाँ पर प्राप्त करते हुए और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर इस 1 रन के साथ। और फिर से एक बार अश्विन गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट, इस बार ड्राइव किया मिड ऑफ पर, the ball just over the ground at the last moment with both hands, and that is the absolutely fantastic catch taken by the mid outfielder, and because of that the first wicket lost for Nivea Solution. Shreyas departs and now they are 8 for the loss of 1 wicket. I request the captains of Quest Corporation Limited and Primacy. I request the captain of Quest Corporation Limited, please to be reported here. The captain of Primacy Revengers is now waiting for you for toss. Rachit, the new batsman, is now comes out to the middle, slowly walking towards to the crease. और वो इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर कदम बढ़ाते हुए, और अश्विन ने इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर, तो पिछली गेंद पर अश्विन इस वक्त विकेट प्राप्त कर चुके हैं और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बैकफुट पर गए, गेंद को कट करना चाहा, ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर गेंद नहीं निकल रहे थे और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर कुल मिलाकर रुक चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। निस्संदेह एक बेहतर शुरुआत की इस वक्त सख्त जरूरत है निविया सॉल्यूशंस को, अगर उन्हें लक्ष्य तक पहुंचना है तो 56 रनों के बेहतर गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी, गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, चूंकि 2 बेहतर गेंदें और ओवर की समाप्ति हो चुकी है यहाँ पर अश्विन की। 8 रन पहले ओवर में उन्होंने प्रदान किए, 1 विकेट भी प्राप्त किया श्रेयस के रूप में और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 56 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 8 रन जोड़ चुका निविया सॉल्यूशन 1 विकेट के नुकसान पर। 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट फॉर निविया सॉल्यूशन, chasing the victory target of 56 in 6 overs. They made a big start. In fact, 48 more runs now they have to score for victory in remaining 5 overs with the required rate of exactly 9.60 runs per over. और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है तो इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए सुजीत, Primacy Revengers, after won the toss, they elected to field first against Quest Corporation Limited in the last quarterfinal of this competition, and that match is now coming up live exclusively right after this match. First ball, love that. This time गेंद पहुंची इस वक्त डीप मिड विकेट पर, जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है सुबह के 11:30 यहाँ पर बजते हुए और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा घुटनों के बल बैठते हुए, लेकिन गेंद को उछाल नहीं पाए और आखिरकार इस गेंद पर रन बल्लेबाज को नहीं मिला। हर रेड आउट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता नजर आता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर, अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी उनके लिए। सुजीत एक बार फिर से तैयार, ये गेंद इस बार बैकफुट पर गए, हल्के से गेंद को पुश कर दिया और जहाँ तक का सवाल है इस वक्त ओवर थ्रो का, तो ओवर थ्रो के रूप में दोनों बल्लेबाज 1 रन यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं। विकेटों पर शाइन किया था, निशाना दागा था और उनका निशाना चूकता हुआ और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। सुजीत अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहा। ये गेंद अच्छी गेंद थी, रक्षात्मक तरीके के खेल, सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए इस वक्त हल्के से गेंद को खाली क्षेत्र पर पुश कर दिया बैकफुट पर जाने के बाद और शॉर्ट कवर पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 11 रन बच चुके 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर। सुजीत एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। यह गेंद सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, मिडिल स्टंप पर जाकर गेंद टकराते हुए और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है।
आउट होने वाले बल्लेबाज रचित पूरी तरह स्टंप्स एक्सपोज करते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा था, लेकिन आखिरकार गेंद के लाइन पर नहीं आ पाया और गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे मिडल स्टंप पर जाकर टकराए और बिल्स इस वक्त तोड़कर गिरते हुए और इसी के साथ दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। इट्स 11 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। नीविया सॉल्यूशन आर नाउ स्ट्रगलिंग। So we are just waiting for the number 4 batsman of Nivea Solution और नंबर 4 बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर उतरते हुए। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा अपने विजय से अभी भी 45 रन और दूर और 4 ओवर का खेल इस ओवर के बाद और होना बाकी उनकी पारी में। कुल मिलाकर 25 गेंदें बाकी है और रन चाहिए 45। शिवानंद का आगमन होता हुआ और वो इस वक्त सामना करेंगे यहाँ पर गेंदबाज सुजीत की ओर की अगली गेंद का और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार इस वक्त सुजीत दाहिने हाथों पर विकेट। ये गेंद हल्के से गेंद को मोड़ना चाहा, गेंद इस बार नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज काफी आगे निकला है और यहाँ पर ये रन आउट हो चुका है। जोखिम भरा रन चुराना चाहा था और कोई मौका नहीं इस वक्त क्रीज पर वापस लौटने का और इसी के साथ ये विकेट नंबर 3 यहाँ पर गिर चुका। थर्ड विकेट डाउन, गोस डाउन इन फैक्ट। नीविया सॉल्यूशन आर नाउ लुकिंग इन ट्रबल नाउ। इट्स 11 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एंड 2 overs are completed. 45 more runs now they have to score for victory in remaining 24 deliveries with a record run rate of exactly 11.25 runs per over and still they got 7 wickets kept intact। 7 विकेट सुरक्षित, 45 रन बनाने बचे हुए 24 गेंदों पर और अब ऐसा कहना पड़ेगा निवियस सॉल्यूशन को चौके छक्के ही इस मैच में वापिस ला सकते हैं। तो एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला आरपीएल रेड प्रीमियर लीग 2023 की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई और दिन नंबर 2 इस प्रतियोगिता का यहाँ पर प्रगति पर। और जहाँ तक सवाल है 4 ओवर का खेल इस वक्त बाकी और तीसरा ओवर उनकी पारी में शुरू होता हुआ। कमेंटेटर बॉक्स की ओर से गेंदबाज कार्तिक माफ कीजिए गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई 2 ओवर के खेल के बाद फील्डिंग के प्रतिबंध यहाँ पर हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण में यहाँ पर दिखाई देता हुआ। ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार है, गेंद पटकी हुई गेंद बैकफुट पर गए, गेंद को कट किया इस वक्त। गेंद पहुंची कवर पॉइंट पर, जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 12 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। इनफैक्ट 5 गेंदें अभी भी इस ओवर में बाकी, 23 गेंदें बाकी उनकी पारी में और कुल मिलाकर 44 और रन चाहिए। 44 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 23 बॉल्स। अगली गेंद के लिए तैयार, पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछाला, गेंद पहुंची वाइड स्लॉन्ग ऑन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। रन सभी भी सिंगल्स में बनते हुए और जहां तक का सवाल है चौके और छक्कों का तो कोशिश तो जरूर इस वक्त जारी है निवियस सॉल्यूशंस के बल्लेबाजों द्वारा, लेकिन सफलता अब तक पूरी तरह उनके पक्ष में नहीं आई है। सिर्फ एकमात्र छक्का उनके पारी में लग चुका है सुमित के बल्ले से और कार्तिक ये गेंद टिप किया एंड फील्ड क्लियर करते हुए एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर वहां पर मौजूद। 1 टिप्पे के बाद 2 टिप्पे के बाद जब तक गेंद को फील्ड करे रनआउट का खतरा इस बीच, लेकिन यहां पर बल्लेबाज दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं। थ्रो कुछ हद तक धीमा और इस वजह से बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर। इट्स 15 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। कार्तिक गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, लॉस्ट इट दिस टाइम आई थिंक against the win and paid the penalty for that. One more wicket fallen. The problems are now more building up for Nivea Solutions. Deepak the man dismissed and a 4th wicket gone for Nivea Solution. It's 15 for the loss of 4 wickets.
41 more runs now they have to score for victory in remaining 20 balls now. And as far as the big strokes are concerned, like boundary of sixes at this stage for Nivea Solutions, they badly required a couple of big strokes in the face of boundary of sixes to get back into this match. New batsman Karthik is now comes out to the middle. इस वक्त सपना करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, कवर की दिशा में रन के लिए दौड़ पड़े, एक रन मिलेगा, थोड़ी सी मिसफील्ड वहां पर और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. 26 for the loss of 4 wicket in the over number 3rd in progress. Still a ball left in this over. इस ओवर में अंतिम बार 16 रन बन चुके हैं. 16 for the loss of 4 wicket और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज तैयार. इस बार ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ गेंद को मोड़ा, इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ती हुई और गेंद सीधे फ्लेक्स पर जाकर टकरा चुकी है. डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के निप्पॉन पॉइंट्स के बोर्ड पर और 4 रन यहां पर बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं. 3 ओवर की समाप्ति, हाफ द वे मार्क. 20 for the loss of 4 wickets. Still the batsmen of Nivea Solution are now searching for the right track. 36 more runs so they have to score for victory in remaining 3 overs, and the asking run rate is now gone up to exactly 12 runs per over. 36 they have to score in remaining 18 balls, and let's see what will happen in their innings in the remaining last 3 overs. और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के अंग्रेजी में सतीश को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा. धन्यवाद. थैंक यू. Thank you very much, Gopi. And 20 on the board after completion of over number 3. Looks like Nivea's needed some partnership. At the same time, some acceleration of run rate is badly required. 36 more runs required for the victory in the remaining 3 overs and 18 balls remaining. Karthik wanted to turn that one onside region down to square leg region, wait for the umpire signal. It's from the bat, so that one more addition to total. 21 on the board for the loss of 4 wicket in the over number 4 is in progress. Karthik and the batter Shivanand have to get some partnership, and not only the partnership they required, but some the changing the gear is very important here to get the winning runs here. 35 more runs required for the victory, and Sujit again drives that one nicely down to deep square leg region, but here again they settle for the single, looking for the second. In comes the throw from the deep, and batter Shivanand wanted to get a couple of runs, but Karthik is not interested, rightly so. That ball which is came into the hands of bowler very quickly. So with the addition of that single, Skuband moves on to 22 on the board, and 24 more runs required for the victory. Again 34 more runs required for the victory. Again a little bit outside the run back stump, and the batsman flicks that one off his legs down to short fine leg region for an easy single. With that single, Skuband moves on to 23 on the board. Runs are coming in the form of singles. That's the big problem here. After got the first 6 which came from the bat of Sumit, runs which is dried up. And again outside the non-back stump, going to be punishable from umpire. Even the wicketkeeper fails to collect the ball. Wide plus 1, 2 wides with the 2 extras. Skuband moves on to 25 each and every run, which will Nivea Solutions will going to enjoy, because they need to get some runs in the remaining deliveries with some little bit tough run rate required in front of team Nivea Solution, but not impossible in cricket. And here is the bowler from the far end. Right arm over wicket balls to Karthik. Karthik shuffled across the line of the delivery too much, exposing his all stumps. When you expose your all stump, you need to connect the ball. If you miss the ball, the bowler will going to hit the stump. And Sujit just bowled that Yorker line delivery for Karthik. He's shuffled too much across the line of the delivery, exposing his stump. Pays the penalty for that, and now they are looking in a serious trouble. 25 for the loss of 5 wickets. Nivea Solution need to get some solution immediately, and from the bat, if otherwise it's going to be a MC of looking in a commanding position in this particular match. So new batsman coming to the middle with some solution, and wait and see how well he will going to get to solve that problem here. The big problem here is that not only the partnership which is required for
Nivea solution, but at the same time, some big shot which is badly required. Right above the wicket, going for the big shot, but missing it complete. Ball hitting the leg of the batter. No chance of any run so far. It's a good over. Continues here from Sujit. And jersey number 7, the new batter just came into middle. Sushant facing his next delivery. Right arm over the wicket. Balls are going for the pull shot again. That ball is hitting, missing his bat. Good over. One more over. Good over. Completed by MCF. The MCF are looking in a really controlled situation in this particular match. Now last 2 overs remaining. 12 balls remaining excluding wides and no balls. And out of that 12 deliveries, they need to get another 31 runs to win this match. 31 required from 12 balls, and asking run rate, it's a 15.5 runs per over. Asking run rate is 15.5 runs per over. It's going to be a very difficult one, but not an impossible one. Karthik back into his attack for to bowl the second and last over of his quota. Of course, a difficult task, and maybe it was a difficult one, but a difficult road, and leads to beautiful destination. And destination here is a 35 for solution to get in the remaining deliveries in 15.5 runs per hour with the required run rate. And one more single is added to total inside edge of the bat with that single scoreboard moves on to 26 on the board for the loss of 5 wicket. And that's only because of MCF has got some fantastic bowling department, and against their disciplined bowling attack, the batters of Nivea Solution still struggling in the middle. And wait and see how well Sushant will go to break the shackle. Here again the bowler Karthik, right arm over the wicket, outside the runner line of leg stump, a little margin for error, and rightly so umpire Rajeshwar called that wide, with that wide score numbers on to 27 on the board for the loss of 5 wicket in the over number 5 is in progress. Karthik again bowling away from us, right arm over the wicket, beautifully bowled, perfect one in the negation there from Karthik. That's what I'm talking about. MCF has got some professional bowlers who can be the very handy the ball in the slog overs, even in the middle overs, even in the power play overs. They are dominating totally. Right arm over the wicket, Karthik balls again outside on next time. Going to be a one more wide, second wide of this over. A little bit of excitement there from the bowler, isn't it? He's wanted to get some quicker deliveries. By doing that, he's just lost his concentration over the line. This is a second ball which is going down the leg stump. Maybe that direction of the wind, which is very difficult for the bowler to control that. The deviation of the ball with the direction of the wind, he couldn't manage to control that line. Ball just going away from outside the line of flex stump. Karthik again back to his bowling mark, bowling away from us. Right arm over the wicket, passes umpire Rajeshwar. Balled him, cleaned him up. That's what Karthik is trying for the last 2 to 3 deliveries. He wanted to get one Yorker line deliveries, quite enough for Sushant in the occasion to dismiss with a fantastic delivery. So Karthik picks up a wicket here. The wicket number 7, which is back, 6 is back into pavilion. Now Nivea Solutions are in a deep trouble, and it's the new batter. Chandrasekhar is walking towards the middle.
Karthik again bowling right arm over wicket. Beautifully bowled. Perfect one there from Karthik to for the fresh leg. The batter Chandrasekhar misses it completely, and there is no chance at all for any run. Karthik looking so good in this over. Two wickets already here for Karthik, so two wickets for Sujit and one wicket for us Ashwin. For three medium pace bowler is really dominating in this over. Again they're going for the quick single, chance of run out and looking for the direct hit, but umpire says not out, which is collected by leg by call by umpire bowler, and they just uprooted the bails, but batsman is safe here, and one more run added to total 29 on the board. Still, it's a long way to go for Solution to win this match. Over number 5 is in progress. One more wide. The Karthik's one problem in this particular over is that he bowled so many wide deliveries. This is the third wide of this over. It's a big over. The over of 9 deliveries so far. Karthik again bowling right arm over the wicket to Shivanand. Shivanand lofted that one. This is going to be a Shivanand back into pavilion, and Karthik picks up his third wicket. Karthik picks up his third wicket. The wickets are tumbling like a pack of cards. That's only because of their wanted to get some huge score, and last over remaining now in the innings of Solution. 6 ball and 26 runs required for the victory. Now last option for the batters of New Year's Solution. They wanted to win the match. They need to deal with sixes. The 4 sixes, 2 runs will go into complete the job. But one good over, not only one good over, 2 good deliveries is quite enough for team MCF to qualify for the next round. The bowler from the far end, last over. Shravan, left arm, driven that one, will go into your first 6, no. Ball which is fielded by the fielder in the deep long on, nicely driven there by the batter, but not quite enough to get the distance. 25 required, 5 balls remaining. Last opportunity for a Solution. Left arm around the wicket, driven that one down to deep long off. Just a single. 24 required from 4 balls. That means 4 sixes which is required for Solution to get into the next round of this prestigious RPL. Will go into a possible. The wait and see. Full toss driven that one. That's it. Looks like just a single here for the batter. The 3 balls, 23 required. Just a formalities left in this game. Unless the bowler to bowl any no ball and white balls, no one can stop MCF to qualify for the next round of this prestigious RPL. Coming down the track, lofted that one, but fielder is underneath in the the mid-wicket fielder, saying that very difficult to see the ball, but here is a run out taken place. When they're coming back for the second run, run out taken place. But this single will not going to help a Solution. The fielder in the mid-wicket fielder just complaining to the sun that the rays of sun hitting his eyes. So very difficult to take the catch. .22 required, 2 balls remaining. 12 runs per ball is the required run rate. Shravan. MCF really batted well, bowled well, fields well, and bowled wide in that occasion. Shravan. One more addition to total, with the addition of that singles cover numbers on to 34 on the board of
Nicely driven down to wideish long of one bounce into the fence, but it's too late. It's too late, that kind of treatment which is required in the early stage of the innings, but unfortunately, which is came in last over, which is no use at all for solution. Now, last ball remaining to complete the formalities of victory for MCF. Coming down the track, missing the line completely. Wicketkeeper not missing the opportunity to complete the formalities of making the stump out. One more wicket is back into pavilion. Absolutely, it's a one-sided match. A comprehensive victory here for MCF. Defeated their opposition by huge number of runs.
धन्यवाद सतीश. So the match number 4 of the day 2 of Red Premier League 2023 is now going to start. The last quarterfinal of this tournament is now going to start, and primacy after one of those, they elected to bowl first against Quest Corporation Limited, and the first ball of their innings is now coming up. Their openers, Vijay and Avinash. Meantime, the bowler is Suhas. Start the fresh proceedings from that side in. और पहले गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. दाहिना तो ऊपर द विकेट. ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड किस रन के साथ इस वक्त रनों का सिलसिला शुरू हो चुका है यहाँ पर क्वेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए. एक रन बिना किसी नुकसान के 6 ओवर प्रति पारी खेले जाएंगे, 2 ओवर पावर प्ले के. और एक बार फिर से सुहास गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाता है. फुल टॉस. गेंद कौन साइड पर उछालना चाहे. एक बार फिर से वाइड का इशारा. लगातार 2 वाइड इस ओवर में गेंदबाज इस वक्त फेंक चुके. दोनों लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और सफल होते हुए गेंद कौन साइड पर उछालना चाहता इस वक्त बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर. और 2 रन इस वक्त स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है बिना किसी नुकसान के. दोनों रन वाइड के रूप में बन चुके हैं. सुहास एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. ये गेंद इस बार गेंद को पुल करना चाहा. नॉट क्वाइट मिडलिंग इट एट द लास्ट मोमेंट. गेंद पैरों पर टकराने के बाद विकेट कीपर ने आगे गिरा कर गेंद को फील्ड कर लिया और रन से स्पीच बल्लेबाज को नहीं मिला. तो 2 रन बिना किसी नुकसान के यहाँ पर स्कोर है. निस्संदेह जहाँ तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, क्वेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इस वक्त चाहिए एक बेहतर शुरुआत. और दोनों बल्लेबाज अविनाश और विजेत इस वक्त एक बेहतर शुरुआत देने की कोशिश में. इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहे. एक बार फिर से वाइड का इशारा और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के. अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच इस टूर्नामेंट के अंतर्गत यहाँ पर शुरू हो चुका है. आरपीएम रेड प्रीमियर लीग 2023 के अंतर्गत. और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है तो सुहास इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए. दाहिना तो ओवर द विकेट. ये गेंद पटकी विकेट कट किया खूबसूरती के साथ, लेकिन पॉइंट पर गेंद पहुंची. रन के लिए दौड़ पड़े. नजदीकी मामला इस वक्त हो सकता था अगर विकेट कीपर विकेटों के पीछे ठहरते, लेकिन विकेट के आगे उठेर कर उन्होंने गेंद को कलेक्शन किया. और इस बीच बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ यहाँ पर सुरक्षित दम बदल चुके हैं और 1 रन के साथ कुल स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के. एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है V4 न्यूज़ 24/7 चैनल द्वारा. शुमान मानिक इनके सारथ्य में. और जहां तक सवाल है अगली गेंद का तो सुहास इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा. वाइड का इशारा. लेग स्टंप से काफी बार अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तराशते हुए गेंदबाज सुहास काफी वाइड इस ओवर में फेंक चुके हैं. और एक और रन वाइड के रूप में उनके खाते में जुड़ता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के. जबकि पहला ओवर उनके पारी का यहाँ पर प्रगति पर. और अगली गेंद फुल टॉस ऑफ द टॉस. गेंद को खेल दिया इस वक्त मिड विकेट पर. पैरों के जरिए रोकना चाहा, रोक नहीं पाए. बैकअप होता हुआ मिड विकेट पर और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट. और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के. पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर. एक लंबा ओवर सुहास का यहाँ पर प्रगति पर. और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिना तो ऊपर द विकेट. फुल टॉस. पुल किया इस वक्त टॉप एज, लेकिन कोई फील्डर वहां पर नहीं. और गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. ऐसा कहना पड़ेगा. नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट, बट द लास्ट मोमेंट has got a gap perfectly between the backward square leg and a deep fine leg, and because of that he's got a boundary for that stroke. So no ball also called by umpire. 4+1, 5 runs added to the total, and with that 5 runs the scoreboard moving up to 11 without loss for क्वेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड. फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए. और देखना यह है कि इस फ्री हिट गेंद का वो किस तरह फायदा यहाँ पर उठा पाते हैं. सुहास अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद इस बार गेंद को उठा. And he's got enough distance for that. और इस छक्के के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर. 17 without loss. And a terrific struck came from the batter of Vijay now. और सुहास एक बार फिर से तैयार. दाहिना तो ऊपर द विकेट. ये गेंद रिवर्स शॉट. गेंद को खेलना चाहा. Has got that one this time. Not quite middling it. In fact, he's got a single for that stroke. 1 रन मिलेगा जरूर इस गेंद पर. और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 18 रनों पर.
तो काफी लंबा ओवर यहाँ पर सुहास का चलता हुआ, काफी वाइड और एक नो बॉल भी इस ओवर में फेंक चुके हैं। इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लेग से बाहर पुल किया और इस गेंद को इस वक्त स्कूप कर दिया खूबसूरती के साथ डीप बैक स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग के दरमियान चौका इस वक्त प्राप्त करते हुए इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 22 रनों पर। सो 22 रन स्कोर इन द फर्स्ट ओवर एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर क्वेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड आफ्टर बीइंग लूजिंग द टॉस एंड पुट इट टू बैट बाय प्राइमेसी Revengers. They made a terrific start. In fact, 22 runs they scored after completion of first over, and prolonged over came to in from Suhas. Still in overall calculation, it's going to be 5 overs remaining in the innings. This is the last quarter final of RPL Red Premier League 2023 is now progressing here, and the bowler starts a fresh proceedings from the commentator box, and इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज विजेत और नया ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ वसंत इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद पटके हुई गेंद ऑन साइड पर उठा लिमिटेड Vijay hit that one for a maximum 28 without loss, and this is an absolutely outstanding progressing here for them. अगली गेंद के लिए तैयार गेंदबाज की ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड बाउंड की दिशा में, जब तक कुछ मुश्किल के बाद गेंद को जब तक फील्ड करे फील्डर शॉर्ट थर्ड बाउंड पर एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 29 रन्स इस वक्त आसानी के साथ बनते हुए रन्स आर कमिंग क्वाइट फ्रीली नाउ फॉर क्वेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और दूसरा ओवर सिर्फ उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर बाएं हाथ के बल्लेबाज अविनाश इस वक्त सामना करते हुए वसंत की गेंदों का कट किया इस वक्त बैकफुट पर जाने के बाद स्लिप इट ऑफ की दिशा में गेंद इस वक्त पहुंची, लेकिन एक रन बल्लेबाज को जरूर मिला। ऐसा कहना पड़ेगा कि इनको पुश किया था अंतिम क्षण में बैकफुट पर जाने के बाद और एक रन के साथ कुल स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 29 रनों पर। इट्स 30 विदाउट लॉस, 30 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। तो दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार, ये गेंद रिवर्स शॉट, दिस टाइम ही फाइंड्स द गैप एज वेल, ही गेट्स एटलीस्ट कवर, इन फैक्ट इट्स गॉन ओवर द फेंस फॉर अ बाउंड्री। तो रनों का बहाव यहां पर जारी है क्वेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बल्लेबाजों द्वारा। स्कोरबोर्ड इस वक्त छलांग लगाकर पहुंच चुका है 34 रनों पर। इट्स 34 विदाउट लॉस। इस बार स्ट्रोक विजेत के बल्ले से एंड विद दैट बाउंड्री ही इज नाउ मूविंग अप टू 24 नाउ। इन फैक्ट अविनाश बैटिंग ऑन 6 इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, थोड़े से स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद को ठीक तरह से बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो एक लंबे स्कोर की ओर इस वक्त अग्रसर होता हुआ क्वेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त काफी आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए, खासकर विजय था जो कि रनों के बहाव को इस वक्त वो जारी रख चुके हैं। और वसंत अपनी ओर की अगली गेंद पटकी हुई गेंद, इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट। Absolutely perfect strike, 38 for the loss of no wicket, and cost 22 runs, second over cost 16 runs, 22 plus 16, 38 runs they scored in their first 2 overs, and this is an absolutely magnificent progressing here for them at this situation. Still in overall calculation it's 4 overs going to be remaining in their inning, 4 ओवर का खेल बाकी और तीसरा ओवर हमसे दूर वाले शॉट से इस वक्त शुरू होता हुआ गेंदबाज सतीश इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए और लेफ्टी बैट्समैन इज नाउ गोइंग टू फेस अविनाश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। तो
तो 4 ओवर का खेल बाकी है और निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त के लंबे स्कोर की ओर अग्रसर होता हुआ क्वेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त सतीश तैयार, तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद दिस इज गॉन मेनी माइल्स, इनफैक्ट शॉट डीप फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए। तो इस बार अविनाश की पारी, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 44 रनों पर। इट्स 44 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। इनफैक्ट अगली गेंद पटके हुई गेंद, अगेन द सेम। और इन दोनों गेंदों को सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछाल दिया डीप फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए। और अब ऐसा कहना पड़ेगा द बॉलर स्ट्रेट अवे ही इज अंडर प्रेशर। अब देखना यह कि अगले गेंद पर वो किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। इस वक्त सतीश गेंदबाजी करते हुए दाहिना राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया। इस वक्त गेंद पहुंची स्क्वायर लेग की दिशा में। काफी अजीब एक्शन इस वक्त सतीश का, काफी तेजी के साथ अपने हाथों को एक बार पूरे हवे में घुमाने के बाद गेंद को रिलीज करते हैं। और जहां तक सवाल है इस वक्त स्कोर का, तो इस गेंद पर 1 रन मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 51 रनों पर। इट्स 51 विदाउट लॉस एंड द ओवर नंबर जस्ट 3 इन प्रोग्रेस इन द इनिंग। सतीश फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए विजेत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फुल टॉस, फुल टॉस तो छक्कों की पर फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए और गेंदबाज इस वक्त तैयार। पटकी हुई गेंद टॉप एज, इस बार भी गेंद 6 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर। 6 रन 6। गेंद को पुश तो जरूर किया लेकिन खुद सीमा रेखा से बाहर चले गए थे इस वक्त। और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 63 रनों पर। इट्स 63, स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। Five balls and 4 sixes, and Satish once again bowls. This time missing the line completely, appealing for cut behind. Loses umpire. In fact, finally, over has been came soon, and 3 overs completed, 63 runs on the board, exactly 21 runs per over. The present run rate is now progressing here for them. 3 overs remaining in overall calculation in their innings. So देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनकी पारी में क्या होता है। So 63 without loss, 3 overs completed and 3 overs left. And for the next further commission, I would like to invite Mr. Satish in English. Thank you. Nippon Paint. Over number 4th start with a wide delivery by the bowler. Rupesh is the bowler who starts proceeding. It's a little bit correction for the 4th over. He started his first over with the wide, and with that extra score numbers on to 63 on the board, 64 on the board, and that will going to be the record-breaking runs we are witnessing this match. Again outside the leg stump, and batsman went for the reverse paper, missed it completely, and by call by umpire, wicketkeeper also missed it, and scoreboard numbers on to 65 on the board. 39 is the individual score of Vijit. Vijit led correction, and he will go in. This time he lofted, and he got a distance in the flatter version.
Avinash. Towards the first 50 of this tournament because now he's batting on 45. One big shot will going to complete the first 50 of this tournament. This time he loved it but didn't got enough timing. What folks, he wanted to play that one down to mid wicket region because of that missed timing. That ball went towards a wideish long on, so he got the single for that with the singles covered Namuzanto. 72 on the board and individual score of Vijit, which is moves on to 46 on the board. Avinash, he's on strike now. This time going to be a no ball and a beamer there from the bowler Rupesh, and batsman got a single and no ball. 2 runs which is conceded. Free hit delivery for the batsman. Now, Vijit. That was a no ball for them. And bowling a free hit. Balls this time. Vijay lofted that one. Vijay has got a 50 in just 16 deliveries. It's been an outstanding and destructive batting performance here from Vijay. Absolutely, today he's killing the ball. He's just killing the ball here. The Rupesh again bowling the right arm over the wicket. Again, one more 6. It's a raining. It's a raining here of the sixes and boundaries. It's unstoppable. Score jumps into 85. 86 on the board. And with the direction of the wind, he hit that one down to deep mid-wicket boundary for a 6. With that 6, his individual score now moves on to 58. And total score which is moves on to 86 on the board. Absolutely fantastic batting display here from the batter Vijay as well as Avinash. Rupesh again bowling away from us. Right arm over the wicket, he bowls. This time again he lofted. My goodness. It's so easy for Vijay. Vijay to get the sixes. Hat-trick sixes. The batting display here from Vijay. Absolutely mesmerizing. And have a look at that, how quickly he got that all runs in the limited deliveries. He's got all the runs. And but I want to say that all the overs, Suhas starts with the 22 runs in the first over. Vasant continued with the 16 in the second over. Then Satish has been a very expensive with the 25 runs, and Rupesh is a more expensive in the last over with the 29 runs. Now it's going to be a very hot, but more than the hot condition, there is a lot more hot condition here for the fielding team because of Vijay and Avinash is really destroying the bowling attack of their opposition. Quest is getting the highest total score of this tournament, 92. Suhas is the new bowler and looking for the drive, but ball went towards the short mid wicket, going for the quick single, but the batter is not interested. Avinash is not interested. Why not? After Vijit who got some runs in the previous over, maybe he's thinking about, I want to deal with the 5th over. That's why Avinash not interested for the run. Suhas bowls. This time he lofted that one, not quite getting that much of enough bat, but enough to get the boundary down to deep square leg boundary. It really looks like now Avinash wanted to get his 50. The intention is very clear from Avinash as well. He picked up one more boundary there. Really, I'm not understand the strategy. Square leg region and mid wicket region. So one more fielder is now added to the onside region, and the scoreboard numbers on to 96, and it's going to be a first 100 of this tournament if Quest will going to get another 4 runs. It's a 96 on the board for the without loss of an wicket, and wide ball outside the not a wide, it's a no ball because a ball pitched outside the mat, so it's going to be a free hit delivery for the batter. No ball called by umpire.
98 on the board, 98 for the loss without loss of any wicket, and one of the best partnership for the first wicket. And if he's able to get 100, it's been really one of the best opening partnership for this RPL. Not in the edition 1, but all the first edition and second edition, and it is the third edition, one of the best partnership which is recorded in this RPL. Just the 2 runs which is required for the 100 from the far end. Suhas bowls. So this time switch it and got 100. 3 figures for Fred. Vijit now moves on to 70 runs. Can you believe this? 100 comes up here for the opportunity is there for Suhas to complete his individual 100 runs if he continues that batting performance. 19 ball 70. The 19 ball 70, and this time looks like he's walking. He's walking, caught behind the wicket. Absolutely good sportsman spirit shown by the Vijit in the interrogation. After he's got nicked that one, the wicket. It's a 70 runs in just 20 deliveries, and this innings Vijit will going to remember for a long time, and one of the best innings, one I want to say, especially in this RPL. The 70 uh, 4 runs partnership, and our scorer Sachin getting a little bit difficult here because there is no runs now to the yes, the score is 100 is a minimum here but it's more than 100, so you need to turn the page around because 6 overs game 100 is unexpectable. And again one more delivery, which is a good delivery there from the bowler, one of the best overs so far in this particular match there from Suhas. 10 runs and a wicket, and so far all expensive over 22, 16, 25 and 29. Now it's a 12 runs which is came from the over of Suhas. Suhas from the far end. Right over the wicket, switch it comes into play. The fielder there in the deep will going to take the catch comfortably, and Ganesh innings misses comes to an end, is out for duck, and one more wicket here for Suhas. So at last Frivacy Revenger has got a wicket in the last, the 5th over. The Suhas got 2 valuable wickets in the last over remaining in their innings, and wait and see how well the last bowler will go and restrict the runs of the flow of the runs. 104 in 5 overs. Absolutely astonishing batting performance here by Vijit as well as Avinash. For the first innings, it's a record number of runs which is scored. 104 runs partnership. Two sixes altogether, 11 sixes in this particular match. That means 66 runs which is came in sixes, and that shows how explosive the opening batters in this particular match. One more wide, one more extra. Score numbers on to 105. Bowler Vasant.
bowling right arm over the wicket. This time switch it is comes into play. How neatly plays it down, but not really getting the distance right. The fielder in the deep backward point region will going to take the catch and comfortably. The third wicket is back into pavilion and watch some. The first ball, it's Vasant picks up a wicket here, and the batter is looking for the switch it and didn't got the distance as ball landed safely to the hands of a deep backward point region, and a new batter Satish came into middle, and Satish will go into face next delivery of Vasant. Second time in this over, bowling away from us. Right arm over wicket, pass umpire Atmaram. This time again the juicy lollipop full short pitch delivery. And Satish just dispatching that one down to deep backward square leg for a huge six. And this is a sixer number 8. And one more six, and altogether 12 sixes. That means 78 runs, which is scored in only in the sixes. That shows how badly the bowler bowled and how explosive. Once again, the six number 13. Six number 13. '17 now, and still 3 deliveries to spare. One of the record-breaking match as far as flow of the runs are flowing like a fast-flowing waters of the rivers. Vasanta, 4 time in this over. Again, he went for the big shot. This time a little bit slower one attempted by bowler Vasant, and scoreboard is 117 on the board. 117. Little bit entertainment here for the spectators to get some watch some batting display from Vijit, Avinash, and now Satish is joining the party. Vasant bowling 5th time in this over. All right, over the wicket balls. Once again pulls that one. The 6 number 14. 6 number 14 and scoreboard moves on to 120. Just the sixes. 14 sixes in a match is outstanding. It's a record number of sixes in a match. And it's going to be a 15. Number 15. And it's a 90. The runs which is scored in sixes and total score which is the record number of total score
in this RPL and scored 129 runs at the rate of exactly 21 and half runs per over, and they set a target of 130 to win the match for Revengers, and wait and see how well Primacy Revengers will going to take the revenge here. But yesterday, of course, they also taken revenge against Pin Power Blasters when they chased those runs. But there's a different story here. They need to climb the mountain of runs, isn't it? They need to climb the mountain of runs with the asking run rate of 21.66 runs per over, one of the highest asking run rate in this particular tournament. And wait and see how well the batters of Primacy Revengers will go into get that huge total of 130 to win this match. And it's time for the break. And after the break, my friend Gopi will going to take over the microphone in our national language. Indeed, thank you. Nippon Paint. इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त स्क्वायर की दिशा में, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है। 1 रन 90 लाख से नुकसान के, और जहां तक 130 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है तो यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा छक्के और चौकों की बौछार यहां पर लगानी होगी प्राइमेसी रिवेंजर्स के बल्लेबाजों को। और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट एक्स्ट्रा क्विक और एब्सोल्युटली ब्यूटी वन फ्रॉम द बॉलर एट द लास्ट मोमेंट। गोपाल इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। विराज गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार एक बार फिर से उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, और 1 रन दोनों बल्लेबाज इस बीच पूर्ण कर चुके हैं। 2 रन बिना किसी नुकसान के। It's 2 without loss in the over number first in progress, and this is the first over of their innings is now progressing here. 130 runs they have to score for victory in the stipulated 6 overs with the required run rate of 21.67. इस बार गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट। गेंदबाज फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते हुए रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 2 रन बिना किसी नुकसान के।
और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए फुल टॉस ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, नो बॉल का इशारा और गेंद पहुंची इस वक्त डीप मिड विकेट पर। 2 रन बल्लेबाज को मिलेंगे। 2+1 3 रन नाउ एडेड टू द टोटल और 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर। फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। फ्री हिट का बजर इस वक्त दब चुका है और फ्री हिट गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। यह गेंद इस बार पुल किया मिड ऑफ पर सीधे फील्डर के हाथों में, लेकिन फ्री हिट गेंद की वजह से बल्लेबाज इस गेंद पर बॉल बच चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 6 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। तो चमत्कारी बल्लेबाजी ही अब प्राइमेसी रिवेंजर्स को इस मैच में वापस ला सकती है। इस बार बैकफुट पर गए, खूबसूरती के साथ गेंद को खेला कवर पॉइंट की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 7 विदाउट लॉस। फर्स्ट ओवर हैज बीन केम्स टू एन एंड so first over completed, 7 runs are on the board, yet to lose any wicket. प्रज्वल द बॉलर स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द कमेंटेटर बॉक्स एंड पहले गेंद लेकर इस वक्त तो तैयार और सामना इस वक्त करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज विराज और फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। 123 रन स्टिल नीडेड इन 5 ओवर्स इन फैक्ट। इस बार गेंद को उछालना चाहा, नाकामयाब और फील्डर विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अगली गेंद लेकर तैयार। बाउल्ड आउट, फर्स्ट विकेट फॉलन and the batsman is now backing to pavilion. It's 7 for the loss of 1 wicket in the first over for Primacy Revengers. So new batsman is now comes out to the middle और गणेश नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए दूसरा ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है प्रज्वल द्वारा और ओवर की अगली गेंद लेकर प्रज्वल इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंची और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। स्लोअर प्रोग्रेसिंग ईयर नाउ फॉर Primacy Revengers chasing the huge target of 130 in 6 overs. They are struggling now. और ये गेंद उछाला खूबसूरती के साथ मिड ऑफ पर मिसफील्ड और गेंद इस वक्त सीमा रेखा के अंदर जब तक बैकअप की जाए बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। बेहतर फील्डिंग वहां पर फील्डर ने की और आखिरकार एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 9 रनों पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस और अगली गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त फाइन लेग की दिशा में, 1 रन मिलेगा
And with that single run, the scoreboard moving up to double figures now. That means on 10 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. The last quarterfinal match of Red Premier League 2023 RPL 2023 is now progressing here. And Prajwal comes once again. Right arm over the wicket here he bowls. Reverse shot, not quite middling it, but he gets a single for that stroke. और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर. So 2 overs has been completed. 4 runs came from Prajwal's over. Pretty good one. And 2 overs gone. It's 11 for the loss of 1 wicket. First ball of the third over is now coming up. प्रशांत इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और फील्डिंग में इस वक्त जमावट चलते हुए और कुल मिलाकर 119 रनों की दरकार बचे हुए 4 ओवर में. So 4 overs remaining, 119 runs required. और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हैं. क्विकर गेंद टॉप एज मौका हो सकता है इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर के आगे गेंद टिप्पा खाते हुए और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. तीसरा ओवर प्रगति पर 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर थर्ड इन प्रोग्रेस. और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. प्रशांत इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है इस वक्त 12 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर. प्रशांत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहा नॉट क्वाइट मिडलिंग इट इन फैक्ट. और जब तक गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. रन्स इस वक्त सिंगल्स के रूप में बनते हुए कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं बल्लेबाज करारे स्ट्रोक्स लगाने की लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई है और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर. फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया डीप इन विकेट पर. एक बार फिर से सिंगल प्राप्त करते हुए बल्लेबाज और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. इट्स 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. कपल ऑफ बॉल्स लेफ्ट इन दिस ओवर और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. लव दैट दिस टाइम ही फाइंड्स द गैप एज वेल. First boundary came in the innings of Privacy Revengers and with that boundary the scoreboard moving up to 18 for the loss of 1 wicket. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त बल्लेबाज के बल्ले से लगता हुआ और चौका इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं और ओवर की पहली गेंद अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए प्रशांत. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. Lost it and once again he finds the gap as well. Boundary results, consecutive boundaries for the bowler, for the batsman in fact, and the scoreboard moving up to 22 now for the loss of
तो नया ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 20 रनों पर और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी सब तैयार रहा। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस वक्त तैयार रहा। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलती हुई और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और पहली गेंद just gone for a mighty heave this time, not succeeded and collected by wicketkeeper behind the stumps. So there is no possibility of any run. इस बार गेंद को खेला मिड विकेट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रनों पर एक विकेट के नुकसान पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए गोपाल अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा मिड विकेट पर और फिर से एक रन मिलेगा। सो जस्ट अ फॉर्मेलिटीज नाउ रिमेनिंग इन दिस मैच और जहाँ तक सवाल है 96 रन और चाहिए विजय के लिए और इस ओवर के बाद सिर्फ 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी। और इस बीच ओवर की अगली गेंद, ये गेंद पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 24 रनों पर और गोपाल एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए इस बार चूंकि बेहतरीन गेंदबाजी, कंसेक्यूटिव डॉट डिलीवरीज फॉर द बॉलर। The scoreboard stays at 24 for the loss of 1 wicket. और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज से आगे बढ़ाते हुए swept and finds the gap as well. So he's got a boundary for that and the scoreboard moving up to 28 for 1 now. 4 overs completed. So 92 to get from last remaining 2 overs और इस बीच गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए अविनाश स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए पहली गेंद टॉप एज, मौका लेकिन फील्डर थोड़े से पीछे तैनात, एक रन मिलेगा। एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 29 रनों पर, जबकि 5वां ओवर उनकी पारी का शुरू हो चुका है। और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए गणेश चुके और डॉट गेंद। अविनाश इस वक्त गेंदबाजी करते हुए 10 गेंदें कुल मिलाकर बाकी उनकी पारी में और रन से चाहिए इस वक्त 91, 91 to get from 10 balls now. Lofted straight to fielder at mid wicket and that is the wicket number 2. 29 for 2. So right of the
So right after this match, the first semi-final match will be played between Emphasis versus Infosys, and that first semi-final match of this tournament will be starts exact at 1:30 p.m. At afternoon. Emphasis will take over Infosys in the first semi-final, and that semi-final will be played on 1:30 p.m. Just wanted to cut that one at the last moment, missing the line completely and collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. Score इस वक्त रुक चुका है 29 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. Extra quicker and collected by wicketkeeper behind the stumps once again. The scoreboard stays at 29 for the loss of 2 wickets. 7 balls left in overall calculation in their innings, and 91 more runs now they have to score for victory. Edge and taken behind the stumps. 1 more wicket fallen. It's 29 for 3. 5 overs gone. And 91 runs to get from last over. Absolutely impossible task in front of them. And the bowler starts a fresh proceedings. First ball. Here the bowler comes. Wide. 30 for the loss of 2 wicket. 90 to get. Just gets a single for that stroke. 32 now for the loss of 3 wickets, and just 5 balls now left in their innings. Outside the off stump, just played that one after leaving the wicket at the last moment and gone through for a quick single and get it comfortably at last, and with that single run the scoreboard moving up to 33 for the loss of 3 wickets now in the over number 6th and the last in progress in their innings. और गेंदबाज इस वक्त तैयार, गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद है वाइड अगेन, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर. 34 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. गणेश गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, just gone for a mighty heave, not succeeded. Just gets in a single for that stroke. 35 now for the loss of 3 wicket. 3 balls left in overall calculation in their innings. Leg by declared by umpire. $95 more runs, so now they have to score for victory. In fact, it's 85 runs they have to score for victory. Just a single. 36. 2 balls now remaining in their innings.
misses, and a dot ball ball. Last ball is now remaining in this match. That's it. 83 runs comprehensive victory for Quest Corporation Limited against Primacy Warriors and Primacy Revengers, and with that victory they are through to the semi-final of this competition. So the first semi-final match will be starts exactly at 1:30 p.m. between Emphasis versus Infosys, and after that second semi-final match will be played between Quest Corporation Limited versus MCF right after the first semi-final match, and we'll be back right after the short break at exactly at 1:30 p.m. When the first semi-final match of this tournament is now going to start between Emphasis and Infosys.
The big semi-final. Absolutely, it's a big semi-final between very big teams. Infosys versus Emphasis, and wait and see how these two teams will go into battle for the finals of this prestigious cricket tournament. Abhishek is in strikers and Akshat, one who batted brilliantly in the previous match for Team Emphasis, will be in the non-strikers and wait and see how well these two batters will go into lay the foundation in this particular semi-final. Do order situation for the both the teams. They wanted to do before die, and they wanted to qualify for the finals of this prestigious cricket tournament. Ranjit will go into starts the proceedings for Infosys, and wait and see how well Ranjit will go and get the start. Signal straight away came from umpire Rajeshwar, and at square leg umpire Viraj. Everything is ready. Here's the first over of the power play. Deep fielder in the square leg and one fielder deep in the backward point region. First ball nicely driven, that one officially down to deep cover point region. Now outfielder couldn't manage to have a jump tackle with that bounce off the delivery. Ball just defeating that fielder down at deep cover point boundary for 4 runs. So absolutely is a positive start there from Abhishek. Automatrix, experience excellence, an exclusive Tata Motors car showroom, Vijay Mangaluru. This Fantastic Four is brought to you by Automatrix, experience excellence, an exclusive Tata Motors car showroom, Vijay Mangaluru. So Automatrix boundary number first which came in the semi-final in the first delivery of the over, and Abhishek is got a very positive start. Little bit width is offered by the bowler and batsman, capitalizing that one in the power play and plays it quite beautifully down to deep cover point boundary for 4 runs. And again Ranjit from the far end, right arm over the wicket, slashes beautifully. This time protection is given in the deep, 2 protection in the deep in the offside region. That's only because the reason that the direction of the wind is really helping that stroke, especially in the offside region when you're batting in this particular end. One more single is added to total, and with that single, scoreboard now moves on to 5 on the board for Emphasis, and Abhishek's individual score is 5 on the board, and 5 is individual score. One more additional fielder they wanted to add in the offside region, but not interested. Captain once again sending that fielder into square leg in front of square. 2 fielders, one is in front of square, one is behind the square, one at short mid wicket, one at mid on, the mid off, deep extra cover, deep cover point. This time this time ball is hitting the stumps in the non-strikers end. The batter Ranjit Akshat hits the ball straight down the ground, ball hitting the stumps, and got an opportunity to complete the single. With that single, scoreboard moves on to 6 on the board without loss of any wicket. Even Akshat is off the mark with the single. Abhishek is back on strike, just looking around the field set. There is a fine leg inside the ring. There's no fielder in the deep in the onside region. The 2 protection has been given straight away in the offside region. Ranjit again from the far end, right arm over the wicket balls, going for the cut shot, beautifully bowled there by Ranjit, using his height very well and pitching the ball in a right spot and getting some initial movement of the delivery, which is just going away from the right hand batsman outside the run of stamp, and the batter going for the cut shot. Abhishek misses it completely. The wicketkeeper behind the stamp, the captain back to bowler. Ranjit seaming in from the far end, right arm over the wicket, slower one, change of pace, looks like his opportunity. The Sandy, the captain of the side, he's got really missed the golden opportunity of caught behind.
Absolutely, it's a healthy nick. Came from the bat of the batter Abhishek is going for the slash and got outside of the bat and the wicketkeeper behind the stump. Sandeep misses that one straightforward opportunity. And wait and see how Abhishek will going to capitalize that opportunity which is given by the wicketkeeper behind the stump. Rajit a little bit unlucky. Right arm over the wicket balls. Again across the line, wanted to swing that on the onside edge, and maybe the that fielding set encouraging the batter to go for that kind of cricketing stroke. And good bowling there for Ranjit. Good comeback after conceding a boundary in the first ball of the over. Then he bowled with 5 very tidy deliveries, tidy line and length. So first over completed after completion of over number first. Emphasis has got a steady start, 6 without loss of any wicket. Sandesh, the bowler who really got a very good tournament from the ball, will go into ball the second over of the innings of their opposition emphasis. And here he go, right arm over the wicket. This time slashes off the back with beautiful shot down to deep cow point region, running down to deep cow point. Fielder will going to cut it off, and in the middle, batter. No, ball which is stopped. Umpire signaled this a boundary. I think it's a ball which is stopped by the fielder. It's a no 4. It's no 4. Saved. Only couple of runs. Only couple of runs saved by the captain Sandy himself, just running back and saving the boundary here. And very good coordination there from the two fielders. One fielder stops the boundary, another fielder picks the ball and returns the ball. And just a couple of runs here for the batter. With that couple of runs, Coburn moves on to 8 on the board without loss of any wicket in the over number second is in progress. Sandesh again bowling right arm over the wicket. Bows drives that one down to mid on, and they're going for the kick single. I think as a non-striker wanted a single, but his partner is not interested, and rightly so. Akshat seeing that ball went straight to the hands of short mid on, so he is not interested for the run. Sandesh again bowling right arm over the wicket. Short pitch delivery, lofted that one with the direction of the wind, and he will going to get the first sixer of this semi-final. Absolutely, it's a punishable delivery. The kind of treatment which is required for that short pitch delivery. The batsman just waiting for the opportunity to freeze his arm. And Akshat once again is getting a start in the second over with the 6. And scoreboard jumps into 14 on the board. Sandesh again drives that one down to mid-wicket region, misfield by the fielder, but ball is still very near to that fielder, so that no question of any run there. And the batsman, of course, Akshat knows that this is the last over of the power play. He wanted to capitalize this last over of the power play.
So last time in this over, 15 on the board. A little bit misunderstanding between the wicket, costing some runs here. The overthrow comes into play to get that 15. Already 15 on the board. One run taken in the last ball of the over. In this over. So last time in this over, bowler Sandesh will go into ball right arm over the wicket. Abhishek is on strike. He got one deep square leg and deep long on. It's a whitish long on. The toe protection has been given in the deep. This second and last over of his power play. Abhishek facing Sandesh right arm over the wicket. This time try to reach that one outside the line of off stamp, and batters just following that ball, which is going further away outside the line of off stamp, and one more addition to total in the form of extra. In the second over, runs are coming very freely for Emphasis. Already 10 runs scored in that over with the help of 1-6 and some couple of wides in this over. Sandesh again bowling right arm over the wicket away from us. Again, going for the drive, got outside edge of the bat. Luckily, that ball didn't carry to the fielder, and they got a single in the relegation. He that single, one more over completed. After completion of over number 2, it's a 17 on the board. Emphasis really back very strongly with that second over with some runs. 11 runs came from that over of Sandeep. After completion of 2 overs, it's 17 without loss of any wicket. Emphasis and Infosys are two very good teams in Group B. So far, they played a very good game of cricket in this particular tournament. Emphasis, they defeated the Mangaluru Infotech Solution Private Limited in their first match, and in the second match, they played a fantastic game of cricket against Glow Touch Warriors, and they are through to the semi-final. As far as Infosys is concerned, in the first match, it's a very hard-fought victory in the first round against Mangalore Warriors, and then second match. And the second match, Codecraft, they defeated one more big team, Codecraft, the Strikers, in the quarter-final, and they qualify for the semi-final. This is the journey of both the teams because they really played a good game of cricket, so that both the teams deserve the place in the big final of this prestigious cricket tournament. For that, I think they needed some good performance from both the team. So far, it's an equal battle is on. Especially these two opening batters laid the foundation for Emphasis with some good-looking strokes. One boundary and 1-6 is already scored in this 2 overs. And over number 3 will go into start from the far end. Left-hand bowler Subramanya brought into attack. He will go into bowl over the wicket. First ball, short pitch one. The batsman going for the pull shot, missing it completely. Absolutely fantastic. Well-directed short pitch delivery there from bowler Subramanya. Seeing the batsman is just looking for the pull shot. He's just shortening the length quite deliberately for Abhishek. This time lofted at one, a ball which is not carried to the fielder, and a deep long off fielder tried his level best to take the catch, but unfortunately that ball is just landing in front of that fielder in the off volley collected by the fielder. Batsman has got an opportunity to complete the single. With that single, score numbers on to 18 on the board. This time Akshat drives it on right in the gap, down to deep square leg boundary for 4 runs. Now Akshat try to get some runs. He just frees his arm very well. Absolutely fantastic placement. It's not so easy to play the stroke against the direction of the wind. And they gave one protection in the deep mid-wicket region, but that mid-wicket fielder fails to reach to that ball, and ball just crossed over the boundary line for 4 runs. Welcome boundary in the over number 3rd for
Emphasis scoreboard moves on to 22 on the board in the over number 3 is in progress. Just like I mentioned, again bowler bowling from the far end, left arm. This time he lofted high up in there. Opportunity for the fielder in the mid wicket, and a huge wicket is back into pavilion. This is the result when you try to clear the boundary line against the direction of the wind. Need to pay the penalty for that. The wicket number first is back into pavilion of Infosys. It's a 22 for the loss of 1 wicket. So first wicket is back into pavilion. A huge wicket here for Subramania as the batsman looking for the mighty blow, but he played that one against the direction of the wind and just pays the penalty for that. And replacing Akshat, Praveen walking towards the middle. One more recognized batsman for the side of Emphasis, and wait and see and how well Praveen will go into get the partnership along with Abhishek wearing orange cap, and sometime the favorite color of the players. And here is Subramanya. Balls and full toss delivery, and Praveen wanted to play the reverse stroke in the negation but couldn't manage to get that from the middle of the bat. The overthrow comes into play, but the batter already Abhishek, who is 2 for long in the in the Tigers end, so that is not interested for that overthrow runs, and just a single is added to total. With that single, score moves on to 23 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 3 is in progress. Subramanya from the far end, left arm over the wicket, going for the big swing of the bat. Again, nicely bowled by Subramanian. Subramanian is so impressive throughout this tournament with this line and length. Of course, it's over number 3 completed. Please note, over number 3 completed. Subramania completed that completed that third over. Just a minute, umpire. We need to clarify here. Over completed. First ball dot, second ball single, third ball boundary, fourth ball wicket, fifth ball 1, and last ball which is the dotted delivery. Thank you. So 3 overs completed after completion of over number 3. It's a 23 on the board for the loss of 1 wicket. They're going just under 8 runs per over. And wait and see how Emphasis will going to get some runs in the remaining 3 overs. Not a bad run rate, as considering the fact that in 3 overs they got a very good run rate, but they lost the wicket of Akshat. So 3 overs completed. It's a 14 on the, for correction, 23 on the board, and over number 4 will go into continue. Sandesh will go into continue his second and last over of his quota. In the second over might be a little bit expensive. It's conceded 11 runs, but he's a kind of bowler who can be very handy after that power play. So that because he can keep fielders in the outside the circle, the 5 fielders they can keep after that power play, and already there is a 2 power play which is went in the favor of Emphasis, but after that Subramanya came in, bowled a very good over,
with the wicket taking over. Just a 6 runs conceded. Sandesh bowling 4th over. Right arm over the wicket. This time lofted at one, not enough power behind the stroke. At the same time, against the direction of the wind, that ball landed inside the circle. And before the fielder from the deep long off to run across his left to collect that one, ample time for the batter to complete the single. With that single, score moves on to 24 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 4 is in progress. That brings Abhishek into strike now after the loss of wicket Akshat. I think Abhishek is the one need to take the initiative of getting some acceleration for emphasis. A beautifully ball, perfect Yorker and delivery. I think it's very unlucky that bowler because if it is a leg before wicket, that might be the close one. And unfortunately, the bowler will not going to get the wicket here. But leg by call by umpire. Viraj, and with that leg by score numbers on to 25 on the board for the loss of 1 wicket. Outstanding delivery there from Sandesh, unplayable delivery which is came into the batter in a Yorker length, and the batter Abhishek is a little bit lucky here. He is still there in the middle, and now Praveen back on strike now. Praveen is one more very good striker of the ball, especially is a specialist of switch it, and he will go into face Sandesh, right arm over the wicket balls. This time a slash as it burn down to deep extra cover, and it was a wrong placement there from the batter, and he just pays the penalty for that. And the huge wicket now for Sandesh. The batter Praveen departs. Ranjit, the catcher, down at deep extra cover, making no mistake at all. Wicket is brought to you by Dinky Dine, the taste of relaxation, Kadri and Padil. So one more wicket is back into pavilion. The wickets are tumbling in this last 2 overs. Subramania after This picking up 1 wicket. wicket is brought to you by Dinky Dine, the taste of relaxation, Kadri and Padil. Sandesh This wicket is brought to you by Dinky Dine, the taste of relaxation, Kadri and Vinayak, new batter, just came into middle. Emphasis might be after getting some very good start, but might be they're just losing the momentum what they got in the first 2 overs because the wickets which are falling here. And Sandesh has got a huge wicket of Praveen caught at deep extra cover. Again, Sandesh right arm over the wicket. Full toss delivery outside the line of flag stamp, but white signal of umpire rightly so. But still, the batsman Vinayak wanted to swing that one. You know exactly it's going to be a very free hit delivery for him to hit the ball down to fine leg. But they missed it completely because of that wide outside the line of flag stamp. One more addition to total. 26 on the board for the loss of 3 wicket. Emphasis after 2 wickets, in fact, after losing a toss asked by the opposition to bat first. Sandesh away from us. Right arm over wicket, beautifully bowled, equally well played by the batter Vinayak down to mid wicket region. Protection is there in the deep, so that batter Vinayak have to settle for the single. He got his first run from the bat, and total score numbers on to 27 on the board. Very hard to combine the runs against a very tidy line and length ball by Sandesh so far. 5th time in this over, bowling away from us. Right arm over the wicket, he balls. This time lofted at one, going to be one more chance, and one more catch. A second wicket in this over for Sandesh. This time Abhishek is a settled batsman. He's back into pavilion. It's a 27 for the loss of a 3 wicket. This wicket is brought to you by Union Bank of India, good people to bank with, household name and partner in progress in Nammakudla. This wicket is brought to you by Union Bank of India, good people to bank with, household name and partner in progress in Nammakudla. This wicket is brought to you by Union Bank of India, good people to bank with, household name and partner in progress in Nammakudla.
So wicket number 3, which is back into pavilion, the huge wicket. Abhishek is the one, is a settled batsman in the middle, and just like I mentioned, after the loss of wicket of Akshat, Praveen, and uh, Abhishek, after loss of Akshat and Praveen, looks like Abhishek will going to take the initiative of getting some big total for his team, but unfortunately, he is also back into pavilion. Now that means the new batter is in the middle, and they need to rebuild the innings here for emphasis. Here is Sandesh, right arm over the wicket, balls, short pitch one, full that one, opportunity here for the fielder, but I couldn't manage to reach that catch. Of course, he's charging to that catch, but unfortunately, the ball is just falling short of that fielder. The batter survives. Good over completed there by Sandesh. After completion of over number 4, searching for the right track, but a little bit struggling emphasis after he got a very good start. It's a 28 for the loss of 3 wicket. Nippon Paint presents Red Premier League. All of you ಕೇಳಿರಿ RPL ಬಂತುರಿ. Players full ready ಇರ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಜರಿ. ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿರಿ. Red Premier League ಇದು ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿರಿ. 6-4 ರ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಿದೆ ಬೌಂಡರಿ. ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚಿಯರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆಡಿ 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 ನೀವು ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಆಡಿ. So Subramanian will going to continue the second over and last over of his quota. He's been so impressive in his first over. He's the one is responsible for the downfall of emphasis after he picked a wicket of Praveen, and then Sandesh picked up 2 valuable wickets in the previous over. So Krishna Raj as well as Vinayak are the 2 new batters out there in the middle. Wait and see how well these 2 new batters will going to rebuild the innings. But nothing much time to think and play. Only 2 overs remaining in their innings, and wait and see how well in these 2 overs these 2 batters will going to get some good score here for emphasis against Infosys, is the runner-up of the previous edition RPL season 2, and will they able to get the place in the final? Wait and see. Subramania left arm over the wicket off the back foot, nicely cuts that one down to deep cow point region for the single. The way that single scored Namuzan to 29 on the board, 29 for the loss of 3 wicket. Krishna Raj got his second run from the bat, and that brings Vinayak into strike now. Vinayak, one more recognized batter for the side of emphasis. The bowler Sandesh a little bit changing the field, asking that short-term midfielder come to little bit finer. Nicely driven, a good gap between cover point and extra cover. They're coming back for the second. In comes the throw from the deep. It's going to be a suicider. Absolutely suicider. There is no chance at all for the second run. But a partner asking him to take the second run. But unfortunately, he's back into pavilion. Brought to you by Nippon Paint, Asia's real #1 paint. This wicket is brought to you by Nippon Paint, Asia's real #1 paint. This wicket is brought to you by Nippon Paint, Asia's real #1 paint. So Krishna Raj, the batter, is back into pavilion. Unfortunately, they wanted to steal the second run against the very good throwing arm of that extra cover fielder, and the ball went straight to the hands of bowler, and that time the batter Krishna Raj well short of his crease, and the wicket number 4, which is back into pavilion. It's a 29 for the loss of 4 wicket. All in sudden emphasis are just losing the momentum what they really got in the first 2 overs. Subramania back to his bowling box, and the new batter in the middle, Abhilash, is in non-striker zone. Vinayak will be the striker. Subramania again went for the reverse sweep, not quite getting a hold of that improperly because the line of the delivery slight a bit outside the line of off stump. It's very difficult to play the reverse stroke when that kind of line, and that's quite deliberately bowler changing the line, seeing that batsman going for the premeditated switch it, and he managed to stop that stroke from Vinayak. One more addition anyhow, 30 on the board, 31 on the board for the loss of 4 wickets.
So one more delivery, which is right on the middle stump, and batsman, the new batter, played it back to bowler, not for run. So each and every dot ball will going to create the problem here for emphasis to get some good score here. Subramanya continues his very good spell in this particular match as well. And again, Subramanya, left arm balls again, went for the pull shot. That ball is not too far away from the captain of the side behind the stump, fields the ball. One more dotted delivery. So far it's a quiet over is in progress, and on behalf of Infosys, but emphasis really wanted some runs here. And the problem for the emphasis is that they lost front out batters back into pavilion. The batsman Abhishek, Akshat, the Praveen outside line of leg stump, and batsman just shouldering his arm, left the ball into the hands of wicketkeeper, rightly so. Wide call by umpire. 32 on the board, and the over number 5 is in progress. So last delivery of this over. Balls, nicely turns and one down to square leg region for a single. Easy single. So in single to finish the over number 5 then, and searching for the right track. It's a 33 on the board for the loss of 4 wicket. Emphasis batting fast. Nippon Paint presents Red Premier League. All of you Kelly RBL Banturi. Players who full ready, early Nimma Hajari. ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿರಿ. ರೆಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿರಿ. 64 ರ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಿದೆ ಬೌಂಡರಿ. ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚಿಯರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆಡಿ 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 ನೀವು ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಆಡಿ. ರೆಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್, ರೆಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್, ರೆಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್. ಬಾಗುರು ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ಜೊತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡು. Red Premier League presented by Nippon Paint, Asia's real #1 paint. Powered by Rohan Corporation. Now proudly presents Rohan City. Book your space at just ₹31,000. Log on to rohancorporation.in. Banking partner Union Bank of India, 5th largest public sector bank in the country with a legacy of 104 years. A household name and partner of progress in Nammakudla. Union Bank of India, good people to bank with. Refreshment partner Dinky Dine Restaurant, the taste of relaxation at Kadri and Padil. TV partner V4NEWS. Welcome back, and the last over remaining, and I request the fielding team to make it fast, just like we mentioned earlier. 28 minutes which is given for you to complete your 6 overs quota. The last over, and Sham has got a ball in his hand to complete that last over of the innings of Emphasis. Sham balls again, going for the full shot. Didn't got enough bat onto that, and just a single of the batters. One more addition of that single scored Mazan to 34 on the board for the loss of 4 wicket in the over number last is in progress. Last 5 deliveries remaining in the innings of Emphasis. One stage they're looking towards some score around 60 to 60 plus runs when they get going very well in the first 2 overs, but after the fall of wicket of Akshat and Praveen as well as Abhishek, and looks like it's now very hard to get at least 45 runs, which is they wanted to get, but last 5 deliveries remaining in their innings. Sham keeping one fielder in the deep long off, straight deep long off, one at long on deep mid wicket square leg and deep extra cover. This time wanted to drive that one on the offside region, got an inside edge of the bat, and wicketkeeper behind the stump did the rest. Excellent last over is in progress. 1 run in 2 deliveries. The batsman is on strike. Vinayak wanted to get one big shot in this over, 1 or 2 big shot which is badly required for Emphasis to get some respective total against team Infosys. Sham away from us, round the wicket, right arm. Full toss delivery, just like I mentioned, needed one big treatment in the final over, and Vinayak just taking the initiative of getting acceleration, dispatching that one down to deep mid-wicket boundary for a huge six. Auto Matrix. Experience excellence. An exclusive Tata Motors car showroom, Vijay, Mangaluru.
So Sham bowled. This Super Sixer is brought to you by Auto Matrix. Experience. Sham bowled that full toss delivery, and batsman capitalizing that one by dispatching that one to mid wicket for a U6. Next one going for the one more expansive drive, but ball landed very safely. Ball is in the air for a while, but but at the same time the batters completed a single in between with the single score. Namuzan to 41 on the board. Last two deliveries remaining in the innings, and the batsman Abhilash is back on strike. Abhilash, can he be able to get one more big shot here? After that, Vinayak has got one big shot in this over. Right arm down the wicket, he bowls. Full toss, lofted, but not really having that enough power. At the same time, the placement is not good enough to get any big shot. Just a single here for Abhilash, and Skobar Namuzan to 42 on the board. Last two deliveries remaining in their innings. Last delivery, the final delivery of their innings is coming up. Vinayak, can he able to finish off the things with a big one? Round the wicket, balls. This time, just like I mentioned, he finished the innings with the big one, the huge one. This is a biggie. The Vinayak one who finished the innings in a style. 2 sixes which just came from that last over. And they set a target of 48, which is a valuable runs. And they set a target of 49 to win the match for Infosys. Is going to be a fighting total on the board. At last, the last over, which is becomes a very productive over for Emphasis. That's only because of Vinayak. He got two valuable sixes in that over, so that they can feel now, if they bowl well, field well, they can be in the final of this prestigious cricket tournament. And wait and see how well the bowlers of Emphasis will go into restrict the opposition, the batter, the depending runner of this tournament. And we'll take a short break here, and after the short break, Gopi will go to take over the microphone. Now it's the time for the commercial break. Thank you.
धन्यवाद सतीश. So 49 the target for Infosys set by Emphasis batted first. They managed to score 48 runs on the board, and 49 Infosys have to score for victory to qualify for the grand finale of this competition, and their innings now going to start. So the first ball of their innings is now coming up. Sajjan and Sandeep the openers for Infosys. And Vignesh starts the fresh proceedings. The first ball of their innings is now coming up. पहली गेंद लेकर इस वक्त विघ्नेश तैयार. और ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा. रन से मिलेंगे एक, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है. रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. एक रन पिलाके से नुकसान के 14 रन अंतिम ओवर में बने एम्फेसिस की पारी में, और उस अंतिम ओवर की बदौलत जिसमें 14 रन बने, एम्फेसिस इस वक्त एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा कर चुका है. और जहाँ तक इन्फोसिस के रन 49 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, इस वक्त उन्हें चाहिए एक मजबूत शुरुआत. खासकर पावर प्ले का फायदा उन्हें इस वक्त उठाना होगा. और गेंदबाज इस वक्त विघ्नेश, गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को इस वक्त पुश कर दिया. और विकेट कीपर जब तक गेंद तक पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर. और 2 रन बिना किसी नुकसान के. एमसीएफ ने द्वितीय सेमीफाइनल मैच यानी अगले मैच में टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है क्वेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ. और इस बीच गेंदबाज तैयार दाहिना तो बढ़ता विकेट, यह गेंद बेहतरीन सदन के बल्ले से लगता भाई. जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एंड लफ्ट दैट वन इन स्टाइल ओवर वाइड लॉन्ग ऑन फेंस फॉर अ ह्यूज वन. और खासकर पावर प्ले का फायदा यहाँ पर उठाना होगा इन्फोसिस के बल्लेबाजों को अगर उन्हें लक्ष्य तक पहुंचना है. तो यहाँ पर सजन बिल्कुल सही बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हुए, और छक्का इस वक्त उनके और टीम के खाते में जुड़ता हुआ. इट्स 8 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट. और एक बार फिर से विघ्नेश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद एक बार फिर से ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा. फुलर लेंथ गेंद थी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में. रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर इस वक्त रुक चुका है 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर 9.80 रन प्रति ओवर के औसत से, माफ कीजिए 8.17 रन प्रति ओवर के औसत से उन्हें इस वक्त रन से बनाने हैं 6 ओवर में 49 रन. और गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर. स्ट्रेट अवे द बॉल मिसिंग 2 फॉर साथ ऑफ स्टंप एंड वाइड डिक्लेयर्ड बाय अंपायर. और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब कुल मिलाकर 9 रनों पर. आरपीएल रेड प्रीमियर लीग 2023 के अंतर्गत पहला सेमीफाइनल मैच, द फर्स्ट सेमीफाइनल मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर. और गेंदबाज इस वक्त अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, रक्षात्मक तरीके से गेंद को इस वक्त खेला सीधे मिड ऑन की दिशा में, और वहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया. रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. तो धीरे धीरे अपने सही लाइन को इस वक्त प्राप्त करते हुए गेंदबाज विघ्नेश गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैयार है. ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर चूके गेंद जाती हुई फाइनल की दिशा में. 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए नहीं मिलेगा. दूसरा रन सिर्फ एकमात्र रन उनके टीम के खाते में जुड़ता हुआ. इसको बैंड होता है द लास्ट मोमेंट. बल्ले से लग रहा है वो स्ट्रोक, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 10 रनों पर. पहला पावर प्ले ओवर समाप्त होने के बाद एक बेहतर शुरुआत यहाँ पर कर चुका है इन्फोसिस. 10 रन जोड़ चुका है बिना किसी नुकसान के. 10 without loss after first over scored by Infosys, chasing the victory target of 49 in 6 overs. So 38 more runs now they have to score for, in fact it's a 39 more runs now they have to score for victory in remaining 5 overs with a required run rate of exactly 7.80 runs per over. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो हमसे दूर वाले छोर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज अक्षत दूसरा पावर प्ले ओवर राउंड की पारी का यहाँ पर शुरू होता है. सामना इस वक्त करने के लिए तैयार सजन, जो कि अपने पहले ओवर में एक छक्का यहाँ पर झड़ चुके हैं, और अपनी ओवर की अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद गेंदबाज अक्षत गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार. ओवर की पहली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा. गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा अंपायर का,
और वाइड के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर बिना किसी नुकसान के 11 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। इनफैक्ट अक्षत इस वक्त केवल 2 मात्र फील्डर 20 गज के दायरे के बाहर तैनात और इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर को आगे बुला लिया गया है। मिड विकेट फील्डर को इस वक्त पीछे भेजा गया। ठीक सीमा रेखा के पास वाइडिश लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार फुल टॉस गेंद को पुल किया खूबसूरती के साथ डिलीकेटली प्लेड दिस टाइम। जैसे ही फील्डर को 20 गज के दायरे के अंदर तैनात किया गया बैकवर्ड थर्ड मैन से पॉइंट पर गेंद को इस वक्त पॉइंट फील्डर के सिर के ऊपर से खेल दिया डीप बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर। काफी चतुरता के साथ बल्लेबाज सजन ने और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर। बेहतरीन बल्लेबाजी इस वक्त अपनाते हुए सजन और इस चौके के साथ 15 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है बिना किसी नुकसान के। बेहतरीन चौका सजन के बल्ले से लगता हुआ। तो यहां पर अक्षत अपनी पहली गेंद पर चौका यहां पर प्रदान कर चुके हैं और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद हल्के से गेंद को मोड़ा। इस वक्त गेंद पहुंची शॉट स्क्वायर की दिशा में 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 16 रन बिना किसी नुकसान के। निस्संदेह जहां तक 49 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो इन्फोसिस को एक मजबूत शुरुआत यहां पर देनी होगी जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं और ये दोनों बल्लेबाज उस बात को जानते हुए अपने टीम को एक बेहतर शुरुआत देने की पूरी कोशिश करते हुए। जहां तक एम्फोसिस का सवाल है इस वक्त उन्हें चाहिए चंद कसे हुए ओवर्स और चंद विकेटें इस मैच में वापसी करने के लिए। ये गेंद ऑफ द टॉस गेंद को खेलना चाहता, गेंद गई ऑफ साइड पर पॉइंट की दिशा में और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 17 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 17 रन स्कोर येट टू लूज इन विकेट इन देयर फर्स्ट 9 डिलीवरीज ऑफ देयर इनिंग्स। और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा पॉइंट पर एक बार फिर से गेंद पहुंची। रन के लिए 2 कदम आगे जरूर बढ़ा है लेकिन इन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर रोकते हुए सुरक्षित। हालांकि स्ट्रोक्स में ज्यादा दम नहीं था और गेंद पॉइंट पर फील्ड कर ली गई। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला तो दोनों बल्लेबाज इस वक्त आपस में कुछ बातचीत करते हुए दूसरा ओवर उनकी पारी का चलता हुआ। 17 रन बन चुके हैं, 32 रन और बनाने हैं, 26 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में। और इस बीच अक्षत गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया। सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए फॉलो थ्रू में रनआउट का खतरा लेकिन निशाना इस वक्त चूक चुका है और आखिरकार 1 रन बल्लेबाज यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। अगर निशाना स्टंप्सों पर सही बैठता तो निस्संदेह यहां पर बल्लेबाज की पारी समाप्त हो सकती थी लेकिन निशाना चूका और इस बीच बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। 18 रन बन चुके हैं। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर जबकि इस ओवर में 1 गेंद अभी भी बाकी। अक्षत अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। संदीप ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर 19 विदाउट लॉस। अपने अगत्यता के अनुसार इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज इन्फोसिस के दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद हल्के से गेंद को पुश किया। इस वक्त सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रन। पहले ओवर में 10 रन बने, दूसरे ओवर में भी 10 रन बने। 2 ओवर के बाद इन्फोसिस लुकिंग इन अ गुड सिचुएशन। इन फैक्ट दे मैनेज्ड टू स्कोर 20 रन्स ऑन द बोर्ड yet to lose any wicket. ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿರಿ ರೆಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿರಿ 6-4 ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಿದೆ Paint powered by Rohan Corporation now proudly presents Rohan City. Book your space at just rupees 31,000. Log on to rohancorporation.in. Banking partner Union Bank of India, 5th largest public sector bank in the country with a legacy of 104 years. A household name and partner of progress in Prithviraj, the bowler is now brought into the attack. 29 to get now in remaining 24 deliveries. और दोनों बल्लेबाज इन्फोसिस के इस वक्त एक बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन देते हुए सजन और संदीप और इस जोड़ी को तोड़ना इस वक्त बेहद जरूरी बन चुका है एम्फोसिस के गेंदबाजों को इस वक्त। और उस कोशिश में इस जोड़ी को तोड़ने की कोशिश में इस वक्त गेंदबाजी पर लगाया गया है पृथ्वीराज को। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त या 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। फील्डर मैदान पर छा चुके हैं। इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल। लॉन्ग ऑन की दिशा में
एक रन इस बीच मिलेगा. स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 21 नाउ विद दैट सिंगल. थर्ड ओवर स्टार्टेड जस्ट शॉट वाले को इन द इनिंग्स और पृथ्वीराज एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्क पर आते हुए 28 टू गेट फ्रॉम 23 बॉल्स नाउ. और पृथ्वीराज एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा अपने बल्ले को हवे में उठाते हुए गेंद को जाने दिया सीधे विकेट कीपर के हाथों में. गेंद की लाइन को पहचानते हुए और आखिरकार एक रन उनके खाते में जुड़ता हुआ. एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर बिना किसी नुकसान के. पृथ्वीराज अगली गेंद लेकर तैयार. पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर. एक बार फिर से वाइड का इशारा. अपने सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तराशते हुए 2 लगातार वाइड यहाँ पर फेंक चुके हैं पृथ्वीराज और 2 रन एक्स्ट्रा अतिरिक्त के रूप में यहाँ पर प्रदान कर चुके हैं. और इस वक्त स्कोर बढ़कर इस एक रन के साथ बढ़ चुका है 23 रनों पर. 23 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट. और अगली गेंद, ये गेंद उछालना चाहा. बेहतर गेंद. दैट्स द लाइन ही हैज टू बॉल दिस सिचुएशन. गेंद कुछ टिप्पा खाने के बाद कुछ ज़्यादा उछाल नहीं ले रही थी और गेंद को उछालना चाहा था, लेकिन गेंद सीधे पहुंची बल्लेबाज को वंचित करने के बाद विकेट कीपर के हाथों में रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 23 रनों पर बिना किसी नुकसान के. एक बार फिर से वाइड का इशारा. ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर की ओर गेंद निकलती हुई और जहां तक रनों का सवाल है तो रन्स मिलेंगे 1. इट्स 24 विदाउट लॉस नाउ. Slowly and steadily, this opening partnership is now building up for Infosys. अगली गेंद, ये गेंद टॉप एज. मौका हो सकता है. फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को लपकने में सफल. सजन की पारी समाप्त और पहला विकेट खो चुका है यहाँ पर Infosys. It's 24 for 1. Automatrix, experience excellence, an exclusive Tata Motors car showroom, Vijay Mangaluru. This spectacular catch is brought to you by Automatrix, experience excellence, an exclusive Tata Motors car showroom, Vijay Mangaluru. This wicket is brought to you by Automatrix, experience excellence, an exclusive Tata Motors car showroom, Vijay Mangaluru. रेड एफएम 93.5 मस्त मजा माड़ी. आरपीएल रेड प्रीमियर लीग 2023 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत इस श्रृंखला का इस टूर्नामेंट के इस प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल मैच यहां पर खेला जाता हुआ इस रविवार के इस दोपहर में इन्फोसिस और एम्फोसिस के बीच में एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट V4 न्यूज़ 24/7 चैनल द्वारा इस वक्त किया जा रहा है श्रीमान मानिक इनके सारथ्य में. और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर हो चुका है. प्रनील नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद और पृथ्वीराज गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, जबकि सामना करने के लिए तैयार इस वक्त संदीप दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद इस बार टॉप एज. इस बार गेंद हवा में. बैकवर्ड को लेग फील्डर के गेंद के नीचे आते हैं लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए और जब तक गेंद को दोबारा बैकअप किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. गेंद टॉप एज पर टकराने के बाद काफी ऊंची उछली थी लेकिन अंतिम क्षण में जजमेंट नहीं कर पाए और गेंद उनके हाथों से छूटती हुई और बल्लेबाज 2 रन इस बीच प्राप्त करते हुए और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 26 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. पृथ्वीराज एक बार फिर से तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट संदीप के लिए. ये गेंद फुल टॉस पुल्ड आउट. दिस एंड अ बिग वन. And with this 6, now Infosys are now strongly back in the match. is brought to you by Decathlon, Mangalore's biggest sports store with over 70 plus sports and 6,000 plus products. Bharat Mall, Vijay Mangaluru. This Super Sixer is brought to you by Decathlon. 19 balls left, 17 runs more now they have to score for victory. The equation seems to be much easier now for Infosys with that 6. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट पृथ्वीराज की गेंद. यह गेंद एक बार फिर से गेंद को इस वक्त खेल दिया डीप मिड विकेट पर. गेंद जाती हुई वहां पर क्लीन कलेक्शन, नॉट मोर देन अ सिंगल. ही कीप्स द स्ट्राइक और स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 33 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. सो 4 overs completed. In fact, it's a 3 overs completed in their innings. After 3 overs, they are looking in a commanding situation. 33 runs scored by Infosys, chasing the victory target of 49 in 6 overs. And for losing 1 wicket, they managed to score 33 runs on the board after completion of 3 overs. 16 to get from 3 overs. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗುವ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ.
ಇದೆ ರೀಸನ್ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಹುಕ್ಕು 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 ಆಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸೌಂಡಿಗೆ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿ तो यहाँ पर प्रवीण गेंदबाजी शुरू करते हुए और इस बार गेंद को कट करना चाहा, पहले गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है। कुल मिलाकर अब 33 रनों पर 16 रन चाहिए, 17 गेंदें बाकी। गेंदबाज प्रवीण की ओर की अगली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा और वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलते हुए और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। इट्स 34 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 15 टू गेट नाउ फ्रॉम 17 बॉल्स। और एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए प्रवीण, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद उनके शरीर पर टकराए, अंतिम क्षण में रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, एक गेंद डॉट हो चुकी है इस वक्त और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 34 रनों पर, 16 गेंदें बाकी, 15 रन चाहिए। प्रवीण एक बार फिर से तैयार, ये गेंद कट किया इस वक्त, स्कूप किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट और गेंद सीमा रेखा से बाहर इस वक्त 6 रन। He just played that one with the wind and finds the gap as well. Down to a big deep back of the third man and he's got a maximum for that. is brought to you by Union Bank of India. Good people to bank with. Household name and partner in progress in Namma Kudla. So 40 for the loss of 1 wicket and they are looking in a good situation. Just 9 runs more, now they have to score for victory in remaining 15 balls. अगली गेंद के लिए तैयार, ये गेंद हल्के से गेंद को खेल दिया, सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर अपनाते हुए लंब ऑफ की दिशा में गेंद पहुंचे, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 41 for the loss of 1 wicket, they are slowly heading towards to their victory now. Infosys just 8 more runs, now they have to score for victory in remaining 14 deliveries. गेंदबाज की ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को खेलना चाहा, ऑन साइड पर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद ऑफ साइड पर गए, शॉर्ट कवर पर जब तक स्वयं गेंदबाज गेंद तक पहुंचे, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 42 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 42 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट और इस बीच गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद हल्के से पुश किया, इस वक्त रन के लिए दौड़ पड़े तेज तरीके से, विकेट कीपर गेंद तक पहुंचे, विकेटों पर निशाना दागा लेकिन निशाना चूकता हुआ 1 रन का इजाफा हो चुका। 43, 4 overs completed, 43 for the loss of 1 wicket. They are looking right on top. Infosys. रेड एफएम 93.5 की मधुर धुन यहाँ पर बजती हुई मस्त मजा माड़ी। आरपीएल रेड प्रीमियर लीग 2023 ये मेगा श्रृंखला यहाँ पर प्रगति पर और इन्फोसिस का तख्ता यहाँ पर भारी लगता हुआ। सिर्फ 6 मात्र रन चाहिए इस श्रृंखला के, इस टूर्नामेंट के, इस प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए इन्फोसिस को। और यहाँ तक सवाल है एम्फेसिस का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक घातक गेंदबाजी इस मैच में वापसी करने के लिए। तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए 5वां ओवर शुरू होता हुआ उनकी पारी में और कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाज 51 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंदबाज विघ्नेश इस वक्त नया ओवर प्रारंभ करते हुए, पहले ओवर में उन्होंने 10 रन प्रदान किए थे और अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार। ओवर की पहली गेंद, 5th ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स, पहली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार फुल टॉस, गेंद को ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ, मिड विकेट पर गेंद जाते हुए वहां पर गेंद को रोका गया बेहतर तरीके से फील्डर द्वारा और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। सीमा रेखा के अंदर अंतिम क्षण में गेंद को रोका था और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 45 रनों पर। 45 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट नाउ, 5th ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स और गेंदबाज इस वक्त तैयार विघ्नेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, लॉस्ट इट एंड ही फिनिश्ड दैट वन इन हिज टाइम विद एंड info defeating Emphasis by 9 wickets. Comprehensive victory for them and with that victory they are through to the grand finale of this competition. So the next match will be the second semi-final match of this tournament, will be played between MCF versus Quest Corporation Limited. So in this match MCF after won the toss, they elected to field first. One more good match is now coming up. Second semi-final of Red Premier League 2023 is now going to begin within a short while. Till then we are taking a short break और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने
उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर दूसरे सेमीफाइनल मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी. सेकंड सेमीफाइनल मैच विल गोइंग टू स्टार्ट एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. ऑल्सो इट्स टाइम फॉर डीजे. थैंक यू, धन्यवाद.
going to qualify for the final to face in the mega final of this prestigious Red Premier League 2023 Season 3. So now it's a big semi-final. Second semi-final will be played between MCF versus defending champion Quest Corporation Limited, and wait and see how well these two teams will go into battle for the place in the final. First ball nicely driven, that one just leaning into the drive towards a short cover point region for a single. The batsman Vijit is the one who scored 70 runs in just 20 deliveries. He's just opened the account with the single, and they open the account as well in the semi-final in the scoreboard. One without loss of any wicket. Ashwin brought into attack from the far end. First ball just a single. The second time is bowling from the far end. Right arm looks like he's bowling to Avinash. Avinash around the wicket. This time Avinash pulls that one down to deep backward square leg into the fence for a maximum. RPL sixer number first of the semi-final number second, which is came from the bat of Avinash. Automatrix, experience excellence, an exclusive Tata Motors car showroom, Vijay Mangaluru. This Super Sixer is The Super Six, which is came from the bat of Avinash, just standing tall and climbed out that one short pitch delivery and pulls that one down to deep backward square leg boundary for a six. And the very next delivery, which is far away outside the line of off 10. Batsman tried to reach the pitch of the delivery to cut that one, but missed it completely. But umpire not missing the opportunity to signal the wide and one more addition to total. 8 without loss of any wicket in the over number first in progress. It's again going for the run. Chance of run out in this non-strikers, and that is gone. Huge wicket. Absolutely huge wicket here for MCF. Why not? The celebration is won. 8 for the loss of 1 wicket. Vijay departs. Store with over 70 plus sports and 6,000 plus products. Bharat Mall, Vijay Mangaluru. This wicket is brought to you by Decathlon, Mangalore's biggest sports store with over 70 plus sports and 6,000 plus products. Bharat Mall, Vijay Mangaluru. So Vijay departs unnecessarily, wanted to steal the run against that closing fielder after the batsman Avinash played that one defensively down to short cover point region. Vijay, without seeing the ball, without seeing the fielder, he wanted to get the single, and it's too late for him to go back, and the throw which is came from the closing fielder is right on the bails, right over the bails of the wicket. Correction, the bowler complete the formalities of removing the bails, and huge wicket of Vijay is back into pavilion. Third, fourth time in this over, nicely driven again. This time the striker Avinash is in under pressure, but this time I think the batsman is safe. The closing fielding is outstanding of MCF. They know exactly they're playing against the defending champion. They need to pull the socks in this department, which is the fielding department. And so far they did a great job in this first over to send a danger batter. Vijay is back in the pavilion in the form of run out. Once again Avinash slightly looks like he's been a chance of getting out, but fortunately he's back quickly. Before the throw came from the fielder from the short cover point. A good piece of fielding there by the fielder. So good comeback here from Ashwin as well. After that he conceded 6 in the knee ball, 2 very good deliveries, 3 very good deliveries. Ashwin back to his bowling mark. Absolutely. So again it's a bright sunny afternoon. Time is exactly 3 past 50. And still the condition looks to be very hot, and more than the condition is very hot, but the level of competition between these two teams is going to be more hotter than the weather condition. And here is the two teams, the very good teams clashing here in the semi-final to get the place in the mega final. Already Infosys got a place in the final, waiting for the winner of this second semi-final. Ashwin balls. This time he lofted, and it's definitely one of the best stroke of the day. Fantastic hitting here from batsman Avinash. Dinky Dime,
The taste of relaxed Super Sixer is brought to you by Dinky Dine. Super Sixer is brought to you by Dinky Dine. Sweet sound coming from the bat of Avinash when he hit the ball. When the ball is left the bat of this man, it's absolutely everyone thought it might be a maximum, and he got the distance as well. Second sixer came from the bat of Avinash. Cuts that one. He wanted a single there, but his partner is not interested. Rightly so. Already one wicket is back into Pavilion in the form of run out. The equal start in the first over. After completion of first over, and team. Wes has got a good start from the bat, got a 14 valuable runs. At the same time, the opposition team MCF has got a huge wicket of Vijay, and wait and see how well these two batters will going to continue batting in the second over. So, first over completed. Just there when we mentioned about this particular over, which is equal opportunity and grabbed by the both the teams. The fielding team got one wicket. At the same time, the batting team already got 14 valuable runs in the first over of the power play. This time he lofted, handsome looking drive, handsome looking full shot down to deep backward square leg for a huge six. Super Sixer is brought to you by Union Bank of India. Good people to bank with. Household. This Super Sixer is brought to you by Union Bank of India. Good people to bank with. Household name and partner in progress. So intention is clear here from Sukesh. Even they lost the wicket, they know exactly they need to get the runs in the power play. One more powerful shock down to mid wicket for a continuous 2 sixes in a consecutive 2 deliveries, and that means Sukesh is on fire. 26 on the board. is brought to you by Nippon Paint. Asia's real #1 paint. Even the wicket of Vijay will not going to disturb the concentration of these two batters to as far as the acceleration of run rate is concerned. The Sujit is just joining the party very well. Outside the run of off stamp frustration. It's absolutely a frustration and feeling the pressure after that. 2 consecutive sixes. Sukesh wanted to get one more here. Can he able to get the hat-trick 6? Right arm over the wicket. Full toss. And he lofted. And he got the third sixer. Looks like, yes, he does. 3 consecutive sixes came from the bat of Sukesh. Rohan Corporation. Now proud. Super Sixer is brought to you by Rohan Corporation now proudly presents Rohan City. Book your space at just ₹31,000. Log on to rohancorporation.in. So after that explosive batting in the quarter-final of Vijay, then he is back into pavilion now. Sukesh taking that initiative of getting some acceleration in the second over of the power play. Hat-trick sixes which just came from that over. Of course, one which is bowled wide in the middle, that's third ball of the over. But the very next delivery, the batter hit a 6. Sujit balls. This time again going for the expansive drive. Wicketkeeper behind, some misses that one. Ball went towards a short man, third man division. Good change of line there by the bowler in the occasion. Seeing that you cannot bowl to the slot of the batter around his bat, he will definitely going to dispatch that one out of the ground. Again, nicely driven. Beautiful shot. No need to run for that. Ball just went like a tracer bullet down to deep long off boundary for 4 runs. Once again, runs are coming like a fast-flowing waters of the rivers. Automatrix. This Fantastic Four is brought to you by Automatrix. Experience excellence and exclusive. What a shot that from Sujit. No one moved at all, isn't it? Have a look at that stroke in the replay if you wanted to take in the replay in a V424 into 7 channel. This time going to be a chance here for the fielder with the wind. Oh my goodness. The fielder dropped the catch. Sukesh got the life. It's going to be a costly miss there by the fielder.
Can you believe this? Absolutely one more expensive over which is comes to an end. But what could be a successful over in this last delivery? Got opportunity to take the wicket, but fielder in the deep long off has got a misjudgment. Over number 2 which is completed after completion of over number 2. And looks like the team of Quest Corporation Limited, they wanted to get a huge total here, 39 for the loss of 1 wicket. ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿರಿ ರೆಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿರಿ 6-4 ರ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಿದೆ ಬೌಂಡರಿ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚಿಯರ್ ಮಾಡಿರಿ ಆಡಿ 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 ನೀವು ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಆಡಿ. So what an batting display from Sukesh. Absolutely very interesting to see that the batters of Quest Corporation Limited is not a one-man army, because each and every matches one batter taking initiative of getting some acceleration. In one match, Avinash scored 24 runs in 12 deliveries. Then the very next one, Satish is taking initiative of getting 24 runs in 5 deliveries. And in this particular semi-final, after dismissal of Vijay and Avinash, Sukesh taking initiative to so far, he scored 24 valuable runs in just 5 deliveries. 6 deliveries. So this is what call the teamwork. It's not a one-man army. What Quest Corporation Limited, definitely they got potential in that batting department, so that MCF have to bowl very well in remaining overs. This time we went for the big shot. Ball is in the air, but the fielder just a spectator watching the balls going over the deep mid-wicket boundary for one more 6. This Super Sixer is brought to you by Automatrix. This Super Sixer is brought to you by Automatrix. Experience excellence. This time Avinash joining the party. He's batting on 18, but all 18 runs which came from 3 sixes. Now this is a first run which came from a single, and he batting on 19 with the help of 3 sixes. And this shows the quality of the batters of Quest Corporation Limited, and they're justifying why they are the defending champion in this big semi-final. Ashwin from the far end. Right arm over the wicket. Nicely driven down to deep long off region for a easy single. With that single, Skobar Namozan to 47 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 3 is in progress. Ashwin, he bowled the first over in 14 runs he conceded. Now he's bowling his second over. Right arm round the wicket, bowls nicely driven by Avinash down to deep mid-wicket region for an easy single. With that single, Skobar Namuzan to 48 on the board. This is a line you need to bowl. The bowlers always, when the batsman looking towards a big shots, this is a better line to bowl, almost on the block hold, not really giving opportunity for the batter to freeze the arm. Sukesh is on strike. This time nicely turns that one. Straight to the answer field. A chance of run out in the striker's end, but wicketkeeper behind this time fails to collect the ball in first attempt. But after that second attempt, when he's just uprooted the base from the stumps, enough time for the batter to complete the single. Quick single, risky one. And Skobar Namozan to 49 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 3 is in progress. Ashwin, after conceding a 6 in the first ball, then he bowled very, very tidy line. The batters are dealing with the singles and remaining deliveries. The last ball of this over is coming up from the far end. Ashwin bowling from the wicket. Drives that nice looking drive there from the batter. Ashwin down to deep cow point region. Technical cricketing stroke. And one more single is added to total addition of that single. Skobar Namozan to 50. 50 comes off here for the defending champion Quest Corporation Limited. 50 for the loss of 1 wicket. मस्त मजा मारी. This is a competition. The batting competition is not between against the team, but it's a competition within their team. Seeing that the batting performance of the batters of team
Quest Corporation Limited, because each and every batters they just grabbing the opportunity when they got the opportunity to showcase their talent in the middle, and every batsman of Quest Corporation Limited that's grabbing the opportunity very well. But in this big semi-final, definitely the man Sukesh is the one is getting some runs. C1 along with him. Avinash is one. He's got opportunity to get some acceleration. 3 overs completed. 50 already on the board. Now another 3 overs remaining. And the projected score in the similar run rate, it's going to be 100. The projected score for the team of Quest Corporation Limited. So that very important here for the fielding team MCF have to put some break on the run rate. If you wanted to pick the break on the run rate, they need to pick the wickets. Round the wicket, first ball, nicely plays it down to short gully region for a easy single. With that single, scored moves on to 51 on the board. Avinash quickly realizing that in that end, it's I think better than Avinash. The right-hand batsman always going to be useful for to deal with some big shot. So he just did a great job by picking up the single, try to give strike for Sukesh. Right arm over the wicket, pulls that one. That's what I'm talking about. It's quite easy for the right-handed batsman dispatching the ball into the fence for a one more six. Super Sixer is brought to you by Dinky Dime, the taste of relaxation. Kadri and Padil. What a magnificent full shot there from Sukesh. Just as using the depthness of the crease very well. Just going back and transferring his weight onto the back foot and pulls that one beautifully down to deep fine leg region for a huge six. And with the six, score numbers on to 57 on the board. Sukesh is batting on 32. Again, the pressure straight away into the bowler Karthik after that six which is came from the bat of Sukesh. It's very difficult for the bowler when they're operating from this end with the direction of the wind. If they wanted to try to ball some in cutter, the off cutter, it's very difficult to control that line. If you pitch the ball in the middle stump, that will ball going to miss the leg stump too far. This time a lovely delivery, beautifully balled there by the bowler. This is the line you need to ball. So here is again bowler balls right arm and white call by umpire. One more addition to total. Addition of that single score moves on to 59 on the board. 59 and good score on the board. But here is the bowler struggling. Karthik he definitely wanted to get some good deliveries which is he wanted to ball. But again that was the second wide of this over. Again, Karthik saving away from us. Right arm over the wicket balls. This time again, the full toss delivery. The batsman missed it completely. But umpire not missing here. Rajeshwar to signal the wide. And one more addition to total in the form of extra. And scoreboard numbers on to 60 on the board for the loss of one wicket. '60 comes up in a very quick time. In just 3.3 deliveries, they got that 60 runs. 21 runs and the 60 runs scored. This time he loved it. This time the biggest sixer of this day number final of this cricket tournament. Super Sixer is brought to you by First Neuro Hospital. Super Sixer is brought to you by First Neuro Hospital. What a magnificent struck there from Sukesh. He's played one of the biggest sixer. As far as the dimension of this cricket ground is concerned, the mid wicket is suddenly is going to be the longest part of the ground, and he got the distance and too far away from the boundary line. Balled him, cleaned him up. Karthik at last he got a reward. And Sukesh, after making a lot of damages from his bat, is back into pavilion. is brought to you by Auto Matrix. Experience excellence. This wicket is brought to you by Auto Matrix. Experience excellence. And So that's it, Karthik's entertainment and explosive innings which is comes to an
And after before he's back into pavilion, he scored a 36 valuable runs in just 12 deliveries and at the strike rate of exactly 300. Absolutely unbelievable batting performance here from Sukesh. What his partner is left in the previous match, Vijit, and Sukesh just continuing that one in this semi-final. One ball remaining in that over. Umpire, please note, one ball remaining in that over. Three wides in that over. That means the bowler has to bowl 9 deliveries in that over. So already bowled only 8 deliveries. So one ball which is remaining in the innings in that particular over number 4 of Karthik. Ganesh is a new batter in. He's on strike now. It's a good number of spectators enjoying the game of cricket here in this most beautiful historical Dr. B.R. Ambedkar Cricket Stadium here in PANAMBUR. And a semi-final of this prestigious RPL is in progress. Last delivery of this over, Karthik bowling away from us. Right arm over the wicket to Ganesh. Ganesh this time cuts at one. But not really getting that much of enough timing in that stroke, enough placement, but he managed to get the single in the negation so that he retained the strike for the next over. Over number 4 completed after completion of over number 4. Quest Corporation Limited managed to get 67 by losing 2 wickets. Sujit brought into attack to bowl the 5th over of the innings of Quest Corporation Limited, and he will go into ball from the far end. First ball nicely driven down to deep long on region for a walkable single. With that single, Scoper moves on to 68 on the board for the loss of 2 wickets. Ganesh did a great job that picked up a single. Then you know exactly in this particular end, left-hand batsman certainly is useful to get some big shots, so that he picked up a single. And wait and see how well the batter Avinash will going to take the advantage of facing Sujit. Sujit bowling from the far end. Balls and very good delivery. Little bit misjudgment by Avinash. He thought it might be a wide, but well within the reach of the batter. Little bit outside the line of off stump. The wicket keeper behind the stump, standing very close to the stumps, gathers the ball back to bowler. Full toss, lofted at one, not quite enough for power behind the stroke, and a wonderful catch taken there by the mid-off fielder. Really good catch, the one-handed catch. Once it looks like the ball which is going away from the fielder, he just run back and he taken a single-handed blinder. Nippon Paint, This wicket is brought to you by Nippon Paint, Asia's real number. Nippon Paints, Asia's #1 paint. New batter Satish Yadav. So new batsman in is Satish is walking towards the middle. One more recognized batter for the side of team Quest Corporation Limited, and just we are talking about in the earlier matches, he's got quick fired 24 runs in the 5 balls. Now he just came into middle in this slog overs to get some acceleration for the Quest Corporation Limited. 68 already on the board, and the last 3 deliveries left in this over of bowler Sujit is operated from the far end. Bowling. This time went for the reverse stroke and didn't got enough bat onto that. Of course, he missed the bat completely. Leg by call by umpire. And one more addition to total. Addition of that single scorer numbers on to 69 for the loss of 3 wicket. Emphasis or relification of Quest Corporation Limited are looking in a commanding position
in this semi-final. This time again looking for the expansive reverse stroke. The batsman Ganesh almost sitting on his knees to try get that one into the final leg region, third man region. In fact, he wanted to get that one by playing a switch it, but missed it completely from the bat. Good piece of bowling there from Sujit in this particular over. One of the best overs so far. And again cuts that one nicely down to deep backward point region for a single. With that single, score numbers on to 70 on the board. A very good over there from Sujit. This is the first better over so far bowled by the bowlers of MCF. Only 2 runs came from that over of Sujit. The 3 runs came from that over. One which is in the form of leg bite, that is extra. But from the bat, only 2 runs he conceded. That means one of the best over which is bowled by Sujit. Now one more good over which is badly required here for MCF, because even though that is a very economical over, because of that they got some big runs in the 4 overs. So that nothing much worried about the run rate here for Quest Corporation Limited. They got already 70 on the board. And wait and see how well MCF will go to put some break in the last over of the innings of their opposition. Shravan is in operation to bowl that last over of the innings of their opposition team. Quest Corporation Limited, and wait and see how Ganesh and Satish will going to get the runs in the last over. But captain of MCF desperately wanted one more good over here. Left arm around the wicket, balls going for the big swing of the bat, missing it completely, but going for the single in the form of leg bye. With that leg bye, scored numbers on to 71 on the board for the loss of 3 wicket in the over number. Last is in progress. There is a long on, one at long off. There is a cow point, short third man. There is a short square leg, deep square leg, deep mid wicket. And here is one more good looking stroke, but not more than a single here. The batter of course wanted to get the big shot, but the bowler not settling the batter for the big shot so far. Shravan bowled a very tidy line, the kind of line which is required in the last over, as Shravan is doing that job. And now he's bowling to Ganesh. Shravan left arm balls again nicely bowled, almost just above the waist level of the batter with that fantastic line and length. The batsman going for the full shot, again missed it completely. Good comeback in the last 2 overs so far by the bowlers of MCF through Sujit and through Shravan in the last over. But a job which is not yet over in this last over. They need to restrict another remaining deliveries of this over. This time what we are talking about, a job which is not yet over, but job which is continues here by the batter here. And Ganesh just got a 6 in the right time. When this little bit acceleration which is required for the Quest Corporation Limited, he got a maximum, and scoreboard jumps into 78 on the board. First Neuro Hospital, Karnataka's This Super Sixer is brought to you by First Neuro Hospital, Karnataka's This time Ganesh a little bit shuffled across the line after delivery, swings that one down to mid wicket boundary for a 6. Again almost in the block hold of the batter, but still Ganesh driving the ball very hardly down to mid wicket region for a single. With that single, scored Muzant 79. Now this is going to be a last delivery of the innings of Quest Corporation Limited. Satish is on a strike, and bowler Shravan will go into ball that last delivery of the innings of Quest Corporation Limited. Left arm around the wicket, full toss delivery, lofted that one, and he got the distance because the wind really helping that stroke. And he finishes up the things very nicely with a 6, and scoreboard numbers on to 85 and set a target of 86 to win this match. is brought to you by Nippon Paint, Asia's real #1 paint. So 86, which is the total, 85, which is the total score of defending champion Quest Corporation Limited, and they set a target of 87 to win the match for MCF to qualify for 86 lead progression to qualify for the final of this prestigious Red Premier League 2023. And wait and see how MCF bat.
धन्यवाद सतीश. So the match starts and you target in front of MCF 86 runs they have to score for victory in the stipulated 6 overs. And far as the required run rate is concerned, exactly 14.34 runs per over they have to score for victory, and the innings now going to start. And first ball, Ashwin facing and now once again the bowler comes right arm over the wicket, और ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया अंतिम क्षण में गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गोपाल इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार दीपक का दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया खूबसूरती के साथ इनटू द कैप, पॉइंट पर गेंद पहुंची, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. तो निस्संदेह जहाँ तक 86 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, एमसीएफ के लिए इस वक्त चाहिए एक धमाकेदार बल्लेबाजी, एक्सप्लोसिव बैटिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और
यहाँ पर आरंभिक बल्लेबाज दीपक और अश्विन को इस वक्त एक आक्रामक बल्लेबाजी अपनानी है अपनी टीम को मंजिल तक पहुंचाने के लिए। रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, लेकिन गेंद पहुंचे इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में। विकेट कीपर ने थ्रो किया, लेकिन बल्लेबाज के पास रन लेने का मौका था एक। और जहां तक क्रेस्ट कॉर्पोरेशन का सवाल है, इस वक्त उनके पास न सिर्फ शक्तिशाली बल्लेबाजी बल्कि बेहतरीन गेंदबाजी का लाइनअप भी मौजूद है। और उस गेंदबाजी के लाइनअप के खिलाफ अगर बल्लेबाजी करनी है तो कुछ विशेष रणनीति के साथ बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करनी होगी। इस बार गेंद को उछाला, गेंद हवा में मिड ऑफ पर रहा और इसी के साथ पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है। Just wanted to heave that one, not quite mid leg it, and finally extra cover fielder made no mistake. First wicket gone, and now they are 3 for 1. is brought to you by Automatrix. Experience excellence. An exclusive Tata. Wicket is brought to you by. This wicket is brought to you by. Automatrix. This wicket is brought to you by. This wicket is brought to you by. Automatrix. Experience excellence. An exclusive Tata Motors car showroom, Vijay Mangaluru. तो पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है और दूसरा नंबर 3 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर पहुंचते हुए एमसीएफ की ओर से अर्जुन, और वो इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर कदम बढ़ाते हुए पहला ओवर उनकी पारी का प्रगति पर। गोपाल इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का जारी। चौके और छक्कों के इस वक्त सख्त दरकार एमसीएफ के बल्लेबाजों को। यह गेंद इस बार ऑन साइड पर उछाला और गेंद इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके या छक्के ही अब एमसीएफ को इस मैच में वापस ला सकते हैं। Brought to you by. Decathlon, Mangalore's biggest sports store with over 7. This Fantastic Four is brought to you by. This Fantastic Four is brought to you by. Decathlon, Mangalore's biggest sports store with over 70 plus sports and 6,000 plus products. Bharat Mall, Vijay Mangaluru. तो यहाँ पर आरपीएल का चौका लग चुका है। इस वक्त खूबसूरती के साथ गेंद को स्कूप किया था इस वक्त अर्जुन ने और 4 रन इस वक्त प्राप्त करने में सफल। पहले ओवर की समाप्ति 7 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट स्कोर्ड बाय एमसीएफ, जस्ट चेजिंग द ह्यूज टारगेट ऑफ 86 in 6 overs. Now they have to score 79 more runs for victory in remaining 5 overs, and the required run rate is now gone up to exactly 15.80 runs per over. और इस वक्त जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, सिर्फ चौके या छक्के ही अब उन्हें इस मैच में विजय दिला सकते हैं। तो गेंदबाज इस वक्त तैयार, प्रज्वल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए अश्विन, फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ और ओवर की पहली गेंद और दाहिने हाथ ओवर द विकेट पटके भी गेंद ऑन साइड पर, गेंद को उछाला। अश्विन के बल्ले से ये छक्का यहाँ पर लग चुका है। खूबसूरती के साथ गेंद को उछाला था 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 13 रनों पर। This Super Sixer is brought to you by. First Neuro Hospital, Karnataka. This Super Sixer is brought to you by. First Neuro Hospital, Karnataka's only private hospital dedicated to the treatment of neurological diseases. Padil, Mangaluru. तो निस्संदेह अगले 8-10 गेंदों में 5 या 6 छक्के अगर लगते हैं तो निस्संदेह इस मैच में वापस आ सकता है एमसीएफ। तो यहाँ पर एक छक्का जड़ चुके हैं। अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद अगेन द सेम ट्रीटमेंट, दिस टाइम even bigger, consecutive sixes for the batsman. Ashwin on fire now. Is brought to you by. Union Bank of India, good people to bank with. This Super Sixer is brought to you by. Union Bank of India, good people to bank with. Household name and partner in progress in Nammakudla. So it's 19 for the loss of 1 wicket. 2 छक्के लगातार झड़ चुके हैं। जैसा कि मैंने इस गेंद से पहले कहा था, अगले 8-10 गेंदों में 5-6 छक्के लगते हैं तो निस्संदेह इस मैच में एमसीएफ वापस आ सकता है। और यहाँ पर अश्विन 2 छक्के लगातार झड़ चुके हैं। अब देखना यह है कि इस ओवर में और कितने रन वो बना पाते हैं। दाहिना तो ओवर द विकेट इस वक्त प्रज्वल, स्ट्रेट अवे द बॉलर इज नाउ अंडर प्रेशर। इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अब अपने टीम के अन्य खिलाड़ी से कुछ बातचीत करने के बाद दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं। फुल टॉस, सिलेक्शन से बाहर, विकेट कीपर चुके हैं। गेंद जाती हुई फाइन लेग की दिशा में 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा इस बीच। और इस बीच वाइड का इशारा। 1+1 2 रन्स नाउ added to their total and the bowler now feeling the pressure.
Ball 2 for Saad, the leg stump and conceded couple of runs in the face of wide और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर, जबकि सिर्फ दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। प्रज्वल एक बार फिर से तैयार गेंदबाजी करते हुए, इस बार अर्जुन के लिए ये गेंद, इस बार अर्जुन ने गेंद को उछालना चाहा, गेंद कुछ हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए टिप्पा खाने के बाद कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 21 रनों पर। 21 द स्कोर स्टेज फॉर लूजिंग 1 विकेट। और प्रज्वल फिर से एक बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद, इस बार बॉल्ड आउट, बॉल्ड दिस टाइम, द बॉल स्टक टू हिज टॉप ऑफ द स्टंप्स एंड bells are disturbed. One more wicket fallen, second wicket lost, and now they are looking in trouble. MCF 21 for 2. This wicket is brought to you by Rohan Corporation now proudly presents Rohan City. Wicket is brought to you by Rohan Corporation now proudly presents Rohan City. Book your space at just rupees 31,000. Log on to rohancorporation.in. So 21 for the loss of 2 विकेट। और कुछ हद तक रन की गति में एक्सेलरेशन जरूर आया था, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से अर्जुन का विकेट गिर जाने के बाद दबाव स्ट्रेट अवे इस वक्त एमसीएफ के ऊपर गिर चुका है। और नए बल्लेबाज इस वक्त नंबर 4 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए एमसीएफ की ओर से सुजीत इस वक्त, और वो इस वक्त स्ट्राइक रेट की ओर बढ़ते हुए प्रज्वल का सामना करने के लिए तैयार। हालांकि प्रज्वल ने पहले 2 गेंदों में 2 छक्का जरूर दिया था, लेकिन उसके बाद एक वाइड फेंकी उन्होंने और कम बैक करते हुए अगली ही गेंद पर ही जस्ट गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन कॉल्ड अर्जुन, उनका विकेट प्राप्त करने में सफल। और इस बीच तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर नए बल्लेबाज सुजीत इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद फुल टॉस, लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, और वाइड की रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 22 रनों पर। सिर्फ ब्लाइंड स्ट्रोक्स इस वक्त खेलने हैं जहां तक सवाल है बल्लेबाजों का एमसीएफ का, क्योंकि लक्ष्य काफी लंबा और काफी दूर का फासला उन्हें इस वक्त तय करना है रनों में। और इस बीच गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ये गेंद इस बार फुल टॉस, पुल किया इस वक्त मिड विकेट पर 4 रनों के लिए। The ball went into the gap at the last moment. He's got a boundary for that. This Fantastic Four is brought to you by Dinky Dime. The taste. This Fantastic Four is brought to you by Dinky Dime. The taste of relaxation. Kadri and Padil. So absolutely fantastic, sir. Full toss. He just got that one and dispatched it in a style over deep in wicket fence for for 4 runs. And with that boundary, the scoreboard moving up to 26 for the loss of 2 wicket. गेंदबाज प्रज्वल काफी महंगे इस ओवर में साबित हो चुके हैं। Full toss, pulled up. The score, 25 runs scored in this over, and because of this over, MCF are now strongly back in the match. brought to you by Auto Matrix. Experience excellence. An exclusive Tata Motors car showroom. Super Sixer is brought to you by Auto Matrix. Experience excellence. An exclusive Tata Motors car showroom. Vijay Mangaluru. So 86 minus 32, that means 54 more runs now they have to score for victory in remaining 24 deliveries, 24 ball, 54 runs, and required run rate exactly 13.5 runs per over at this situation. So it's difficult but not impossible. If they batted bravely, it would have been a possible for them. और देखते हैं इससे जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, सिर्फ छक्के या चौके ही इस वक्त एमसीएफ का नक्शा यहाँ पर बदल सकते हैं। और यहाँ पर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज द थर्ड ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स फ्रॉम दैट साइड एंड Prashant, the bowler is now brought into the attack. 54 required in remaining 24 deliveries. और अगले 1 या 2 ओवर में कम से कम 30 से 40 रन बनते हैं तो यहाँ पर इस मैच में वापस आ सकता है एमसीएफ। लेकिन इन 30 से 40 रन बनाने के लिए इस वक्त बल्लेबाजों को एमसीएफ की कड़ी मेहनत मुशक्कत यहाँ पर करनी होगी। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश कहा करते हैं, क्रिकेट इज ए गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। क्रिकेट में ऐसा कुछ कहना मुश्किल है जब तक आखिरी गेंद फेंकी जाए। और यहाँ पर देखते हैं अनसर्टेनिटी किस तरह से होती है आने वाले गेंदों में और किस तरह यहाँ पर वापसी करता है इस वक्त एमसीएफ। तो यहाँ पर स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए अश्विन,
और जो कि मैदान पर हवा मैदान के बाईं से दाईं और इस वक्त गुजर रही है। अगर बाएं हाथ का बल्लेबाज इस छोर पर होता तो निस्संदेह कुछ हद तक इस हवे का लाभ उठा सकता था। अगर स्ट्रोक्स ऑन साइड में खेलते तो निस्संदेह छक्का उनके पक्ष में आ सकता था, लेकिन दाहिने हाथ के बल्लेबाज जरूर है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं किस तरीके के स्ट्रोक को खेलते हैं। रिवर्स शॉट खेलना चाहा हवे के रुख को देखते हुए, लेकिन यहाँ पर गेंद हवे में पहुंची लॉन्ग ऑन पर। He just wanted to play that one too squarely at the last moment, but the ball came quite straightly at long off area. In fact, he's got a single for that. और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 33 रनों पर, 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रारंभ हो चुका है। 23 balls left, 53 runs more. Now they have to score for victory. Still the batsmen of MCF are now fighting back. और प्रशांत इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार उछाला लॉन्ग ऑफ पर, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। सुजीत की पारी समाप्त। यूजिंग हिज फीट ही लॉफ्टेड दैट वन बट कांट क्लियर द इनफील्ड। Brought to you by Decathlon, Mangalore's big this wicket is brought to you by Decathlon, Mangalore's biggest sports store with over 70 plus sports and 6,000 plus products. Bharat Mall, Bichai, Mangaluru. So long off, in fact it's a mid outfielder took the catch just inside the 20-yard circle, and Sujit departs and one more wicket fallen in the critical circumstances of the match for MCF, and now they are looking once again in trouble. It's 33 for 3. तो नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ, और प्रशांत इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। केशव जो कि नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद, दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद हल्के से गेंद को पुश किया। सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर अपनाते हुए और स्ट्राइक रोटेट इस वक्त करने में सफल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। द्वितीय सेमीफाइनल मैच रेड एफएम 93.5 मस्त मजा माड़ी आरपीएल रेड प्रीमियर लीग 2023 के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ, और निस्संदेह यहाँ पर इस अगली गेंद इस बार दिस टाइम ही हिट दैट वन टू बिग गोल। is brought to you by Dinky Time, the taste of relaxation. Kadri and Padil. this super sixer is brought to you by Dinky Time, the taste of relaxation. Kadri and Padil. So 6 number 3 came from the bat of अश्विन, और इस वक्त अश्विन एक उम्मीद की किरण इस वक्त दिखाई देते हुए एमसीएफ के लिए, और इस बीच अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज किया गेंद, एक बार फिर से गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहा, स्विच हिट खेलना चाहा, लेकिन इस बार खेल नहीं पाए, और गेंद लगभग उनके पैर पर टकराने के बाद वहीं पर गिर गए। विकेट कीपर आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड करते हुए, और स्कोर है इस वक्त 40 रन। रन्स बनाने हैं 86, यानी 86 से 40 अगर घटा दिया जाए तो 46 रन और बनाने हैं विजय के लिए। और कुल मिलाकर 19 गेंदें अब बाकी, 41 रन बन चुके हैं, 45 रन चाहिए और विजय के लिए। यह गेंद इस बार गेंद को उछालना चाह चुके हैं। ओवर की समाप्ति, 3 overs completed, half the way mark, and after 3 overs they are 41 in fact. 40 in fact, 40 for the loss of 3 wicket after completion of 3 overs, and 46 to get now in remaining 3 overs with a required run rate of exactly 15.34 runs per over. Red Premier League presented by Nippon Paint, Asia's real #1 paint, powered by Rohan Corporation. Now proudly presents Rohan City. Book your space at just rupees 31,000. Log on to rohancorporation.in. Banking partner Union Bank of India, 5th largest public sector bank in the country with a legacy of 104 years. A household name and partner of progress in Namakudla. Union Bank of India, good people to bank with. Refreshment partner Dinky Dine Restaurant, the taste of relaxing. Red Premier League, Baguru, Red FM jode cricket aado. Red Premier League presented by. So Gopal starts the fresh proceedings from the commentator box, and over की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। 46 to get in remaining 18 balls. That means in 3 overs exactly 15.34, 15.33.33 in exact calculation, the required run rate for them. और इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गोपाल, जबकि दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। तो दूर की उम्मीद इस वक्त, तो इस बीच गेंदबाज गोपाल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, और
पहली गेंद लेकर तैयार था, तो ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, बाउल्ड ऑफ हिज लेग्स, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। केशव की पारी समाप्त, अश्विन नॉन स्ट्राइक रन पर बरकरार। और देखते हैं यहाँ पर आने वाले बल्लेबाज किस तरीके की बल्लेबाज यहाँ पर अपनाते हैं, क्या वो स्ट्राइक रोटेट करते हैं या फिर करारे स्ट्रोक्स खेलते हैं। Nippon Paint. This wicket is brought to you by Nippon Paint. Asia's real #1 paint. तो जहां तक सवाल है इस वक्त एमसीएफ का, तो अश्विन को इस वक्त ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक का मिलना जरूरी बन चुका है, क्योंकि अश्विन इस वक्त वेल सेट बल्लेबाज है और आने वाले नए बल्लेबाज को इस वक्त निस्संदेह स्ट्राइक रोटेट यहां पर करना होगा। तो यहां पर देखते हैं बल्लेबाज किस तरीके की बल्लेबाज यहां पर अपनाते हैं। नए बल्लेबाज नंबर 6 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल फॉर एमसीएफ। गणेश इस वक्त क्रीज पर उतरते हुए, और देखते हैं यहाँ पर गणेश किस तरीके की बल्लेबाज यहाँ पर करते हैं। तो संघर्ष अभी भी बरकरार रखता हुआ एमसीएफ काफ़ी मंजिल जो कि काफ़ी दूर नजर आती हुई, तट काफ़ी दूर नजर आता हुआ। देखना यह है कि यहाँ पर एमसीएफ की पारी की नैया सही तट तक पहुँच पाती या नहीं। इस बार जहाँ तक सही तट तक पहुंचने का सवाल है, इस वक्त उनकी सारी उम्मीदें, सारी आशाएं इस वक्त नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज अश्विन के ऊपर बरकरार है, और अश्विन को इस वक्त स्ट्राइक मिलना जरूरी बन चुका है। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेला जा, ड्रैग डाउन टू द स्टंप्स एट द लास्ट मोमेंट, स्टंप्स पर गेंद को खेल लिया था। एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी और इस गेंद की तेजी को समझ नहीं पाए और गेंद सीधे स्टंप्स पर खींच लिया गेंद को। वन मोर विकेट फॉलन। this wicket is brought to you by Rohan Corporation now proudly presents Rohan. this wicket is brought to you by Rohan Corporation now proudly presents Rohan City. Book your space at just ₹31,000. Log on to rohancorporation.in. ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮನಸ್ಸೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗುವ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿ। तो निस्संदेह रेड एफएम 93.5 की मधुर धुन हमारे कानों को इस वक्त ठंडक पहुंचाते हुए, और जहां तक सवाल है इस मैच का, तो यहां पर संघर्ष इस वक्त जारी है। ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया, स्टंप्स को कवर करने के बाद शॉर्ट कवर पर बेहतरीन तरीके से क्लेवर थिंकिंग स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्ट्राइक इस वक्त दे चुके हैं अश्विन का। और देखना यह है कि ऐसा कहना पड़ेगा एमसीएफ की आखिरी उम्मीद, द लास्ट होप ऑफ एमसीएफ, अश्विन इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। और देखते हैं यहाँ पर अश्विन अपने टीम को मंजिल तक पहुंचा पाते हैं या नहीं। 45 रन चाहिए, 16 गेंदे 15 गेंदे बाकी, 15 बॉल्स लेफ्ट, 45 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। ये गेंद इस बार फुल टॉस, फुल किया लेकिन फील्डर is brought to you by Union Bank of India. Good people to bank with. Household. wicket is brought to you by Union Bank of India. Good people to bank with. Household name and partner in progress in Namakudla. सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछाला था, लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था और स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके। और डीप मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे, एक बेहतर जजमेंट के साथ सीमा रेखा के अंदर इस कैच को लपका, और इस विकेट के पतन के साथ अब एमसीएफ की उम्मीद की विजय की उम्मीदें काफी हद तक कम हो चुकी हैं। तो सिर्फ रन अभी भी उतना ही चाहिए, 45, जबकि गेंदें बाकी है सिर्फ 14। So 3 wicket took by गोपाल in this over, और बेहतर ओवर अंडर प्रेशर इस वक्त वो गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट पहले 4 गेंदों में वो प्राप्त कर चुके हैं। और इस बीच बाएं हाथ के बल्लेबाज लेफ्टी बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार गोपाल की गेंदों का। और गोपाल इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, 14 गेंदे 45 रन चाहिए। और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करने के बाद डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप बैकवर्ड थर्ड मैन इस वक्त ना ठीक सीमा रेखा के पास 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। शॉर्ट थर्ड मैन, मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट और स्क्वायर लेग, इस बार मिड ऑन और मिड विकेट। इस बार गेंद को हल्के से पुश कर दिया, गेंद पहुंच एक्स्ट्रा कवर पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 42 रनों पर। इट्स 42 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स।
So what a fantastic tournament in the name of RPL, Red Premier League 2023 is now progressing here. और निस्संदेह इस श्रृंखला की शानदार प्रस्तुति की है निप्पॉन पेंट्स इंस्पायर्ड बाय यू। और ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करती हुई पावर्ड बाय रोहन कॉर्पोरेशन। और इस श्रृंखला का क्लाइमैक्स यहाँ पर गुजरता हुआ सिर्फ फाइनल मैच इस मैच के बाद खेला जाना बाकी है। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, नॉट क्वाइट मिडल विकेट, इन फैक्ट ही गेट्स इन अ सिंगल and they are satisfied with it. 43 and 4 overs, in fact it's 4 overs completed, 12 balls left and 43 more runs now they have to score for victory. Exactly 21.5 runs per over required run rate for them. So what a fantastic over came to an end from Gopal. He captured 3 wickets in that over and conceded just 3 runs, and because of this over ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त टेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस वक्त इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज इस वक्त तैयार। गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए क्वेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस वक्त बुलंदियों पर नजर आता हुआ। ये गेंद हल्के से पुश किया, बैकफुट पर जाने के बाद गेंद पहुंची शॉर्ट कवर पर। जब तक गेंद को वहां पर फीड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 44 रनों पर। 44 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। 4 विकेटें गोपाल अब तक प्राप्त कर चुके हैं। सबसे सफल गेंदबाज इस वक्त क्वेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से और गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं अविनाश। 11 गेंदें बाकी हैं, 42 रन चाहिए। 42 रन टू गेट फ्रॉम 11 बॉल्स नाउ। और बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद, हर गेंद के साथ फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए कप्तान क्वेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के और गेंदबाज अविनाश। गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस वक्त तैयार। ये गेंद पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग गेट। इस बार बल्ले के टॉप पिच पर गेंद टकराई लेकिन खाली क्षेत्र पर गेंद टिप्पा खाते हुए जब तक विकेट कीपर गेंद तक पहुंचे बल्लेबाज के पास समय था कि 1 रन के साथ अपने एंड को बदल सके और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 45 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। इट्स 45 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। सेकंड सेमीफाइनल मैच ऑफ रेड प्रीमियर लीग आरपीएल 2023 इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर फैंटास्टिकली। और जहां तक सवाल है यहाँ पर अगली गेंद का, तो ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया, गेंद जाती हुई शॉर्ट कवर पर और निशाना इस वक्त टकरा चुका है लेकिन मैं कहूँगा यकीन के साथ कहूँगा बल्लेबाज पहुंच चुके हैं यहाँ पर और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 46 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 9 बॉल्स लेफ्ट, एग्जैक्टली 40 रन रिक्वायर्ड। और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और अंपायर ने यहाँ पर कुछ रोका, कुछ कचरा, शायद बेल्स वहाँ पर गिर चुका था। हवे का रुख जो कि काफ़ी तेज़ इस वक्त, हवे की रफ्तार काफ़ी तेज है तो इस वजह से बेल्स वहाँ पर गिर चुका था। उस बेल्स को इस वक्त स्टम्प्सों के ऊपर रखने के बाद एक बार फिर से अगली गेंद टॉप एज, मौका इस वक्त विकेट कीपर के लिए और एक और विकेट गिर चुका है। 7th विकेट डाउन एंड नाउ दे आर 46 फॉर 7। Automatrix. Experience excellence. This wicket is brought to you by Automatrix. Experience excellence. An exclusive Tata Motors car showroom, Vijay Mangaluru. So 40 required in just 80 deliveries.
And number 9 batsman is now comes out to the middle. विनय इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में सामना करने के लिए तैयार. अविनाश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार कट किया. इस वक्त बैकफुट पर जाने के बाद पंजों पर उछलते हुए डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर जब तक गेंद फील्ड हो. 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 47 रनों पर. 47 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स. नाउ स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर. And still in overall calculation, it's going to be 7 balls remaining in the innings. Last chance in front of the batsmen now. 7 sixes almost required in the remaining last 7 deliveries. Leg stump se bahar wide. And now scoreboard moving up to 48. 38 required in remaining last 7 balls. Almost 7 sixes or 6 sixes and a boundary. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा. नॉट क्वाइट मिड विकेट. 1 रन मिलेगा. Scoreboard moving up to 49 now for the loss of 7 wicket with that single run. And 5 overs completed. 49 for 7. Last over remaining in the innings. 37 to get. 6 sixes required in the last over. Not for victory but for tie. Now proudly presents Rohan City. Book your space at just rupees 31,000. Log on to rohancorporation.in. Banking partner Union Bank of India, 5th largest public sector bank in the country with a legacy of 104 years. A household name and partner of progress in Nammakudla. Union Bank of India, good people to bank with. Refreshment partner Dinky Dine Restaurant, the taste of relaxation at Kadri and Padil. TV partner V4NEWS. So Prajwal starting the last over of the match and 37 required in the last over. और 6 छक्कों की जरूरत इस वक्त मैच को टाई करने के लिए अंतिम ओवर में. प्रज्वल पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहा. यह गेंद 6 नंबर 1 और अब 5 छक्के चाहिए 5 गेंदों में. अगर अगले 2 गेंदों में नो बॉल एंड 6, in fact 7 runs added and 30 required now. And now 6 balls remaining, 5 sixes required. 5 छक्कों की दरकार बचे हुए 6 गेंदों में. So the match is now still alive and 5 sixes required in the last 6 deliveries. Here we go. The bowler bowls right arm over the wicket. This time driven that one, not quite mid wicket. In fact, he gets on a single, looking for the second, but won't get it. Still a chance alive. 5 sixes still needed in remaining 5 balls. The last chance in front of the batsmen of MCF now. अंतिम अवकाश उनके सामने और गेंदबाज इस वक्त तैयार. कट्स मिसेस, दैट्स इट. और यहाँ पर क्वेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की विजय निश्चित है अगर बचे हुए 4 गेंदों में गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंके तो. और 4 गेंदों में अब चाहिए 29 रन. 29 टू गेट इन रिमेनिंग 4 डिलीवरीज और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार. लॉफ्ट इट, नॉट क्वाइट इनफ, जस्ट अ सिंगल. 58. 3 balls left. 28 runs required. और गेंदबाज प्रज्वल गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. Left it, 6 runs into the fence, gone many a miles from the fence. 64 now. The scoreboard moving up to 2 balls now remaining and 22 required in remaining 2 deliveries. Mangalore's biggest sports store. Super Sixer is brought to you by Decathlon, Mangalore's biggest sports store with over 70 plus sports and 6,000 plus products. Bharat Mall, Bichai, Mangaluru. So second last ball of the match is now coming up.
प्रज्वल गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। 22 रन चाहिए 2 गेंदों में। शफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर इस वक्त उछाला, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, जस्ट अ सिंगल ही गॉट। 65 नाउ, 21 required of last ball. Absolutely impossible task in front of the batsmen of MCF. The last ball of the match is now coming up. Cuts perfectly, and the ball running down to a cover point fence for 4, but that is not enough for them. 69, and they lost the match by 16 runs. Well fight back made by the batsmen of MCF, and they lost the match by 16 runs. 16 runs comprehensive victory for Quest Corporation Limited, and with that 16 runs victory, they are through to the grand finale of this competition. And now, the grand finale of this tournament of Red FM Red Premier League 2023 is now going to play between Quest Corporation Limited versus Infosys. The grand finale, mega final of Red Premier League RPL 2023 is now going to start within a short while between Quest Corporation Limited versus Infosys, the mega final of this tournament, and we'll be back right after the short break. एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर इस
2 सालों में वो फाइनलिस्ट रहे थे और क्वेस्ट
कॉर्प लिमिटेड का सवाल है। तो यहाँ पर पिछले साल के विजेता टीम थे, तो यहाँ पर हम उम्मीद अपेक्षा कर सकते हैं कि एक बेहतरीन कॉन्टेस्ट, एक बेहतरीन मुकाबला हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और निस्संदेह यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इस आरपीएल रेड प्रीमियर लीग 2023 का चैंपियन यहाँ पर कौन होगा, कौन इस खिताब का हकदार होगा, तो इसका जवाब अगले 1 या 1.5 घंटे में हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि विजय किसकी भी हो, लेकिन एक बेहतरीन क्रिकेट हमें यहाँ पर इस रेड प्रीमियर लीग 2023 मेगा फाइनल ग्रैंड फिनाले के मुकाबले, ग्रैंड फिनाले के अंतर्गत हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा एक बेहतरीन मुकाबला। तो यहाँ पर दोनों टीमें संतुलित टीमें हैं, दोनों के पास सशक्त बल्लेबाजी और गेंदबाजी का लाइनअप है, और हम उम्मीद अपेक्षा कर सकते हैं कि एक कांटे का टक्कर होगा इस ग्रैंड फिनाले मैच में। Absolutely, Gopi. The both the teams definitely will going to battle hard for the prestigious RPL season 3 in this mega final. And after winning the toss, captain of team Quest Corp Limited, they elected to field first, so that opening batters of their opposition, Vijay and Avinash, little correction, after winning the toss, Quest elected to bat first, so that opening batters came into bat, and first ball itself, the batter Vijay has got his first run. With that first run there off the mark, and one without loss of any wicket. I think these two batters are going to be very key for the team Quest Corp Limited to get some big score, just like what they did in the previous match, just like what they did in the quarter-final match, that they wanted to continue the same batting performance in the mega final. And if they wanted to, if Infosys wanted to put some break on the run rate of so far what the team Quest Corp has got, they need to pick some wicket in each and every over. Next one, Ranjit balls beautifully balled, right on the money, right on the target, posing the batsman Avinash onto the back foot, and is plays it down to short mid-off region, not for run, and the run which is stationed at 1 without loss of any wicket in the over number first is in progress. Ranjit again bowling from the far end, and seaming in from the far end, one of the most recognized bowler for the side of Infosys. This time full toss delivery, he lofted that one down to deep, backwards square leg for a huge 6. You can't do the mistake here by bowling that full toss delivery. It is little margin for error, and Avinash is a left-hand batsman with the direction of the wind. We are just talking about why the captain of Quest Corp Limited elected to bat past. This is one of the big reason here, that the direction of the wind definitely is supporting the batters, especially in this direction. The left-hand batsman will go to get the advantages. 7 on the board. Again, short pitch outside the run of option. Batsman off the back foot cuts that one very nicely down to short gully region before the short admin fielder to run across this left to field the ball. Ample time for the batter Avinash to complete the single. With that single, scoreboard numbers on to 8 on the board without loss of any wicket. The kind of start which is badly required here for the opening batters of Quest Corp Limited. Both the batters already started very well. Ranjit from the far end, right arm over the Vijay. Vijay drives and beautiful looking drive with the drive, imperious cover drive there from Vijay. He's a man in form so far. He's got plenty of runs from his bat, especially in the one match he got really destroyed the bowling attack of their opposition with some destructive batting performance, and he scored 70 valuable runs in the just 20 deliveries. One of the best innings so far in this tournament. He picked up a single now. Avinash facing next delivery, looking for the expansive drive. The wicket keeper behind the stump misses that golden opportunity to pick the wickets. The first over which is completed, after completion of first over, Quest Corp Limited has got 9 runs without losing any wicket. And Gopi, will it go into a big miss? The wicketkeeper behind the stump, the last delivery, the wicket of Avinash always going to be the huge wicket for any opposition. But catches win the match as one of the best slogan in cricket. And wicketkeeper behind the stump misses the catch, and Avinash has got a life here. But still, Gopi, considering the fact that the first over is a power play over, and considering all the performance in the matches, the first round and quarter-final matches, this is one of the slowest start by the opening batters of team Quest Corp Limited, isn't it? एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, यहाँ पर पहले ओवर में
कैच छोड़ना कुछ हद तक महंगा साबित हो सकता है इन्फोसिस के लिए, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था लेकिन अंतिम क्षण में इस कैच को लपकने पे और पहले पूरे श्रृंखला में ये एक धीमा शुरुआत कहा जा सकता है क्वेस्ट कॉर्पोरेशन के क्वेस्ट कॉर्प के लिमिटेड के बल्लेबाजों ने किया है। और पिछले मैचेस में धुआंधार शुरुआत उन्होंने की थी और यहाँ पर कुछ हद तक अंकुश लगाने में सफल रहे हैं क्वेस्ट के बल्लेबाजों के ऊपर इन्फोसिस के गेंदबाज। तो एक ओवर बीत चुका है, 9 रन बन चुके हैं, 5 ओवर का खेल अभी भी बाकी है और कमबैक करने के लिए इस वक्त मौका जरूर है क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड के बल्लेबाजों को। Absolutely, Gopi. And first over, which is a 9 runs, might be the very good start from the batters. A steady start, in fact, one can say. The 9 runs with the help of 1 6 which is came from the bat of Avinash. And wait and see how Infosys will going to put a break in the second over of the power play. So that Sandesh is the one who got a very good tournament from the ball. Now we need to continue that form in this big final as well. Avinash will be the striker. He's a left-hand batter. And wait and see how Avinash will going to take Sandesh. Second over of the power play, the only two fielders outside the circle, one at deep cover point, one at deep square leg. Here's the next one, nicely turns that one down to square in mid-wicket region for a easy single. You know exactly what Avinash, that the left-hand batsman is going to be the best one to have a strike in that end, far end, because he's a right-hand batsman. Vijay, he will be the best one to tackle with the bowling of Sandesh to get the advantage of the wind direction. Sandesh bowling away from Azza, right arm over the wicket to Vijay. Vijay this time pulls that one, not quite getting hold of that properly. Wonderfully taken there by the mid-off fielder. Looks like once it looks like a difficult catch for the mid-on fielder, because he want to cover the ground little bit, just going back, and he just kept the eye on the ball. And Vijay once again disappointed in the second over itself, is back into pavilion. Tried to pull the ball but not short enough to pull the ball, and mistiming it, pays the penalty for that. And Sandesh has got a wicket here. The wicket number first, which is back into pavilion of Quest Corp Limited. It's 11 on the board for the loss of 1 wicket. Infosys definitely doesn't want to repeat the result of what they got in the previous edition when Quest Corp Limited defeated Infosys in the final, so that they wanted to take the revenge. But of course, in cricket there is no word called revenge, but revenge in the sense they need to perform very well than their opposition. And that's why these two, the opening bowlers, they're trying their level best to restrict the opposition as much less run as possible in the mega final of this prestigious RPL. Sandesh looks like he's a very confident bowler. After that, he got a wicket of Vijay by bowling a very good short pitch delivery. It's just inviting the batsman to go for the pull shot and missed timing by the batter. This time Sukesh, he's the one wanted to hit the ball, but ball just landed in front of the fielder over the fence for 4 runs. Very difficult for the D fielder if he wanted to field the ball after one bounce, because of that. The bounce of the delivery is very difficult for the fielder to tackle in the deep. After ball just pissing, landing almost inside the boundary line and going over the top of that fielder. Were in square leg and mid-wicket region, and batsman straight away Sukesh knows that even they lost the wicket of Vijay, he need to continue that explosive batting, because his last over is in progress as far as the power play is concerned. Scoreboard is 15 on the board for the loss of 1 wicket. Sandesh bowling away from us. Sukesh has played a very good innings in the previous match when Vijay is back into pavilion, when Avinash is back into pavilion. He is the one who's taken an initiative of getting some acceleration. This time fulls that one, beautifully bound to mid-on region, but not for run. Misfield by the fielder, but again very good backup by the fielder at short mid-off, and so that there is no question of any run. So far it's one more good over from Sandesh, excluding that boundary which is came in that over. I think it's a very good over there from Sandesh, as like what Ranjit did in the first over. It's 15 for the loss of 1 wicket. Sandesh right arm over the wicket to Sukesh. Sukesh cuts that one nicely down to backward point region, but ball went quickly to the fielder, so that no question of any run. Good over there from Sandesh. I think six runs came from that over of Sandesh. 2 overs completed after completion of 2 overs.
Quest Corp Limited has got a slow start, 15 runs on the board, and Gopi 7.5 runs per over. Do you think that it's going to be a slow start or it is a steady start? Because it's considering that the batting department of Quest Corp Limited, I think it might be the slow start compared to the start what they got in the previous 3 matches. बिल्कुल सतीश, पिछले 3 मैचेस, पिछले लीग मैचेस और क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल मैचेस में अगर देखी जाए तो जिस तरीके की शुरुआत क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड ने की थी उतनी तेज शुरुआत इस मैच में नहीं कर पाए, और इसकी ये भी वजह है कि इन्फोसिस का गेंदबाजी का डिपार्टमेंट अच्छा खासा है। तो यहाँ पर 15 रन स्टडी स्टार्ट कहा जा सकता है, और 4 ओवर का खेल जो बाकी है, और इन 4 ओवर में बचे हुए 4 ओवर में कम से कम एक 35 से 40 रन अगर भी बटोर लेते हैं तो 50 का आंकड़ा उनकी टीम की कुल रन संख्या पार कर जाएगी। और 50+ रन्स इन 6 ओवर्स इन दिस कंडीशन शाम के हालातों में कुछ हद तक चुनौती भरा साबित हो सकता है। अगर क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड के बल्लेबाज गेंदबाज राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर एक बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं तो सबसे पहले इस वक्त उनके सामने ये मुद्दा ठहरता है कि बचे हुए 4 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरें और ज्यादा से ज्यादा दबाव डालें बल्लेबाजों के ऊपर इन्फोसिस के, जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे। Well, exactly, Gopi. They're definitely not really bothered about the run rate what they're having just now, right now. But because the two very good batters out there in the middle, Sukesh and Avinash, he's got a ability. They got a potential of getting some acceleration. But I think Infosys captain must be pleased with the performance of the two opening bowlers so far. Bowled a very good line, and especially the Sandesh is the one who bowled a fantastic second over of the power play, where he conceded just 4 runs and he picked up a valuable wicket of a very danger batter Vijay back into pavilion. Subramanya. One more bowler, one more very good bowler for the side, left-hand bowler. He's been introduced by the captain of Infosys, and wait and see how Subramanya will go into ball here. The third over will go into start from the far end. And left-hand batsman for left-hand batter Avinash, one fielder at deep backward square, like one fielder in front of square, one at mid-wicket and one at mid-on. Mid-on going almost in the edge of the circle. There is a long off is there. And looks like it's going to be a more defensive field in the onside region and little bit offensive field in the offside region. Subramanya, left arm over the wicket, balls off the back foot, plays it down to short mid-off region, little bit misfield by the fielder, but the batters are not interested to get any kind of runs, and the score stationed at 15 on the board. For the loss of 1 wicket in the over number 3 is in progress. This is a result of the pressure, Gopi. Playing in the quarter final and semi final is a different story, but when you are coming to the mega final, might be the little bit under pressure situation, because this is the last opportunity, isn't it? The last opportunity for the both the team to become the champion, and there is no excuse at all. And this time he pulls that one, ball is in there again. The fielder at square leg, again the ball defeating the fielder. Then absolutely lucky boundary here for Avinash. It's not a kind of fielding we're expecting from Infosys in this big final. Just like I mentioned, there is no excuse at all in the big final. And 2 boundaries, which is what could be a stoppable, and a little bit extra effort which is required from the fielder in the deep. That ball went towards a deep square leg boundary for 4 runs. And Avinash picked up that boundary and scored Namuzan to 19 on the board for the loss of 1 wicket. Little bit frustration for the bowler Subramanya, because the batter pulls that one but not able to pull that one properly, and ball which is landed in front of that fielder, misjudgment by the fielder and ball went towards a deep square leg for 4 runs. Now Avinash has got a little bit looks like he is complaining about the quality of the ball, and umpire will go into check here, and will go into check the quality of the ball, then saying that of course it's good enough to continue, because the mistimed stroke, it's not I'm telling that why the Avinash didn't got timing here, it's just a mistimed ball, that's why he didn't got enough distance what he's looking for, but nothing wrong with that. The ball, quality of the ball, after getting some examination of the ball by the umpire. Subramanya once again back to his bowling mark. Subramanya bowling from the far end, left arm over the wicket, lofted at one, long on, fielder takes a comfortable catch. Avinash looking for the drive against the direction of the wind, and he just pays the penalty for that. Fantastic piece of bowling by Subramanya in that occasion. He's just bowled around his midland off stump and inviting the batsman to go for the big shot, taking the invitation, lofted at one,
didn't got the distance. He got the fielder, and wicket number 2, which is back into pavilion of Quest Corp Limited. Now they are 19 for the loss of 2 wicket. The batsman Avinash is back into pavilion after scoring 12 valuable runs in 8 deliveries with help of 1 boundary and a 1 6. So total different ball game we are watching in this mega final. What we are watching, the team Quest Corp Limited, and we are not having that same mindset what they got in the previous 2-3 matches. Maybe little bit in a defensive frame of mind in this particular mega final, so that wickets are tumbling. Very hard to combine the runs against excellent bowling by Infosys. Ganesh is a new batter. Came into middle. Of course, they're not really bothering about the batting department what they got, and everyone has got a potential of batting till 7 to 8. Number 8 batters has got a potential of batting for team Quest Corp Limited. But Infosys did a great job so far in the bowling department. Subramanya, left arm. Over the wicket, beautiful shot, cuts at one pretty hard off the back foot. Ganesh down to deep cow point, coming back for the second. In comes a throw, but a throw which is not good enough to stop the couple of runs here from Ganesh. Very good running beat to the wicket. Seeing that the fielder a little bit late to react to that throw from the deep, and I think it's a long distance for the fielder to get the throw into the hands of wicketkeeper, so that very good judgment by Ganesh to come back for the second, and with that couple of runs, Kobar numbers on to 21 on the board for the loss of 2 wicket in the over number 3 is in progress. Subramanya once again back to his bowling mark. Ganesh is one more experienced campaigner for the side of team Quest Corp Limited, and we know exactly after losing a wicket of Vijay, Avinash is responsible to take the initiative of getting some good runs. This time, lovely switch it. He got the distance for that. Unbelievable struck here from Ganesh. Again, that full toss delivery. The batsman just waiting for the delivery. Premeditated switch it before bowler going to deliver the ball. He takes his position immediately. Exquisite footwork, and more than anything else is a fantastic timing from that cricketing stroker, so that he got the distance and he got a second sixer of their innings, and scoreboard numbers on to 27 on the board. Subramanya, left arm, balls off the back foot, tried to cut that one, but again ball which is he played that one away from his body, and he just missed the timing in that stroke. And over number 3 which is completed, and 3 gone after completion of over number 3. Searching for the right track after winning the toss, Quest Corp Limited elected to bat first, but in this 3 overs they managed to score 27 runs at the exact run rate of 9 runs per over, and wait and see how well they will go into accelerate the run rate in the remaining 3 overs and go up in 9 runs per over. 27 on the board. The similar run rate projected score going to be a 54. And do you think that 54 will go into good enough in the big final against Infosys? If you're not only good enough, how many runs is going to be enough here for Quest Corp Limited in the remaining 3 overs? What kind of batting which is required from the batters of Quest Corp Limited? जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं सतीश, 50 प्लस इज द कॉम्पिटिटिव टोटल इन दिस टाइप ऑफ ट्रैक एंड जहां तक सवाल है शाम का वक्त है और शाम के माहौल में 50 प्लस टोटल अगर गेंदबाज उनके सतर्क गेंदबाजी करते राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर, तो इस वक्त इन्फोसिस के बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है। लेकिन जहां तक सवाल है जितने भी ज्यादा रन सब बचे हुए 3 ओवर में बटोरेंगे वो उनके लिए प्लस पॉइंट होगा, जो तो धीरे धीरे 2 ओवर के बाद तीसरे ओवर में वो धीरे धीरे अपना रिदम प्राप्त करते हैं उनके बल्लेबाज। पहले ओवर में 9 रन बने थे, दूसरे ओवर में रन से बने 6 और तीसरे ओवर में सबसे बेहतर रहा जिसमें 12 रन बना, 12 रन स्कोर्ड इन द थर्ड ओवर। और धीरे धीरे यहाँ पर वो उनके बल्लेबाज सही पटरी पर आते हुए, उनकी गाड़ी सही पटरी पर आती हुई, और यहाँ पर सवाल है जहाँ तक बचे हुए 3 ओवर का, तो कम से कम 25 से 30 रन इन्हें कम से कम उन्हें 3 ओवर में बटोरने होंगे अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है। तो देखते हैं क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड के बल्लेबाज इन 3 ओवर में और कितने रन यहाँ पर बना पाते हैं। तो चौथा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ
संदेश इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए विकेट कीपर चूके गेंद वाइड का इशारा इस बीच अंपायर का स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 28 रनों पर, 28 in fact the score now at the start of the fourth over in fact। और फिर से एक बार गेंदबाज संदेश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाह, नॉट क्वाइट मीटिंग इट एट द लास्ट मोमेंट, गेंद पहुंची डीप मिड विकेट पर, एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड जो कि डिफेंडिंग चैंपियन इस रेड एफएम आरपीएल रेड प्रीमियर लीग 2022 श्रृंखला के, और जहाँ तक इन्फोसिस का सवाल है पिछले साल के रनर्स अप, तो ये दो टीमें एक बार फिर से आमने सामने हो रही हैं फाइनल में, तो यहाँ पर निस्संदेह एक बेहतरीन क्रिकेट हमें देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका। फुल टॉस, गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर उछालना चाहा, बीमर गेंद थी और गेंद पहुंची इस वक्त फाइनल लेग पर, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका। 1+1 इनफैक्ट 2 runs added to the total, and with that couple run the scoreboard moving up to 31 now for the loss of 2 wicket। both openers are now already back into the pavilion, और गेंदबाज संदेश इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया, गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर के लिए मिस जजमेंट इस वक्त फील्डर द्वारा, अपने ऊपर की ओर छलांग लगाने के बावजूद गेंद को वो रोक नहीं पाए, और गेंद उनके सिर के ऊपर से होती हुई आफ्टर फर्स्ट बाउंस पहले टिप्पे के बाद सीमा रेखा को पार कर गई, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ बल्लेबाज सुकेश के बल्ले से, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 35 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 35 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। सो गुड गोइंग ऑन हियर फॉर क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड, दे आर बैटिंग एज पर देयर मेरिट एट द सिचुएशन, और जहां तक सवाल है इस वक्त धीरे धीरे उनके बल्लेबाज अपना सही लय रिदम यहां पर प्राप्त करते हुए, और जहां तक सवाल है इन्फोसिस के गेंदबाजी का, तो इस वक्त उन्हें कमबैक करना है एक घातक गेंदबाजी के जरिए। यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिटिगेटेड दिस टाइम, जस्ट अ सिंगल ही गॉट, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 36 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 36 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। फैंटास्टिक टूर्नामेंट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर इन दिस ब्यूटीफुल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर NMPT ग्राउंड, रेड प्रीमियर लीग 2023। और जहां तक सवाल है इस श्रृंखला का क्लाइमैक्स इस वक्त गुजरता हुआ, जस्ट वांटेड टू कट दैट वन एट द लास्ट मोमेंट, एक्स्ट्रा क्विकर फ्रॉम द बॉलर एंड went into the hands of wicket keeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run। Scoreboard stays at 36 now for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress। संदेश एक बार फिर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं, पटके हुई गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े, गेंदबाज तेजी के साथ पहुंचे, निशाना टकरा चुका है, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। विकेटों पर निशाना दागा था इस वक्त गेंदबाज ने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते हुए, लेकिन आखिरकार इससे पहले बल्लेबाज अपना बल्ला बैट क्रीज पर रख चुके थे, और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 37 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress। Slowly and steadily this partnership is now building up for Quest Corp Limited। सुकेश और गणेश एक बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर देते हुए, और इस वक्त दूसरा विकेट 2 विकेट गिर चुके हैं, और गेंदबाज इस बीच तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर। संदेश दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और इसी के साथ विकेट यहां पर गिर चुका है। सुकेश की बारी समाधि, जस्ट ट्राइंग टू हीव द बॉल ओवर डीप इन विकेट फेस, नॉट सक्सीडेड, एंड फाइनली डीप इन विकेट फील्डर नो मिस्टेक, made no mistake in fact, and one more wicket fallen, and one more over has been came to an end. 4 overs completed, and after 4 overs they are now 37 for the loss of 3 wicket। Quest Corp Limited are looking in a good situation, except they lost their 3 wicket. They managed to score 37 runs on the board after completion of 4 overs with a run rate of exactly 9.25 runs per over। Still they got 7 wickets got kept intact, 7 विकेटें अभी भी सुरक्षित उनके लिए, और देखना यह है कि इन बचे हुए 7 विकेटों की मदद से बचे हुए 2 ओवर में और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त इस मेगा श्रृंखला का रेड प्रीमियर लीग 2023, रेड प्रीमियर लीग 2023 is now progressing along nicely। The climax of this tournament is now progressing here, and और इस रेड प्रीमियर लीग का चैंपियन कहलाने के लिए इस वक्त इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल में इस वक्त संघर्ष जारी है, और 5वां ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए सुब्रमण्य,
और दाहिना हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गणेश, नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है सतीश का, और फील्डिंग में इस वक्त जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त सुब्रमण्या गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ ओवर द विकेट, पहली गेंद लेकर तैयार। रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहता, चूंकि गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो ऐसे ही चंद डॉट गेंदों की और जरूरत इस वक्त इन्फोसिस के गेंदबाजों को कम बैक करने के लिए, और अगर 50 रनों के आंकड़े के अंदर अगर वो क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड के बल्लेबाजों को रोक कर रखते हैं तो निस्संदेह उन्हें भी लक्ष्य पीछा करने का एक बेहतरीन मौका यहाँ पर जरूर है। और इस बीच गेंदबाज सुब्रमण्या अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट एक बार फिर से खेलना चाहा, डॉट गेंद, कंसेक्यूटिव डॉट बॉल्स फॉर द बॉलर। और जहां तक सवाल है इस वक्त रनों का, तो रन इस वक्त नहीं मिलेगा। 10 गेंदें बाकी, अब उनके बारे में जस्ट 10 बॉल्स नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। और सुब्रमण्या 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं, अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। इस बार नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज स्ट्राइकर बल्लेबाज की ओर कुछ बढ़े, उन्होंने कुछ कहा कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त अपनानी चाहिए, और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद शफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद लगभग पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, थोड़ी सी दाईं और लगभग उनके पैरों पर टकराने के बाद गेंद गई थी इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर, जहां पर विकेट कीपर ने स्वयं गेंद को फील्ड कर लिया। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 3 बेहतर गेंदें सुब्रमण्या इस ओवर में फेंक चुके हैं। बल्लेबाज गणेश के लिए अपनी चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार, बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, फुल टॉस, गेटिंग इज इनसाइड एज, बॉल रनिंग डाउन टू अ डीप बैकवर्ड स्क्वायर, लेकिन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 38 रनों पर। 38 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और जहां तक सवाल है बचे हुए गेंद का, तो 2 गेंदें इस ओवर में बाकी। अब नए बल्लेबाज सतीश यहाँ पर सामना करने के लिए तैयार, और सुब्रमण्या अपनी ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार, बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सतीश इस वक्त सामना करते हैं, पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद पहुंची फाइन लेग की दिशा में, और इस बीच 1 रन बल्लेबाज को मिला। He's got a bat onto that at the last moment, and just a single run added from the bat, and the scoreboard moving up to 39 for the loss of 3 wicket. और अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी। इस वक्त सुब्रमण्या एक बेहतरीन ओवर अब तक उनका साबित हो चुका है, जिसमें सिर्फ 2 रन वो प्रदान कर चुके हैं। अपनी ओर की अंतिम गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा, लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकल रही थी, और विकेट कीपर ने विकेटों के पीछे गेंद को अपने हाथों में कैद कर लिया। 40 रन बच चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में 1 गेंद अभी भी बाकी। सुब्रमण्या एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए, लॉन्ग ऑफ फील्डर को थोड़ा सा वाइडर इस वक्त तैनात किया गया है, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला, गेंद हवा में इस वक्त उछलती हुई, मिड ऑफ फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और यशस्वीतम इस कैच को लपकने में सफल। ऑन साइड पर गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहता, नॉट क्वाइट मिडली गेट, द बॉल गेट्स सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मिनट, गॉट इज स्टॉपर ऑफ द बैट, गॉट इज स्टॉपेज, एंड फाइनली मिड ऑन फील्डर में नो मिस्टेक, और इसी के साथ विकेट गिर चुका है। यहाँ पर चौथा विकेट गिर चुका है गणेश के रूप में, जबकि इस वक्त स्कोर है 40 रन, 40 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, एंड 5th ओवर हैज बीन केम्स टू एन एंड। लास्ट ओवर रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। तो एक बेहतरीन ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है सुब्रमण्या का, जिसमें सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किए, 1 विकेट भी प्राप्त किया गणेश का, और 5 ओवर के बाद अब अंतिम ओवर का खेल बाकी, और देखना यह है कि इस बचे हुए अंतिम ओवर में यहां पर क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। Srisha, the bowler, is now brought into the attack, and the last over starts in Quest Corp Limited innings. पहली गेंद लेकर श्रीशा इस वक्त तैयार रहा, और बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए स्ट्राइकर एंड पर सतीश, और श्रीशा इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए अपनी टीम के अन्य खिलाड़ी से फील्डिंग के जमावट के बारे में। लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर मौजूद, डीप मिड विकेट इस वक्त तैनात, जबकि लॉन्ग ऑफ पर कोई फील्डर मौजूद थे, मिड ऑफ पर एक फील्डर मौजूद, कवर पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान एक फील्डर तैनात 20 गज के दायरे के अंदर इनसाइड द 20 यार्ड सर्कल। और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार श्रीशा,
दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए सतीश इस वक्त सामना करते हुए 8 से 10 कदम उनका रन अप, दाहिने हाथ तो ऊपर द विकेट, ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। Here he comes. Full toss, pull that one this time. I think it could be gone out the way. That is an absolutely perfect strike, and with that six, the scoreboard is now raising up to 46 in the over number 6 and the last in progress. Just 5 balls now left in their innings. This time he's just got that one right from the middle of the bat by the right-handed batsman Satish, and after that one in a style of a deep mid-wicket fend for a use one. 46 for the loss of 4 wickets. Automatrix, experience excellence, an exclusive Tata Motors car showroom, Vijay Mangaluru. तो 5 गेंदें अब बाकी शीशा के ओवर की, और इस वक्त गेंदबाज बाएं हाथ दाहिने हाथ ओवर द विकेट, टॉप एज गेंद एक बार फिर से बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर, he is looking on fire. The 50 comes up. It's 52 for the loss of 4 wicket, and now just 4 balls now remaining in their innings. Brought to you by Decathlon, Mangalore's biggest sports store with this Super Sixer is brought to you by Decathlon, Mangalore's biggest sports store with over 70 plus sports and 6,000 plus products. तो 2 छक्के इस ओवर में लग चुके हैं और एक बेहतर ओवर साबित होता हुआ क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड की पारी में श्रीशा 2 छक्के यहां पर प्रदान कर चुके हैं। 52 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है। अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद, टॉप एज, इस बार गेंद लॉन्ग ऑन फील्डर, और यहां पर जीवदान प्राप्त कर चुके हैं बल्लेबाज। गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंची थी और अंतिम क्षण में थोड़ा सा मिस जजमेंट, और इस मिस जजमेंट के बदौलत ये कैच वहां पर छूट चुका है। 2 रन बल्लेबाज यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। 54 नाउ, अगली गेंद तैयार, शीशा दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद पटके हुई गेंद, इस बार गेंद को लॉन्ग, 6 number 3 came in this over from the bat of Satish now. Bank of India, good people to bank with, household name and 60 for the loss of 4 wicket, and just 2 balls now remaining in their innings. 2 गेंदें सिर्फ बाकी है अब उनकी पारी में, और ये ओवर कुल मिलाकर क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड के लिए एक बेहतरीन ओवर साबित होता हुआ, जिसमें 20 रन अब तक बन चुके हैं। 20 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर, और श्रीशा इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, और पहले 4 गेंदें जो उन्होंने फेंके उनमें से 3 गेंद शॉर्ट गेंद थी, और इन शॉर्ट गेंदों का फायदा उठाते हुए गेंद को इस वक्त उछालने में सफल बल्लेबाज सीमा रेखा से बाहर। अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, स्ट्रेट अवे द प्रेशर ऑन द बॉलर, 1 रन का इजाफा। 61 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, स्टिल कपल ऑफ बॉल्स लेफ्ट इन दिस ओवर, और एक बार फिर से शीशा गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए। शाम का वक्त 4:50 यहाँ पर बच चुके हैं, और इस बीच गेंदबाज की ओर की अगली गेंद रनअप में कुछ हद तक बाधा, और अपनी अगली गेंद फेंकने के लिए इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर आते हुए, तो मैं फरमा रहा था शाम के 4:50 यहाँ पर बच चुके हैं। धूप की तीव्रता हालांकि कम हो चुकी है, लेकिन धूप का अस्तित्व जरूर मैदान पर मौजूद है, और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, और वाइड का इशारा। स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 62 रन, 62 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, and this is the 6th and the last over in progress in their innings. Grand finale of Red Premier League 2023 is now progressing here, और श्रीशा इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, इस बार गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज सतीश, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद पटकी हुई गेंद, एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड, 3 लगातार वाइड, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 63 रनों पर। 23 रन ऑलरेडी स्कोर्ड इन दिस ओवर, स्टिल 2 बॉल्स लेफ्ट, और शीशा इस वक्त काफी चिंताक्रांत होकर अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए, और टीम के 2 अन्य खिलाड़ी इस वक्त कुछ समझाते हुए शीशा को कोई किस सही लेंथ और लाइन के साथ उन्हें गेंदबाजी यहाँ पर करनी चाहिए, और बातचीत इस वक्त जारी है, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। और फिर से एक बार
Srisha, दाहिने हाथों पर the wicket. Again, full toss, pull that one, but straight to fielder at deep mid wicket. This time fielder made no mistake, and at last the bowler Srisha got the breakthrough. Fifth wicket gone is 63 for 5. Dinky Dive, the taste of relaxation. This wicket is brought to you by Dinky Dive, the taste of relaxation. Kadri and Padil. So still one ball left in their innings. 23 runs already scored in this over so far, and we are just waiting for the number 8 batsman now. Number 7 batsman, in fact. Vikas is now coming out to the middle as a number 7 batsman for Quest Corp Limited. और उनके पारी का अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार विकास इस वक्त और श्रीशा तैयार. The last ball of their innings is now coming up. श्रीशा to विकास. ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को खेलना चाहा, चूके डॉट गेंद, रन के लिए दौड़ पड़े. यहाँ पर रन पूर्ण कर चुके हैं. 22 का इशारा and the innings is up and Quest Corp Limited finished with 64 for the loss of 6 wicket in the stipulated 6 overs, and now they set a competitive target of 65 for Infosys to clinch the prestigious Red Premier League 2023 title. 65 they have to score for victory. Under 11 runs per over they have to score for victory. That means in exactly calculation it's going to be 10.83 runs per over. They have to score with the help of 10 wickets. The present equation shows for them, and let's see can they read the target out or not. और सतीश 65 रनों का लक्ष्य. अंतिम ओवर बेहतर रहा. 24 रन बने. 24 रन स्कोर्ड इन द लास्ट ओवर. और मैं समझता हूँ इस वक्त 65 रनों के लक्ष्य का पीछा करना है अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप ऑफ क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड. इस वक्त इन्फोसिस को एक बल्लेबाजी में एक डिफरेंट टैक्टिक्स, विशेष रणनीति यहाँ पर अपनानी होगी 65 रनों के लक्ष्य का अगर पीछा करना है तो. लेकिन इन्फोसिस के पास भी सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप है. उनके बल्लेबाजी में गहराई है, डेप्थनेस है. अगर वो डेप्थनेस का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बल्लेबाजी के डेप्थनेस का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो निस्संदेह इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं. फिलहाल कुछ ऐसा कहना पड़ेगा. रेड प्रीमियर लीग 2023 का ये अंतिम अवधि, अंतिम सत्र काफी रोमांचक पूर्ण होगा. यहाँ पर माइक्रोफोन पर आइए सतीश. धन्यवाद. थैंक यू. ಎಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಹುಕ್ಕು 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 ಆಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸೌಂಡಿಗೆ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿ 93.5 FM ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿ 93.5 FM 93.5 ಹುಕ್ಕು ಆಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸೌಂಡಿಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಟೇಷನ್ ನಾವೇ ನಂಬರ್ 1 ಹುಕ್ಕು ಆಗಿ now proudly presents Rohan City. Book your space at just rupees 31,000. Log on to rohancorporation.in. Banking partner Union Bank of India, 5th largest public sector bank in the country with a legacy of 104 years. A household name and partner of progress in Namakudla. Union Bank of India. Good people to bank with. Thank you. Thank you very much. Welcome back, and thank you, Gopi. And exactly, you are mentioning about just possibility of winning this match for Infosys is equal to
the possibility of winning this match for the opposition team, Quest Corp Limited. That means match is evenly poised because 10.8 runs per over is the required run rate in the beginning itself here for team Infosys to become the champion of this prestigious Red Premier League Season 3. Meanwhile, we have chief guest already here in our main stage. We would like to welcome Mr. KG Nath, Deputy Chairman, New Mangalore Port Authority and Chairman of Major Port Sports Control Board. As also, we have one more dignitaries in our stage. Mr. Prashant Kundapur, Regional Business Development in charge for South Karnataka Nippon Paint India Private Limited, and also we have Mr. Gunpal Alva, Mangalore Depot Manager, Nippon Paint India Private Limited. So warm welcome, sir, for this prestigious cricket tournament. Also, we have Mr. Sheikh Dawood, proprietor of Vision Events Mangalore. Also, we have Nitin Kamath, marketing head of Ideal Ice Cream. So we welcome all dignitaries for this prestigious Red Premier League 2023 for this mega final, as well as for the prize distribution ceremony of this prestigious Red Premier League 2023. Now all set now for the chasing. Opening batters already made their way to the mid of the pitch. Sandeep will go into face the first delivery. Gopal bowls outside the line of leg stump. Warm-up delivery of the evening from Gopal is bowled outside the line of leg stump, and warm-up for umpire as well in the first ball itself. He signals a wide one on the board. They started their journey, and wait to see how difficult this journey is going to be for Infosys. Again, the good ball there from Gopal in the negation, posting the batsman onto the back foot, and batsman off the back foot. Sandy, captain of the side, pushes the ball down to short point region to pick the single, and Sandy is off the mark, and total score now moves on to 2 on the board without loss of any wicket. Gopal from the far end, right arm over the wicket, beautifully bowled, quicker one, beaten by the pace of the delivery. The batter wanted to use a little bit, try to use a feet for to hit the ball towards a long off region, but missed it completely. Sajan, and wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. Gopal again, right arm over the wicket, went for the switch it, but ball is just going outside the line of off stump, and right call for umpire Viraj, because batsman trying for the switch it, and by seeing that Gopal is just bowled that one outside the line of off stump, and wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. A very good start here from Gopal. Short run off, right arm over the wicket, just using his feet, ball is in there, chance of run out in the strikers, and direct hit, but batsman looks like is very safe. They just wanted to get over the top of the infield, the batsman using his feet, but the bowler did a great job seeing the batsman using his feet, bowled a little bit puller length delivery, Yorker length delivery, and the batsman couldn't manage to take the advantage of that one, and he picked up a single for that. With the single scored moves on to 3 on the board without loss of any wicket, chasing total score of 65 to win this match. Of course, at one stage it looks like it's very difficult to get that much of runs, but in the last over the batters of Quest Corp got some runs through Satish, hitting some big shots in the last over. One more single is added to total. Gopal will not going to bother about the single. You know exactly this is a power play is on, so that he wanted to restrict the boundaries and a 6, and so far he's succeeded by keeping the batsman quiet in this particular over. And Gopal again back to his bowling mark, to the right hand batsman Sajan. Sajan again coming down the track, lovely delivery in there. There's a little bit of a mix up, chance of run out in the non-strikers, and looks like the first wicket is back into pavilion. Sajan departs. The wicket number first of Infosys is back into pavilion. It's a 4 for the loss of 1 wicket. Automatrix, experience excellence, an exclusive Tata Motors car show. This wicket is brought to you by Automatrix, experience excellence. this wicket. So Sajan back into pavilion as he looking for the quick single. Over completed, first over which is completed after completion of over number 1, chasing 65 to become the champion. Infosys has got a shackling start. They lost the wicket at the same time. They didn't got enough runs on the board. 10.88 runs per over the required run at the beginning, but they got 4 runs, and because of that because of that economical over, the run rate is really climbing up now for Infosys.
The 4 which is deducted from 65, that means 61 more runs required for the victory in remaining 5 overs. Absolutely, it's going to be one of the difficult tasks, but not impossible in cricket. Anything possible in cricket, but believing with yourself is so important for Infosys if they wanted to get this total 61, which is a required run in the remaining 5 overs. 61 in remaining 5 overs. It's a 12.2 runs per over the required run rate. This time he loved it, just like I'm talking about. Billing with yourself is so important, and this man Pranil is always definitely is the kind of batsman. He's got a lot of runs behind him, and he's dispatching that one down to mid-wicket boundary for a huge 6. Super Sixer is brought to you by Decathlon, Mangalore's biggest sports store with over 70 plus sports and 6,000 plus products. Bharat Mall, Vijay, Mangaluru. So Pranil just came into middle as a number 3 batters, and very first ball itself, have a look at the level of confidence from that batter. Absolutely amazing from the batter Pranil. He's got a very good tournament from the bat, and first ball itself is dispatching that one quite brilliantly down to mid-wicket for a huge 6. And with the 6, he just opened the gate here for Infosys. 10 for the loss of 1 wicket. Prajwal. This time he lofted it, and he lofted it, but fielder is underneath, is gone. It's a huge wicket for the Quest Corp Limited. The Pranil is a batter, doesn't want to see him to back into pavilion so quickly, and Prajwal got a huge wicket for the team. Neurological diseases. Padil, Mangaluru. this wicket is brought to you by First Neuro Hospital, Karnataka's only private hospital dedicated to the treatment of neurological diseases. Padil, Mangaluru. So Pranil is just pays the penalty for by choosing that wrong shot selection, isn't it? Against the direction of the wind, he wanted to get the distance. This is one of the biggest problem what Pranil has got. Nothing much wrong with the stroke, but something wrong with the shot selection, and he's just pays the penalty for that. 10 for the loss of 1 wicket. Pranil is a huge wicket as far as winning with this match is concerned for team Infosys. This man, I think, he's got early breakthrough, absolutely, because someone like Pranil wanted to take the responsibility for Infosys to get some very good score for his team. Again, nicely balled there by the batter, even well played there by Sham, just allowing the ball to coming into his bat, just steering that down to short third man region for a single. With that single score, moves on to 11 on the board, 11 for the loss of 2 wicket. A little bit under pressure now Infosys. It's very hard to combine the runs at the same time. The 2 valuable wickets which is back into pavilion. Right arm over the wicket. Sham balls lofted at one. Once again is opportunity for the fielder to run back and takes a very good catch. Fantastic catch has been taken there by Avinash. It's not so easy to run back and take the catch, and he just kept the eye on the ball till the last moment, and he completes a wonderful running catch. brought to you by Union Bank of India. Good people to bank with. Household name and partner in this wicket is brought to you by Union Bank of India. Good people to bank with. Household name and partner in progress in Nammakudla. So one more wicket is back into pavilion. Prajwal strike again. 2 wickets in this over in just 4 deliveries. Even though he conceded 6 in the first ball, but he able to bounce back with some very good line and length. They picked up 2 valuable wickets. You know exactly, Prajwal, which line is going to be suitable to bowling in this end. He's just concentrating on the outside the line of off stump, and each and every batters of team Infosys looking for the big shot against the direction of the wind, and they pays the penalty for that. Sham back into pavilion, and Abhijit is a new batter, just came into middle with a lot of responsibility. Prajwal bowling away from us. Right arm over wicket. Full toss delivery lofted again. One more wicket. The 3rd wicket for Prajwal. 3 wickets for Prajwal in the difference of 5 deliveries. is brought to you by Nippon Paint, Asia's real #1 paint.
wicket is brought to you by Nippon Paint, Asia's real #1 paint. Absolutely, that all three wickets we can see that the same mistake which is continues by the batters of Infosys. Of course, mistake is common, but learning from the mistake is so important. After Franilis got out, the incoming batsman need to see that need not hit the ball towards the long on and long off. Of course, the square of the wicket is going to be it was a bad shot selection when you are playing in that end. But Prajwal is doing a right job bowling outside the line of off stamp every time, and he got three valuable wickets and. Downfall starts here for Infosys, and now they are looking in absolutely deep in trouble. 11 for the loss of 4 wicket. Prajwal. White arm over the wicket bounce. This time swings and missed. Again, the look at the delivery, look at the line. Consistency in the line and length definitely going to be key for the success of Prajwal. In this over, 3 valuable wickets for Prajwal. Outstanding over, 7 runs conceded, but he picked up 3 valuable wickets. After completion of over number 2, chasing 65 to become the champion, Infosys are looking in a deep trouble. 10 for the loss of 11 for the loss of 4 wicket. Last year 85 correct. So thank you very much, and we are back into this match, and absolutely repetition of the previous edition's final. In that previous edition, that tournament which is organized at Sahyadri Cricket Ground at Adyar, that time I think Press Corp Limited scored 84 runs when they're batting, almost that much of huge runs they scored, but here they scored less than that, but it's quite enough for Quest Corp Limited to depend. But match which is not yet over, the 13.5 runs per over is a requirement now for Infosys to win the match. Some extraordinary batting performance required if they wanted to win the match. Single-handed stroke, not control that switch it, and he just pays the penalty for that. 5th wicket is back into pavilion. It's 11 for the loss of 5 wicket. is brought to you by Rohan Corporation, now proudly. this wicket is brought to you by Rohan Corporation now proudly presents Rohan City. Book your space at just rupees 31,000. So one more wicket is back into pavilion. Wicket number 5 is back into pavilion. Infosys looks like their body language that they've already given up this match. Looks like they've already given up this match against fantastic bowling display by the bowlers of West Corp Limited. ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿರಿ ರೆಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿರಿ 64 ರ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಿದೆ ಬೌಂಡರಿ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚಿಯರ್ ಮಾಡಿರಿ ಆಡಿ 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 ನೀವು ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಆಡಿ Thank you very much. Welcome back for the mega final of this prestigious Red Premier League, which is presented by Nippon Paints, inspired by you and powered by Rohan Corporation. And we are into the last 4 overs is remaining, 3.5 deliveries remaining to decide who will going to become the champion of this prestigious RPL season 3. And looks like in a naked eye, and Quest Corp Limited looking in a driver's seat of winning this match. Subramanya is a new batter, just came into middle. The left-hand batsman always is useful in this condition, and wait and see how Subramanya will going to take the advantage of this condition. And a bowler from the far end, Prashant, picked up a wicket in his first delivery. And fielding set here for the left-hand batsman. One fielder is standing at deep square leg, one fielder at fine leg, one at mid-wicket, and one at square leg, which is in front of square. And long on inside the ring, that is a mid-on, and one at short extra cover, short backward point, and deep in the
long revision. Again, nicely turns that one down to deep mid-wicket region for a single by the batter. And with that single, Scoburn moves on to 12 on the board for the loss of 5 wicket. Now we can understand why the captain of Quest Corp Limited, after winning the toss, elected to bat first. This is one of the biggest reason that they're really exploiting the condition in the evening. Of course, early part of the winning, when they batted, this huge wind is passing in the ground. They're taking that advantage of that wind direction, and they got very good runs, 64 runs, and after that they bowled very well to put some pressure onto the batsman. They're picking up wickets in a frequent intervals and putting some pressure onto the batters of Infosys. Prashant from the far and right arm of the wicket pulls that one nicely down to long on region. They're looking for a second there, but very difficult to get the second there. With that single, Scoburn moves on to 13 on the board for the loss of 5 wicket. These singles will not going to help a team Infosys to win the match. Along with that rotation of strike, needed 1 or 2 big shots in each and every over if they wanted to win the match, because the asking run rate is really climbing up and it is really creeping up, and 13.5 in the beginning of this over now looks like it's going more than 15 runs per over required run rate. This time swings at one, but not really getting that much of timing in that stroke, because he's almost dragged the ball from outside the line of off stump Subramania to pick the single. With that single, Scoburn moves on to 14 on the board for the loss of 5 wickets. So far in the 2 days of a wonderful cricket tournament, which is organized by Red FM 93.5 in this most beautiful B.R. Ambedkar cricket ground, witnessing some fantastic performance by the all teams which is participate in this cricket tournament. One more white with that extra score, moves on to 15 on the board. And especially the day number 2, the most excitement day of cricket, where you witnessed some unbelievable batting performance, some extraordinary bowling performance, even some very good fielding performance by the fielders. Again, nicely pulls that one down to square leg region for a walkable single. With that single, they're looking for the second because of that fielder little bit fumbled. So batsman grabbing the opportunity for that fumble, that came back for the second easily in the end. With that couple of runs, Scoburn moves on to 17 on the board for the loss of 5 wicket. Last ball remaining in this over. Target which is looking tougher and steeper here for the team Infosys to win this match. 65 which is a target. They got only 17 on the board. Still it's long way to go. 42 more runs required for the victory. Here is again right arm over wicket. Pulls that one nicely down to deep backward square leg region. One bounce into the fence for 4 runs. At last the batter breaking the shackle here. The Prashant bowled a little bit short pitch delivery, and batsman just grabbing the opportunity. Prashant hits the boundary. 21 on the board for the loss of 5 wicket. Vijay Mangaluru. This Fantastic Four is brought to you by Auto Matrix. Experience excellence. An exclusive Tata Motors car showroom, Vijay Mangaluru. So 3 overs completed. Infosys looking in a deep trouble. Now 44 more runs required for the victory in remaining 18 deliveries. And before the next over will going to start here, the time to change in commentary box as well. I would like to invite Mr. Gopi, final time in this RPL. And the runs which is required 44, and Gopi looks like Infosys looks like in a deep in trouble. 44 required for the victory, but cricket everybody knows this is an unpredictable game, the game of glorious uncertainty, just like what Quest Corp Limited is did in the last over. They got 24 runs in the last over, and it's difficult to say anything. One big over which is badly required here for Infosys to win the match. Over of 20 plus runs which is badly required, then one day gate will go into open for Infosys to become the champion. Otherwise, the repetition of the last edition where Quest has got a golden opportunity to become the champion consecutive second time of this RPL. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, इस वक्त चमत्कारी बल्लेबाजी ही इन्फोसिस को इस मैच में वापस ला सकती है। जिस तरीके से अंतिम ओवर में 25 रन बने थे क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड की पारी में, उसी तरीके की ओवर की इस वक्त जरूरत है। लेकिन जब कभी भी आप रनों का पीछा कर रहे हो तो साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर होता है, और रन्स बनाने की ज़रूरत आपके ऊपर जब होती है तो दबाव आपके ऊपर बढ़ता है। तो यहाँ पर देखना यह है कि दबाव को किस तरह झेल कर ये बल्लेबाज बचे हुए 17 गेंदों में 43 रन और बना पाते हैं। तो इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गोपाल, और चौथा ओवर यहाँ पर शुरू हो चुका है, और फील्डिंग में इस वक्त जमावट
चलते हुए और गेंदबाज गोपाल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। सिर्फ छक्के और चौके ही इस वक्त इन्फोसिस को इस मैच में वापस ला सकते हैं और गोपाल फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए। कुल मिलाकर स्कोर है इस वक्त 22 रन, लक्ष्य है 65 रनों का, 43 रन और चाहिए विजय के लिए। गोपाल एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद लगभग उनके पीठ पर टकराई और आखिरकार जब तक गेंद को शॉर्ट कवर पर फील्ड किया जाता है 1 रन का इजाफा लेग बाय के रूप में हो चुका है। लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। स्लोअर प्रोग्रेसिंग हियर नाउ फॉर इन्फोसिस और एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है V4 न्यूज़ 24/7 चैनल पर श्रीमान माणिक इनके सारथ्य में। और यहाँ पर अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ड्राइव करना चाहा, बल्ले का बाहरी किनारा इस वक्त पहुंची शॉर्ट थर्ड पैड पर। हर गेंद पर सिंगल्स बनते हुए और हर गेंद के साथ दबाव प्रेशर इस वक्त बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर, तो स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट एंड दिस इज द 4th ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। और फिर से एक बार गोपाल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। शाम के 5:20 यहाँ पर बच चुके हैं और इस रेड प्रीमियर लीग 2023-2023 का क्लाइमैक्स यहाँ पर प्रगति पर। इस बार गेंद को ड्राइव किया लेकिन नॉट क्वाइट मेकिंग इट एट द लास्ट मोमेंट। जमीन के सहारे गेंद पहुंची डीप इन विकेट पर। इनफैक्ट दे कम बैक फॉर द सेकंड एंड दिस टाइम ही वोंट सर्वाइव। एक और विकेट गिर चुका है, 6 विकेट डाउन एंड इन्फोसिस आर नाउ लुकिंग डीप इन ट्रबल। इट्स 25 for 6. This wicket is brought to you by Union Bank of India. Good people to bank with. Household name and This wicket is brought to you by Union Bank of India. Good people to bank with. Household name and partner in progress in Nammakudla. So 25 for the loss of 6 wickets. Struggling time continuing here for the batsmen of Infosys at this situation, and at this situation Quest Corp Limited looking right on top. Here again, absolutely fantastic one. Just missing outside the off stump. Kept low at the last moment after pitching and it went into the hands of wicketkeeper. And there is no possibility of any run. बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज गोपाल अपने ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहा। एक बार फिर से फील्डिंग का मुआयना करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज संदेश इस वक्त सामना करते हुए। चौथा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। ये गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, कंसेक्यूटिव डॉट बॉल्स फॉर हिम एंड a fantastic over came straight on from Gopal. 4 overs completed. Infosys are now still searching for the right track. It's 25 for the loss of 6 wicket and exactly 40 runs required in remaining last 2 overs. अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी बल्लेबाजी ही यहाँ पर इन्फोसिस को इस मैच में वापस ला सकती है। फिलहाल तख्ता इस वक्त काफी हद तक भारी लगता हुआ क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड का, और निस्संदेह पिछले साल के खिताब को रिटेन करने की पूरी तैयारी में। So Avinash starts off fresh proceedings from that side and और इस वक्त फील्डिंग में जमावट चलती हुई। 12 गेंदें 40 रन चाहिए विजय के लिए और ओवर की पहली गेंद लेकर अविनाश इस वक्त तैयार। फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई। स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज संदेश जो कि 28 नंबर की जर्सी इस वक्त पहने हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर अविनाश इस वक्त तैयार। Here Avinash comes. First ball of his fresh over. Right arm over the wicket bowls. So 40 required of last 2 overs. Avinash comes. First ball of his fresh over. Right arm
ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद बैकफुट पर गए, गेंद को इस वक्त खेला, इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट गली की दिशा में। जब तक गेंद पहुंची, गेंद फील्ड हो, वहां पर 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 26 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। इट्स 26 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर इन फैक्ट। और 11 गेंदें बाकी, 39 रन चाहिए। और अविनाश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, सामना करते हुए इस वक्त रक्षित। अविनाश की गेंदों का दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, गेंद टॉप एज पर, फॉलो थ्रू में आसान सा कैच गेंदबाज द्वारा और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। रक्षित की पारी समाप्त, 7वां विकेट खो चुका है 26 रनों के ऊपर। इट्स 26 for 7। This spectacular catch is brought to you by Dinky Dine, the taste of relaxation. Kadri and Padil. This wicket is brought to you by Dinky Dine, the taste of relaxation. Kadri and Padil. This wicket is brought to you by Dinky Dine, the taste of relaxation. Kadri and Padil. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆದರ್ಶ್ ಬೇಗನೆ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸೊ 10 in fact in overall calculation it's going to be 10 balls remaining in the innings and 39 more runs now they have to score for victory. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. और इस बीच गेंदबाज अविनाश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए 39 to get from 10 balls. 10 fours needed in the last 10 deliveries, almost 10 fours needed in the last 10 deliveries. अविनाश बॉल्स इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला, डॉट गेंद। और धीरे धीरे ये मैच इस वक्त इन्फोसिस के हाथों से फिसलता नजर आता हुआ और पिछले साल प्राप्त किए गए खिताब को इस वक्त अपने पास ही रखने की कोशिश में, बचाने की कोशिश में इस वक्त क्वेस कॉर्प लिमिटेड के खिलाड़ी इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया। गेंद पहुंची वाइड लॉन्ग ऑफ पर और 1 रन का इजाफा। पिछले साल के खिताब को अपने पास ही बरकरार रखने की कोशिश में इस वक्त काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त कर चुके हैं क्वेस कॉर्प लिमिटेड के खिलाड़ी। और कुछ चमत्कारी घटना अगर ना घटती है बचे हुए गेंदों में इस मैच में, तो निस्संदेह क्वेस कॉर्पोरेशन इस साल भी चैंपियन कहलाएगा। ये गेंद हल्के से गेंद को मोड़ दिया इस वक्त, शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा। स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 28 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट। टॉस जीतने के बाद क्वेस कॉर्प लिमिटेड के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। उनका निर्णय बिल्कुल यहाँ पर सही साबित होता हुआ। हवे के रुख का फायदा उठाने के लिए उन्होंने बल्लेबाजी चुनी थी। हवे के साथ स्ट्रोक्स को खेलकर ज़्यादा रन बटोरने की योजना थी उनकी और योजना में 100% वो कार्य रूप में लाते हुए 100% वो यश प्राप्त कर चुके हैं। अब फलस्वरूप उनकी टीम विजय के द्वार पर आकर खड़ा हो चुकी है 28 रन 7 विकेट के नुकसान पर। लास्ट ओवर रिमाइनिंग and 6 sixes required in the last over, not for victory but for tie. players full ready irli nimma hajari ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿರಿ ರೆಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿರಿ 6 ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಿದೆ ಬೌಂಡರಿ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚಿಯರ್ ಮಾಡಿರಿ ಆಡಿ 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 ನೀವು ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಆಡಿ. So the final over of the tournament is now going to start. Prajwal the bowler starts the fresh proceedings from the commentator box end. 28 for the loss of 7 wicket, 37 needed in last over, 6 sixes required in the last 6 deliveries, not for victory but for tie. और इस बीच पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए सही गेंद घोषित था, कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे। और अब ऐसा कहना पड़ेगा क्वेस कॉर्प लिमिटेड की विजय निश्चित है अगर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते इन बचे हुए 5 गेंदों में। और प्रज्वल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद उछाला लॉन्ग बॉल पर 6 रनों के लिए, बट द स्ट्रोक केम टू लेट और इस बीच स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 34 रनों पर। 31 required in remaining 4 balls. Decathlon, Mangalore's biggest sports store. This super sixer is brought to you by Decathlon, Mangalore's biggest sports store with over 70 plus sports and 6,000 plus products. Bharat Mall, Bijay, Mangaluru. आरपीएल धमाकेदार छक्का इस वक्त लग चुका है
और यहाँ पर गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। प्रज्वल गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद पटके विकेट टॉप एज, यहाँ पर मौका हो सकता है लॉन्ग ऑन फीडर गेंद के नीचे आते हुए और आसानी के साथ इस कैच को लपकने पे सफल। 8वां विकेट गिर चुका है। इट्स 34 फॉर 8। Matrix, experience excellence, an exclusive Tata Motors car showroom, Vijay Mangaluru. This wicket is brought to you by Nippon Paint, Asia's real number one paint. This wicket is brought to you by Nippon Paint, Asia's real number one paint. So number 10 batsman is now comes out to the middle to complete the formality for Infosys in this match. 3 balls left and 31 runs required. Absolutely impossible task now. प्रज्वल bowls. नए बल्लेबाज रंजीत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद उछाला लॉन्ग ऑन पर, लॉन्ग ऑफ पर और एक और विकेट गिर चुका है। 9वां विकेट गिर चुका है यहाँ पर। 9th विकेट डाउन एंड नाउ इट्स 34 फॉर 9। wicket is brought to you by Nippon Paint, Asia's real number one paint. So Stalin, the number 11 and the last batsman is now comes out to the middle, and the last batsman of the tournament. Ali ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಟರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। प्रज्वल गेंदबाजी इस वक्त करते हुए और जबकि सामना करते हुए इस वक्त स्टैलन। सिर्फ 2 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में और प्रज्वल इस वक्त अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और अंपायर से गार्ड लेने के बाद इस वक्त तैयार प्रज्वल की गेंद का सामना करने के लिए। फुल टॉस ऑन साइड पर पुल किया और गेंद सीमा रेखा से बाहर हो चुकी है 6 रनों के लिए। 40 for the loss of 9 wickets and now just a last ball remaining. 25 required of last ball. Sixer is brought to you by Auto Matrix, experience excellence, an exclusive this Super Sixer is brought to you by Auto Matrix. So the last ball of the tournament is now coming up. Prajwal to Stalin. Bowls. Full toss. Pull that one. Down to long on. That's it. They were bowled out for exactly 40 in the stipulated 6 overs and a comprehensive victory for Quest Corp Private Limited by 24 runs, and with that 24 runs comprehensive victory, Quest Corp Limited become the champion once again, consecutively second year of Red Premier League 2023. So all the cricketing actions are over and now we are straight away, we are just taking a short break and we'll be back right after the short break, not with the cricketing action but in the prize distribution ceremony. So spectators, don't go away, stay with us and we'll be back right after the short break in the presentation ceremony. Thank you. Dhanyavad. this wicket is brought to you by Nippon Paint, Asia's real number one paint. Nippon Paint presents Red Premier League. All of you Kelly RPL Banturi. Players who full ready irli nimma hajari. ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿರಿ ರೆಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿರಿ 6 4 ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಿ
ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ಸ್ 93.5 ರೆಡ್ FM ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್
ಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹೊತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ RJ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೆತರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ KG ನಾಥ್, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ NMPT ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಂದಾಪುರ್ ಅವರು, ರೀಜನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಆಲ್ವಾ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡಿಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶೇಖ್ ದಾವೂದ್, ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ವಿಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಅವರು ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೆಕತ್ಲಾನ್ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ನ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ನ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ FM ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಶೋಭಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ RPL ಸೀಸನ್ 3ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು RPL ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥವರು ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್. ನಮ್ಮ 3 ಸೀಸನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಸೊ 3 ಸೀಸನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು RPLನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ನ ಡ್ರೈವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಜಯ್ ಮಂಗಳೂರು. ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿರುವವರು ಡೆಕತ್ಲಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಡಿಂಕಿ ಟೈನ್. ಟ್ರೋಫಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವಿಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫೋನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ V4NEWSನ ಮುಖೇನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮ TV ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ RPL ಸೀಸನ್ 1, 2, 3 ಸೊ ಇಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇವರನ್ನ ಕೂಡ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೆಯುವಂಥ ಹೊತ್ತು. ಸೊ ಅವರ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಈವೆಂಟನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 2 ದಿನ ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಪಿ. ಸೊ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. KG ನಾಥ್ ಸರ್, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ NMPT ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್. ಸೊ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಮೆಂಟೇಟರ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್. ಸೊ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇವರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಚಿನ್ ಕಾಮತ್.
ಸಚಿನ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್, ನೀವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. RPL ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೆಯಾಗಿ ಉಳಿಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಅಂಪೈರ್ಸ್. ಸೊ 2 ದಿನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ರಾಜೇಶ್ವರ್, ಆತ್ಮರಾಮ್, ವಿರಾಜ್ ಅಂಡ್ ರಾಜರತ್ನ. ಸೊ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಅಂಪೈರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ರಾಜೇಶ್ವರ್, ಆತ್ಮರಾಮ್, ವಿರಾಜ್, ರಾಜರತ್ನ. ಸೊ ರಾಜರತ್ನ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಅನ್ನೋದು V4NEWS. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎವ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಟಿವಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುವಂತವರು. ಸೊ ಇದೀಗ ಮನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ಮನಿಕ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್, ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಲೈವ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ RPL ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೆಯಾಗಿ ಉಳಿಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ. ಹಾಗೆಯೇ NMPT ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಸುಧೀರ್, NMPT ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಸುಧೀರ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಯಶವಂತ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಇದೀಗ ಸುಧೀರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು RPL ಸೀಸನ್ 3ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರುವಂಥ KG ನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೀಗ ರೆಡ್ FM ನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಸರ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸೊ RPL ಸೀಸನ್ 3 ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Dear friends and sports lovers, I am very happy to be part of this valedictory function of this fantastic tournament which has been happening for the last 2 days here. In the fair season, normally our ground is full. Every day we are having lot of activities happening, and we at the ports, major ports, we are encouraging all kind of sports activities. I am heading one organization called the Major Ports Sports Control Board. We are conducting various tournaments in different ports every year, and here we have a very good ground which has been utilized for various activities, but still we are looking at something bigger. We are going to have an expression of interest for developing this area, this ground, as a fantastic sports facility in the days to come, and we are expecting that bigger players like BCCI or JSW will be participating in our expression of interest. In the recent days, Indian sports has been witnessing fantastic movements, and today only we heard the news that Karnataka for the first time won the Sandosh Trophy. That too happened in a foreign country. And we have Sania Mirza, who retired recently from active tennis, and our Neeraj Chopra, who won the first Olympic medal for the country in the athletics in Olympics. Of late, lot of activities are happening. I am sure that in the days to come we will be seeing more and more sports actions. Of course, COVID took 2 years from us, but we are back into action,
and I am thankful to all the sponsors who have actively participated in this event, and also Red FM for well organizing this tournament for the third consecutive year. Congratulations for the winners who have won in a commendable margin, 24 runs. Great. And some fantastic action I have seen in the last over. And also congratulations to the people who are performed outstandingly, especially the person who took a hat-trick in this second part of the match. Once again, congratulations to one and all. This is a great event. Thank you very much. Glad to have you, sir. So ರೆಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿ ನಿಂತವರು ಬರೀ ರೆಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಈವೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ರೆಡ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ್, ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು ಏಷ್ಯಾಸ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಪೇಂಟ್ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎಲ್ಲ 3 ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲೂ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ನ ಸಹಕಾರದಿಂದ RPL ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ನ ರೀಜನಲ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಂದಾಪುರ್ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್. ರೆಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ 3ನೇ ವರ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ಸ್ಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್, ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಡ್ ರಿಯರ್ಲಿ ವೆಲ್. ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಚು. ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೀಡಾಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ, ಶೋಭಿತ್, ಕೀರ್ತನ್, ಸೊ ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಪ್ರತಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏಜ್ ಆದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಗ ನಿನ್ನೆ CCL ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಷ ರೆಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತು. ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಐ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಫ್ರಾಟರ್ನಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ಸ್, ಆಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. All the best. And now Nippon Paint is into beyond paints. We are not only into paint. We have construction chemical and cellies and BTech products. So as our logo said, inspired by you. So we are into all solutions now in painting segment. Thank you once again all. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಏನು 16 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಏನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಟೀಮ್ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ನ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 19 ರನ್ಸ್ಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರು ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡೆಕಾಥ್ಲಾನ್ನ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ರೆಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಡೆದಂಥ ಒಟ್ಟು 3 ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ನ ಗುಣಪಾಲ್ ಅವರು, ಡಿಪೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗುಣಪಾಲ್ ಅವರು
ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ 77 ರನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವಂಥ ಪ್ರನಿಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಪ್ರನಿಲ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರನಿಲ್ ಅವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ವಿಷನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ನ ಶೇಖ್ ದಾವೂದ್ ಅವರು ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ and the award goes to Avinash Kumar of Quest Corporation Limited. 71 ರನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, 5 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿದಂಥ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೇಜಿನಾಥ್ ಸರ್ ಈ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸೊ ಇದೀಗ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೈಮ್. ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ RPL ಸೀಸನ್ 3. ಸೊ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 4 ಹಾಗೂ ಹಾಗೇನೆ RPL ಸೀಸನ್ 3ನ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಹೊತ್ತು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನಿಂತು ಈ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ RPL ಸೀಸನ್ 3ನ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪ್. ಸೊ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪ್ ನ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯರು ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಹುಕ್ಕು 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 ಆಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸೌಂಡಿಗೆ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿ 93.5 ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿ 93.5 ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ 93.5 ಹುಕ್ಕು ಆಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸೌಂಡಿಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಟೇಷನ್ ನಾವೇ ನಂಬರ್ 1 ಹುಕ್ಕು ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 93.5 ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿ. So before we wrap this presentation ceremony, I request KG Nath sir to kindly wait, as I request RJ Prasanna to hand over a memento as a token of love from Red FM.
So thank you so much for joining in for RPL Season 3. So KG Nath, the Deputy Chairman NMPT and Chairman of Major Port Sports Control Board. Thank you so much, sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ವಿವರ್ಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒನ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಿಗೋಣ RPL ಸೀಸನ್ 4ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಟೀಮನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಲೀಂ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ RJ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಶೋಭಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಇದು ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ RPL ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಇಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಬಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್.